तारीख में ये है कि कोई आइडिया आए, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उसको वैलिडेट कराना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है। एफडीआर हमने किया तो सही, लेकिन उसको पहले अपने पीडब्ल्यूडी को मनवाना, फिर ओ डिपार्टमेंट को मनवाना, फिर हर जगह उसको प्रोपगेशन करना, एक अपने आप में दिक्कत रही। तो अगर इसका कोई एसओपी बन जाए तो नई तकनीक और भी बहुत ज्यादा हमारे सामने है, और ज्यादा भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लगातार हम ही नहीं, और भी डिपार्टमेंट इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एसओपी ना होने के कारण हमको भी और जो भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उनको दिक्कत आती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आईआरसी ने यहाँ रखा है, उससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलेंगे। हम लोग भी अपनी लर्निंग करेंगे, हमारे भी सारे अधिकारी और इंजीनियर्स यहाँ पर जुड़े हैं, और जो भी यहाँ से नतीजा निकल कर आएगा उससे हम लोगों को आगे और नई तकनीकों को इम्प्लीमेंट करने में, उन्हें जनरेट करने में हमें मदद मिलेगी। एक अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी, और हमको दोबारा से यूपी को चुनने के लिए पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसी कड़ी में मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ श्री राहुल गुप्ता जी से, महासचिव आईआरसी, कि वे सभा को संबोधित करने की कृपा करें। Namaskar and good morning, everyone. Honorable Deputy Chief Minister, Shri Keshav Prasad Maurya, distinguished guests, esteemed speakers, my learned colleagues, and industry professionals. It's a pleasure and privilege to address you all at this momentous seminar on full-depth recycling and green technologies in road construction. My heartfelt gratitude goes out to Government of Uttar Pradesh Rural Road Development Agency for hosting this event alongside with Indian Road Congress. This collaboration is a testament to our shared commitment to a single vital mission, that is building the infrastructure that connects hearts, homes, and hopes across the nation. Friends, in rural Uttar Pradesh, where UP RRDA has tirelessly working to expand the connectivity, these roads means the difference between isolation and opportunity, between poverty and progress. They embody the humanistic essence of development, putting people first, ensuring that no village is left behind in our march towards a prosperous and developed India. The Indian Road Congress has always been at the forefront of shaping our country's road infrastructure. And this event reinforces our commitment to a sustainable future. Together, we are not just building roads, we are paving a way for a new era of responsible and innovative infrastructure development, one that honors our environment and safeguards the well-being of our generations to come. Our ambitious road development program is a cornerstone of our economic growth. This vast road network connects communities, fuels trade, and drives progress at an unprecedented pace. Yet, this growth comes with a profound human and environmental cost. Traditional construction methods contribute significantly to greenhouse gas emissions, which India road sector alone amounts to around 160 million metric tons annually. Road infrastructure emissions make up to 25% of total transport-related emissions, exacerbating the climate change that affects us all, the farmers facing erratic monsoons, coastal communities battling the rising seas, and urban dwellers choking on polluted air. Especially, we are of course witnessing our urban centers in northern India very severe air pollution in the month with the onset of the winters, and the calamities which our hilly states have witnessed during the last week is a testament to this climate change effect. Friends, the material we use, the energy we consume,
and the processes employ all contribute to carbon footprint that we must now actively work to reduce. For years, we have recognized this challenge, and Indian Road Congress has developed comprehensive guidelines like IRC 104 on environment impact assessment and IRC SP 93 on environmental clearances to ensure our projects are planned and executed with environmental consciousness. Our standards are helping to mitigate the negative effect of road infrastructure development. But the global climate crisis had made it clear that we must do more. Must not simply meet the existing standards. We must exceed them. We must critically examine our current practices and find new ways to reduce our carbon footprint, making a tangible contribution to the healthier planet. This humanistic approach, caring for the planet as we care for our populations, must be our norm. I believe a major shift in our approach is not just necessary but vital. It's time to prioritize the increased use of locally available materials. Our country's vast road construction program places immense pressure on scarce physical resources like aggregates, sand, and cement. Imagine a farmer in Uttar Pradesh watching his fields being eroded for a distant project. It is unsustainable and heartbreaking. Meanwhile, industrial waste like fly ash, slag, and plastics pile up, polluting our rivers and the soil, the fertile soils that communities depend upon. The humanistic solution to these two problems is to embrace these waste in construction, turning problems into opportunities. This reduces the long haul transport of materials, cutting vehicle pollution and emissions, while it saves on cost and the time of construction. Stabilizing techniques enhances these materials' strength, creating durable roads that serve people reliably. The shift, which is being deliberated in this seminar, offers multiple benefits. It not only reduces the need to transport materials over long distances, which in itself reduces the vehicle pollution and carbon emissions, but also brings significant cost and time savings. We can find ways to improve the strength and characteristics of these locally and recycled materials through stabilization and other additive techniques. This approach is not only environmentally sound, but also economically sensible. Our various modes of project delivery have already enabling provisions in their manuals and specifications to adopt these new innovative materials. We must take full advantage of this flexibility to accelerate construction and build roads that are both durable and sustainable. Consider their profound impact. In rural areas, where UPRRDA focuses, using local materials means quicker construction, less disruption to daily lives, and economic boost for local workers. It's about dignity, empowering the communities to build their own futures sustainably. IRC has been a leader in this transition, constantly updating its guidelines to reflect global best practices while tailoring them to our local needs. We have developed a series of new standards and guidelines for green road constructions like IRC 120, providing recommended practice for recycling bituminous cements, IRC 121 and IRC SP 110, guiding the use of construction and demolition waste, IRC SP 98 is a pioneering guideline for using waste plastic in hot bituminous mixes. Most recently, we have introduced IRC 142, which provides a comprehensive guide on the full depth recycling. This process is stated to be transformative, reusing 100% of in-place material to restore the pavements.
embodying a circular economy. It reduces the new aggregate need by up to 90%, cuts transportation costs, and lowers the overall cost of construction while delivering equal or better performance. In India, full depth recycling with soil stabilization is likely to revolutionize our low volume rural roads, rehabilitating distressed payments efficiently. Case studies show substantial savings, conserve resources, and reduce environmental harm. Friends, the knowledge we will share here today by our esteemed experts is invaluable. This seminar is more than just a series of presentations. It is a platform for collaboration and a call for action. We must listen, learn, and then translate this knowledge into practice. We have a collective expertise from policymakers and industry professionals to researchers and practitioners to forge a well-considered path forward. On behalf of Indian Road Congress, I extend my heartfelt thanks to the members of the local organizing committee and our galaxy of experts for their understanding support. A special thank you to all our stakeholders and policymakers for their presence. Your participation is essential, for it is not only through collective effort that we can evolve strategies that truly help to reduce our carbon footprints. Let's make the most of this opportunity. Let's profit from the experience of our experts and collectively build a future where our roads are not just pathways of progress, but also symbol of our commitment to a greener and most sustainable and more sustainable country. Thank you very much. इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ श्री अमित शुक्ला जी से, संयुक्त सचिव एवं डीजी नोएडा, कि वे इस अवसर पर सभा को संबोधित करें। नमस्कार। फुल डेप्थ रिसाइकलिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज इन रोड कंस्ट्रक्शन की 2 दिवसीय सेमिनार में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, श्री वीके राजावत जी डीजीआर स्पेशल सेक्रेटरी मॉर्थ, प्रोफेसर मनोरंजन परिदा प्रेसिडेंट आईआरसी, श्री सुदीप चक्रवर्ती एडीजी मॉर्थ, श्री जीएस प्रियदर्शी सेक्रेटरी एंड कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री राहुल गुप्ता जी सेक्रेटरी जनरल आईआरसी, श्री अखंड प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश एसआरआरडी, श्री ब्रजेश दुबे जी, एकेडमिक वर्ल्ड प्रैक्टिशनर्स और सभी उपस्थित लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मॉर्थ और आईआरसी के प्रति विशेष करता हूं। सड़क निर्माण में एफडीआर और हरित प्रौद्योगिकियों पर ये 2 दिवसीय सेमिनार आईआरसी और यूपीआरडीए द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये अत्यंत खुशी का अवसर है कि सभी स्टेक होल्डर्स उपस्थित है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं कि सभी लोग एक छत के नीचे उपस्थित होते हैं और इसका भरपूर उपयोग करना होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं कि पीएम 2000 को गरीबी उन्मूलन के पहल के रूप में शुभारंभ किया गया था। तब से लेकर अब तक इस योजना के माध्यम से 1,63,000 से अधिक बसावटों को जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को पीएमजीएसवाई स्कीम के अंतर्गत यातायात की आवश्यकता के अनुसार उन्नयन और चौड़ीकरण भी किया गया है। अब पीएमजीएसवाई 4 का शुभारंभ हो गया है और इस पे कार्य तेजी से चल रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पीएमजीएसवाई के तहत प्रत्येक निर्मित उन्नत सड़क ग्रामीण भारत को के कोर नेटवर्क को और बेहतर बनाने में सहायक हुई है। इस योजना के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक आर्थिक विकास एवं ग्रामीण कृषि बाजार तक पहुंच बढ़ी है और समावेशी विकास की तेजी से लाना संभव हो सका है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन में मदद मिली है एवं किसानों को बेहतर कृषि मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली है। पीएमजीएसवाई सड़कों के कारण गांव में उद्योग धंधे हो गए, तो इस महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने में ये हमारी नई टेक्नोलॉजी का अब आने वाले समय में बहुत बड़ा हाथ होगा। पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नवीनतम और हरित तकनीकों को अपनाने में अग्रणी रहा है और 2022 पर विजन दस्तावेज जारी किया गया था और जिसके अंतर्गत सड़क निर्माण में निचली परतों में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों और औद्योगिक
संयंत्रों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल के उपयोग और नवीन सामग्रियों को बढ़ावा दिया जा सके। पीएमजीएसवाई की सड़कों को हरित सड़कें बना दिया गया है। यह विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है। So as you all know, new technology is introduced only not only with the assistance of few persons, but with key players such as the state rural road development agencies, IRC, eminent academic institutions and contractors and suppliers. इसमें UPRRTA और IIT रुड़की और हमारे कुछ अन्य विशिष्ट लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है FDR टेक्नोलॉजी को लाने में। मैं उनका स्मरण करता हूं। FDR प्रौद्योगिकियों के तहत उत्तर प्रदेश में 5,848 किलोमीटर और बाकी राज्यों में करीब 200, 250, 500 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है और कुल मिला के 10,205 किलोमीटर स्वीकृत किया गया है। और ये काम या तो पूरा हो गया या पूरे होने जा रहे हैं और इसके लाभ आप जैसे जैसे 2 दिन में आप चर्चा होगी उसमें सुनेंगे। तेजी से काम होता है, मटेरियल बच जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है इत्यादि। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य इस तकनीक के माध्यम से सड़क निर्माण में अग्रणी रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 5,200 किलोमीटर मार्गों का निर्माण हो चुका है और इस तकनीक में कार्बन उत्सर्जन में अत्यधिक कमी होती है तथा निर्मित मार्ग के परफॉर्मेंस के दृष्टिगत आयु लगभग 15 वर्ष की अनुमानित है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत हम लोग 10 वर्ष की सड़क बनाते हैं, पर इन सड़कों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 वर्ष तक की अवधि की इसकी लाइफ साइकिल होगी, तो इससे भी काफी लाभ मिलेगा। और ये भी सुनने में आ रहा है, ये बहुत एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश और अग्रणी हो रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज में, जिनमें मेंटेनेंस खत्म हो गया है, जिनमें अनुरक्षण खत्म हो गया है, उसके लिए पीरियोडिक रिन्यूअल के लिए 4 और नई तकनीकों के मार्गों से सरफेस का कार्य कराया जा रहा है, वेस्ट प्लास्टिक का भी कार्य कराया जा रहा है। तो इससे काफी मात्रा में एग्रीगेट की बचत होने की संभावना है। और ये मुझे एक विशेष के साथ एक साझा करना एक जानकारी भी कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों ने द्वारा प्रदेश में 497 सड़कों का निर्माण किया गया है। गुणवत्ता की दृष्टि से कार्य प्राय संतोषजनक रहा है। बहुत कम सड़कों में निकली स्ट्रेंथ में कमी या अधिकता के संबंध में द्वारा अनुशंसा की गई है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है और IITs की सहायता से इसका मूल्यांकन भी करवाया जा रहा है। मैं आयोजनकर्ताओं को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। और मैं आपसे जुड़ा रहूंगा इन पूरे 2 दिन के इस सेमिनार में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और ये हम सबके लिए गौरव के पल हैं कि आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी और समस्त गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में स्मारिका सुवेनियर का विमोचन हो रहा है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं अनुरोध करती हूँ सभी गणमान्य अतिथियों से कि आज इस ऐतिहासिक पल में स्मारिका सुवेनियर का विमोचन सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में हो। तो एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हुए और इसी कड़ी में बहुत आदर के साथ आपकी लगातार तालियों के बीच मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से जोरदार तालियां हो जाए श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए, जो आज अपने शब्दों से हम सभी का दर्शन करेंगे। चलिए बोलिए भारत माता की। नहीं, इतने मजा नहीं आया, आप लोग सुस्त लग रहे, जितने लोग अधिकारी लोग सुस्त नहीं रहते उसको चुस्त रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की। सब लोग दोनों हाथ नहीं उठाए, सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत जगह खड़े होने के लिए कह देता हूँ, खड़े होकर करिए, लेकिन यहाँ नहीं कहूंगा, जिससे थोड़ा चैतन्यता आ जाए। आज इंडियन रोड कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में, इसमें आप अलग अलग सत्रों में बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी चर्चा करने वाले हैं। मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल रहता लगातार,
लेकिन मुझे किसी और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं थोड़ा कम समय आपके पास दे पाया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में सहभाग कर रहे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सभी जो अधिकारीगण हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सभी जो अधिकारीगण आए हैं, उनका भी सबका यहाँ उत्तर प्रदेश में स्वागत है। अलग अलग राज्यों से भी हमारे अधिकारीगण आए हैं, मैं उनका भी सबका उत्तर प्रदेश में बहुत स्वागत करता हूँ। जो हमारे आपूर्तिकर्ता हैं, सप्लायर और वेंडर्स, उनका भी यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि आपकी बड़ी भूमिका है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका भी और कंसल्टेंट हैं उनका भी। मेरे पास आज ये खुशी की बात है कि यहाँ हमारे ग्राम विकास के सचिव जीएस प्रियदर्शी जी और कार्यपालक अधिकारी अखंड प्रताप जी और इंडियन रोड कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मनोरंजन वारिदा जी भगवान जगन्नाथ जी की धरती से आए हैं। हमारे डीजी MORTH श्री विनय कुमार राजावत जी और इंडियन रोड कांग्रेस नई दिल्ली से राहुल गुप्ता जी महासचिव हैं, और जो ADG MORTH सुदीप चौधरी जी, हमारे मुख्य अभियंता UPRDA श्री ब्रजेश कुमार दुबे जी, और सभी जितने हमारे यहाँ साथी में सबका, पत्रकार मित्र। आज जब मैं यहाँ आप सबके बीच में आया हूँ तो मुझे बचपन में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाया करता था, एक गीत गाया जाता था। उस गीत की 2 लाइन ही कह करके मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मनुष्य तू बड़ा महान, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मतलब ऐसे बहुत लंबी लंबी पंक्ति है, लेकिन मैं उसको न दोहरा करके केवल इतना कह रहा हूं, आप सबके ऊपर जो जिम्मेदारी, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मतलब क्या है? अगर गांव में हम विकास की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। बिना कनेक्टिविटी के कुछ भी नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे जानकारी है, जो देश के वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी हैं, जब आदरणीय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो महाराष्ट्र के वो PWD मिनिस्टर थे। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रणनीति बनी थी। आप में से बहुत सारे लोग उनके कई बार के उद्बोधन में सुने भी होंगे। और यह योजना का परिणाम बहुत गांव के विकास के दृष्टिकोण से बहुत व्यापक हुआ है। लेकिन हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं। लंबे समय तक PMJSY की सड़कें अगर बनी तो 5 साल की यात्रा जैसे कि उसकी जीवन यात्रा पूरी तरह से पूरी हो गई और पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो जाती थी सड़कें। और गांव के अंदर जो सरकार में होते थे, उन दल के कार्यकर्ताओं को, उन दल के नेताओं को बहुत उलाहना सहना पड़ता। और उलाहना कोई गलत नहीं था। अगर जनता के लिए सड़क बनाई गई और सड़क 5 साल के अंदर खराब हो जाएगी तो जनता को तो जो उनकी सेवा के लिए कोई व्यवस्था की गई है वह सुव्यवस्थित ढंग से एक लंबे समय तक चले, ये अपेक्षा रहती है। आज जब इंडियन रोड कांग्रेस के इस कार्यक्रम में मैं आया हूं तो मुझे इस बात पर गर्व है, मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास के, UPRDA के सभी अधिकारियों को बधाई इसलिए दूंगा क्योंकि FDR तकनीकी जो आई है, जिसको लाने वाले मंच पर भी बैठे, सामने
जिसको लेकर के आप चर्चा करेंगे। आज मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि एफडीआर तकनीकी से बनने वाली सड़कों का जो मानक पहले था पीएमजीएसवाई का, अगर उससे अधिक लोड के वाहन भी उसके ऊपर चल रहे हैं, हम लोग गांव में जब देखते हैं तो छाती चौड़ी होती है। जो 5 साल में सड़क पूरी तरह से जर्जर हो जाती थी, अब 15 साल तक वो टस से मस नहीं होने वाली है। इसका श्रेय आप सबको जाता है। दूसरा, पहले लागत अधिक थी, आज लागत कम हो गई। अगर पैसा अधिक खर्चा करके और कम समय में सड़क खराब होती थी तो निश्चित तौर से या कहीं ना कहीं हमारी आपकी सबकी कमी रह गई होगी। आज कम खर्चा करके 5 साल की जगह 15 साल तक जिस सड़क को आप बनाए रखने का काम कर सकते हैं, जिसको देख करके गांव के लोगों को भी लगता है कि हमें भी एक्सप्रेस वे मिल गया, हमें भी नेशनल हाईवे मिल गया, हमें भी स्टेट हाईवे मिल गया। इस प्रकार की एफडीआर से बनी हुई सड़कों का स्वरूप इस समय दिखाई दे रहा। लागत कम, पर्यावरण, इस समय नित्य प्राकृतिक आपदाओं का देश और दुनिया के अंदर लोग सामना कर रहे हैं। आज भी जब हम आपके बीच में आए हैं तो आज भी उत्तराखंड में बादल फटने की घटना और उसमें कई गांवों में कई परिवार डूब गए हैं, दब गए हैं, इस प्रकार का समाचार। अगर हम पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाले समय में, अभी तो उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, बाद में ये मैदानी भागों में भी होने लगेगा। इसलिए पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए विकास की जो योजना है, गांव के गरीब तक पहुंचाना, किसान तक पहुंचाना, मजदूर तक पहुंचाना, नौजवान तक पहुंचाना, महिलाओं तक पहुंचाना, कि अगर वो गांव के अंदर कोई काम करे और वह मुख्य मार्ग पे आना चाहे तो उनको आने में कोई असुविधा ना हो। तो यह काम करने के लिए मेरे मन में अभी मैं चर्चा बहुत दिन से करता हूं, आप सबके सामने, इंडियन रोड कांग्रेस के सामने यह विषय मैं अपनी ओर से छोड़ करके जाता हूं। देखिए, जब तक हमारे देश में आज रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटरवे कनेक्टिविटी हो, चारों तरफ अगर आप देखें तो आज हम दुनिया के मुकाबले में बराबरी से टक्कर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक गांव की गलियों तक कम से कम लागत में हम गरीब, जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब अवगत हैं, कई योजनाएं ऐसी चल रही है, बस यही है। तो योजनाओं को हम लोग भाषण में कहते हैं कि हर घर नल से जब हम पहुंचा जाएगा तो ये पहले सोचा नहीं जा सकता। जाएगा, उसको काट देगा। उसकी बाबत की भी स्टेटमेंट आ गई ना कि हमने कभी नहीं कहा कि 75 साल के हर घर शौचालय बन सकता है, हर घर में उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन पहुंच सकता है, हर घर पहुंचाई जा सकती है। जनसंघ ने कभी नहीं कहा, आरएसएस ने कभी नहीं कहा जा सकती। अब अगर लागत अधिक लगेगी, उसमें शायद आधा नहीं भी बजट मान लो कि 1 लाख करोड़ का है, अब 1 लाख करोड़, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख करोड़ आप 1 लाख किलोमीटर आप सड़क बनाते, उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, आंकड़ा उसका नहीं दे रहा हूँ, तो 1 लाख किलोमीटर ही बनेगी। लेकिन 1 लाख करोड़ किलोमीटर सड़क बना देने का काम करे तो नहीं है। अगर भारत चंद्रमा पर तिरंगा, और यही लखनऊ के ही ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस आ सकते, यही भारत अभी निसार नाम का एक मिसाइल जो अमेरिका के नासा के साथ, तो मतलब आप सबको मालूम है, मैं उसकी जाना नहीं चाहता, विषय अंतर नहीं करना चाहता, लेकिन हम हर क्षेत्र में अगर प्रगति कर सकते, हम 13वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चाहे जितना टैरिफ लगा दे अमेरिका, लेकिन भारत की आर्थिक प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, अगर यह विश्वास हम रख सकते हैं और इस दिशा में आप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लागत पहले कितनी लगती थी, मेरे पास आंकड़ा है, मैं उसमें जाना, आप सब चूंकि ज्यादा जानते हैं, इसलिए मैं आप सबके सामने यहाँ पर
कि पहले सड़कों की जो लागत थी, उस लागत में भारी कमी आई। अगर पहले की लागत से कम लागत में आज सड़क बन रही है, पर्यावरण के अनुकूल के साथ अनुकूलता बनाए रखते हुए बन रही है, तो ये और भी नीचे आ सकती है और कम लागत में ये सड़क बन सकती है। गरीब के दरवाजे तक, हर गांव तक, हर घर तक सड़क जा सकती है। हम आप सबके सामने यहाँ आह्वान करके जा रहे हैं, अपील करते जा रहे हैं, इसमें शोध करिए, विचार करिए। एक और बड़ा विषय, कई योजनाएं ऐसी होती थी पहले, आप सबको मालूम है, पहले देश में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार होती थी। उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी संसद के अंदर खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कल आज शायद 13 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनके प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोलने के। आप दिल्ली से 1 रुपया भेजें, चाहे उनको 2000 रुपया भेजें और चाहे किसी योजना का भी पैसा भेजें, वहां से एक क्लिक करने से पूरा का पूरा पैसा जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? असंभव था ना ये, लेकिन संभव हुआ। जो लागत आज अधिक लग रही है और कैसे घटे, ये पर्यावरण के कैसे और अनुकूल हो, या कैसे हर घर तक हम अपनी सड़क को कम से कम लागत में बना करके दे सके। गांव आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, लेकिन इंडियन रोड कांग्रेस का मतलब ये है कि यहाँ सड़क निर्माण की दृष्टि से आप बहुत विस्तृत विचार विमर्श यहाँ करने वाले, बड़ी बड़ी संस्थानों से यहाँ सब लोग आए हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन सड़क की लागत अभी घटाना है, पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, और सड़क के निर्माण में जैसे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल आजकल सड़क निर्माण में प्रयोग होने लगा। आज से 10 साल पहले होता था क्या? नहीं होता था। आने वाले समय में कोई भी कूड़ा कचरा हो वो सड़क निर्माण में उपयोग हो जाएगा, उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी यहाँ चर्चा का विषय होना चाहिए, जो मैं आप सबसे अपील करके जा रहा हूं। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में जब 2022 में इस विभाग के मिनिस्टर के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली, उस समय एफडीआर तकनीक को जब लेकर के हम लोग चर्चा करते थे, देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि उसके अंदर आया करते थे, तो उस समय लगता था कि ये कैसे होगा। लेकिन आज जब हम लोग इसके सड़कों के निर्माण के टेंडर निकाले जाते थे और उसमें 30-30, 35-35% बिलो टेंडर जाते थे, और उसके बाद भी जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है उनको लगता था कि उसके बाद भी उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, और आज उसकी लागत जो एसओआर होता है उसको घटाने का काम किया गया, उसके बाद भी उनको लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी संभावनाएं अनंत है, उस अनंत की ओर आप बढ़िए, ये मैं आप सब लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूं। और मेरे पास जो सूचना यहाँ दी गई है, मैं पूरा उसका डाटा तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एफडीआर तकनीक से हमारी सड़कें बनी हैं, उस सड़क के बनाने में लगभग 700 लाख लीटर एक आंकड़ा निकाला गया है, उसमें डीजल जो खर्च होता है उसकी बचत हुई है। लगभग 90 लाख क्यूबिक मीटर जो मिट्टी निकाल करके सड़क बना, पीएमजीएसवाई माने कि कच्ची मिट्टी डालेंगे तभी उसमें केमिकल डाल करके उसको आगे बढ़ाएंगे। 90 लाख क्यूबिक मीटर नई मिट्टी के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और जो सड़क 5 वर्ष चलती थी वह 15 तक चलेगी, या मैंने बताइए बड़ी बन गई, लागत कम और उसकी आयु ज्यादा, पर्यावरण के प्रति अनुकूलता, मतलब हम पर्यावरण के लिए भी योगदान देने का काम कर रहे हैं। तो यह अपने आप में एक हमारे प्रदेश की दृष्टि से, देश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज कहाँ है? जापान में, आप सबको मालूम है। और जापान में है तो एक देश, और विकसित देश होने के नाते हम भी विकसित बनना चाहते हैं, ये हमारे सामने लक्ष्य है। कब तक बनना है मालूम है किसी को? 2047 तक। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग ठान लोगे तो 2047 क्या, ये 2037 हो जाएगा।
कुछ भी असंभव नहीं है जी। पहले दुनिया के अंदर कोई चर्चा होती थी विज्ञान के क्षेत्र में, आप सब यहाँ वैज्ञानिक गण भी बैठे, तो केवल नासा की चर्चा होती थी, लेकिन आज इसरो की भी चर्चा हो रही है। ये आपकी उपलब्धि है जी। अगर विकसित अमेरिका हो सकता है, विकसित जापान हो सकता है और विकसित बनने की ओर आगे चीन बढ़ सकता है, तो भारत किसी से पीछे नहीं रह सकता है। और उसमें सबसे बड़ी जरूरत है कनेक्टिविटी, सबसे बड़ी जरूरत है कनेक्टिविटी। और जब कम लागत में, बजट तो जानते हैं हर राज्य सरकार देती है, आपको मालूम है, भारत सरकार का भी बजट होता है, राज्य सरकार का भी बजट होता है, लेकिन जो बजट होता है उस कम बजट में ज्यादा हम सड़कों के अगर निर्माण का काम कर लेंगे तो उसका परिणाम बहुत व्यापक होगा। मैं लंबी बातें ना करके, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दृष्टि से जो मेरे पास डिपार्टमेंट है उसको लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि सड़क निर्माण से जुड़े हुए सभी राज्यों से, देश की सभी जो विभागों से यहाँ अधिकारिक गण आए, अगर केवल एफडीआर तकनीकी अपना ले तो मुझे लगता है कि इससे पर्यावरण के लिए अनुकूल भी हो जाएगा, लागत भी कम हो जाएगी। जो सड़क कम किलोमीटर बनती थी वो ज्यादा किलोमीटर बनकर के तैयार हो जाएगी। यह करने की दृष्टि से आज यहाँ पर आप विचार करें, और हम लोग उत्तर प्रदेश में ये प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में कि हम 100% एफडीआर तकनीकी का उत्तर प्रदेश के अंदर इस्तेमाल करें। हर घर तक हम सड़क पहुंचाने का प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, उसे भी, ये भी मैं आपको एक लाइन और छूट ना जाए, जो भी हम बहुत सारी चीजें विदेशों से मंगाते हैं, यहाँ जो तमाम सारे आपूर्तिकर्ता आए हुए, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप विदेश से सामान ला करके हमारे सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध मत कराइए। अगर विदेश की कोई कंपनी के माध्यम से आप लेकर के आते हैं तो उसको कहिए भारत में बनाए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि जिसमें भारतीयों का पसीना लगा हो वह सामान भारत के अंदर उपयोग होगा, तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हमें किसी की लाइन छोटी नहीं करनी है, बल्कि उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच देनी है, तो हम अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आह्वान करता हुआ, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पिछले कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी था, तब भी इंडियन रोड कांग्रेस की यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय कार्यशाला हुई, लेकिन आज यह इंडियन रोड कांग्रेस की दृष्टि से आप सब आए हैं, और यह महत्वपूर्ण एक दिन का जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो, और जो लक्ष्य आप लेकर के आए उस लक्ष्य को निश्चित तौर से प्राप्त करें, देश और प्रदेश की प्रगति में अपनी भूमिका अदा करें। यही अपील करते हुए, आह्वान करते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए और मार्गदर्शन के लिए, जो निरंतर हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहेंगे। इसी कड़ी में मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री अखंड प्रताप सिंह जी से, मुख्य कार्यपालक अधिकारी UPRRDA, कि वे धन्यवाद प्रस्ताव देने की कृपा करें। UPRRDA और IRC द्वारा आयोजित फुल डेप्थ रिसाइकलिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजी इन रोड कंस्ट्रक्शन पर आयोजित इस कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रेसिडेंट IRC प्रोफेसर मनोरंजन परिदा जी, DGRD SS मूर्त VK रजावत जी, सेक्रेटरी और हमारे CRD GS प्रियदर्शी सर, ADG मूर्त श्री सुदीप चौधरी जी, सेक्रेटरी जनरल IRC श्री राहुल गुप्ता जी, DG नोएडा श्री अमित शुक्ला सर, हमारे चीफ इंजीनियर ब्रजेश दुबे जी, और विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित राज्यों से आए हुए वहाँ के RRDA के अधिकारी और इंजीनियर गण। जैसा कि आपने अभी संबोधन सुना माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश ने ये खासकर जो फुल डेप्थ रिक्लेमेशन और रिसाइकलिंग है और ग्रीन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन में हम लोग आज लमसम 6000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो बना चुके हैं, और जैसा कि हमारे सर इस चीज को इंडिकेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में SOR रिवीजन तो हम लोगों ने किया है,
तो ये शायद इतिहास में पहली बार होगा कि एसओआर हम लोग का घटा है, बढ़ा नहीं है। और इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल ये था कि अभी भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को इंसेंटिव मनी में 461 करोड़ रुपए मिले थे उन चीजों के लिए कि सड़कों के रिनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए। तो उसमें इतनी कॉम्पिटिटिव बिडिंग आई कि हम लोग को 160 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसमें से हम लोगों ने नई सड़कें और लेके उनका भी कंस्ट्रक्शन किया। और ये मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे भारत में किसी भी अनुसंधानशाला में अगर कोई नई टेक्निक इजाद होती है, उस टेक्नोलॉजी के परीक्षण की जब बात आती है तो कौन सी आरआरडीए इसको सबसे पहले अडॉप्ट करेगी और अपने यहाँ स्वीकार करने की पोजीशन में है। भारत सरकार की तरफ से हम लोग की तरफ देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश आरआरडीए इसको जो है सहर्ष स्वीकार और इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक जैसे बेस में जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वो एफडीआर थी, लेकिन जब सरफेस लेइंग की बात आती है तो सरफेस लेइंग में भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। हम लोगों ने आज कोल्ड मिक्स, एमएसएस प्लस, कोल्ड मिक्स, इसके अलावा वेस्ट प्लास्टिक का यूज हो गया या सीजीबीएम टेक्नोलॉजी हुई, इन हर टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने कदम रख दिया है और हर एक टेक्नोलॉजी में 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक की रोड हम बना चुके हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि उत्तर प्रदेश विकसित होने के साथ साथ स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे। तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जनरेट हो रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक, इन सब चीजों को नवीन तकनीकियों के माध्यम से रोड मेकिंग में खपाने की जो विधा हम लोगों ने डेवलप की है, तो उसके क्रम में आज उत्तर प्रदेश लगभग 1000 किलोमीटर रोड वेस्ट प्लास्टिक के माध्यम से निर्मित कर चुका है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 710 टन वेस्ट प्लास्टिक खपाया है। और इसके अलावा जैसा कि सर के द्वारा निर्देश है कि भविष्य की रोडों के निर्माण में वो तकनीक यूज की जाए कि जिसमें जो वेस्ट जनरेशन है उस वेस्ट को और खपाया जा सके। तो सर मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भविष्य की रोडों में हमारी कोशिश रहेगी कि स्टील स्लैग से बनी जो ग्रिड है उसको हम यूज करें। इसके अलावा ये रोड इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बने और साथ ही साथ उन रोडों में जंक्शन डेवलपमेंट और रोड के दोनों तरफ एक हरित पट्टी वो हम लोग डेवलप करें और डेवलप करने के साथ साथ इसको एक सतत और इंक्लूसिव बनाने के लिए लार्ज स्केल पे किसानों को इंक्लूड करें। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम लोगों ने नया इनोवेशन किया है इसको कार्बन क्रेडिट के लिए इफेक्टिव माना जाता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार यूपीआरआरडीए के थ्रू जो हम लोगों ने एफडीआर के थ्रू रोड कंस्ट्रक्ट की है उसके अगेंस्ट कार्बन क्रेडिट क्लेम करने की प्रोसीजर में है। हम लोग बहुत जल्द इसके संदर्भ में अपना क्रेडिट जो है वो अर्न करेंगे। अर्न करने के पश्चात स्टेट सेक्टर में हम लोग और रोड में उन सब चीजों को यूज करने के लिए संकल्प हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी यहाँ पर वक्तागण और सभी गरिमामयी उपस्थिति जिनकी है उन सबके प्रति अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही साथ जितने राज्यों से अलग अलग इंजीनियर और उनके अधिकारीगण यहाँ आए हैं इस सेमिनार में आपके पार्टिसिपेशन के आगमन हेतु मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन की ये कार्यशाला नवीन विषयों पर चर्चा के लिए एक बहुत उपयोगी इन्वायरमेंट सिद्ध होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से अनुरोध है राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। एक मेरे मन में बैठे बैठे विचार आया, बैठ जाइए। विचार आया, अगर आप मेरे विचारों से सहमत होंगे तो ये मेरा प्रस्ताव है, निर्णय आप लोगों को करना है। ये जो इंडियन रोड कांग्रेस है इसको सुनकर के मुझे लगा करता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसको भारत सड़क संघ बना दीजिए आप। सहमत है सब लोग? हाथ उठा के बता दीजिए। यहाँ चूंकि अध्यक्ष महामंत्री सब इंडियन रोड कांग्रेस जो बनी हुई है इस समय, सब लोग देखिए, आधे लोग हाथ उठा रहे हैं, सब लोग हाथ उठा के बता। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, हमारी ओर से बधाई। हमारा प्रस्ताव विचार आप लोग करिएगा। I once again request everyone to please stand up as a mark of respect for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और इसी के साथ एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, और उनसे अनुरोध है कि वे प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए प्रस्थान करें, और उसके भ्रमण के लिए भी सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों से भी अनुरोध है। So our dignitaries are moving forward for having a look at the exhibition and its inauguration. We will disperse for a short tea break, ladies and gentlemen. It's a short tea break. I request you all to please reassemble in another 20 minutes. Another 20 minutes, and we will begin with the first session of the day. I humbly request all our participants, all our respected guests, we'll take a short tea break, ladies and gentlemen. I humbly request you all. We will reassemble in this very auditorium in another 20 minutes. And all our dignitaries have now proceeded for the inauguration of the exhibition. हमारी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए और उसके उद्घाटन के लिए हमारे सम्मानित अतिथिगण प्रस्थान कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट आप सभी भी एक शॉर्ट टी ब्रेक के साथ अगले 20 से 25 मिनट में एक बार पुनः रीअसेंबल होंगे हम सब इसी कार्यक्रम स्थल में। Thank you so much, ladies and gentlemen. Another 20 minutes and we will begin with the first session of the day. Thank you. यहाँ खड़ी हूँ।
So another couple of moments, ladies and gentlemen, we will start with the first session of the day, and we'll have a series of 3 technical sessions. I would like to inform that another couple of moments, once all our guests arrive, once again, we will proceed with a series of technical sessions. The first session is about to begin. शादमान 2 मिनट में बना 2 मिनट ये खाली करवा दो ठीक So I would like to request all our respected guests. Today we will have a series of discussions and a series of technical sessions which will proceed throughout the day. These are going to be an insightful sessions which will provide a lot of in-depth information on pertinent topics which will be of relevant importance to everyone present here. So at today's event on full depth recycling and green technologies in road construction, Indian Road Congress and UPRRDA, Rural Development Department, Government of Uttar Pradesh, we are honored and privileged that Honorable Deputy Chief Minister, sir, inaugurated this event and the exhibition today. And another couple of moments, all the guests, once they reassemble in this auditorium, we will proceed with 3 series of technical sessions. These are going to be of relevant importance to everyone seated here. Next. Hurley, check 1. Hurley. Hurley, check 1. Hurley.
Hello. Hello. ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है। 30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिटुमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटीशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे जलभराव, ईंधन रिसाव और तापमान अस्थिरताओं के विरुद्ध भी अत्यंत सहनशील एवं मजबूत बनाता है। वर्तमान में ये उन्नत तकनीक प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग 282 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। जलभराव जैसी समस्याओं से बचाते हुए इस तकनीक से निर्मित सड़कें वर्षों तक अपनी मूल संरचना और प्रदर्शन बनाए रखती हैं। बार बार की मरम्मत की आवश्यकता न होने से गिट्टी, बिटुमिन व अन्य संसाधनों की बचत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। ये सतह भारी यातायात से उत्पन्न गड्ढों, जलभराव और तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, साथ ही तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। हमारे दक्ष अभियंताओं द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन, मिश्रण, अनुपात और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अपनाई गई ये तकनीक पर्यावरण संवेदनशील विकास, नवाचार और सुदृढ़ अधोसंरचना निर्माण का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी सशक्तता, स्थायित्व और सतत प्रगति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आधुनिक भारत की विकास गाथा अब केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें हरित नवाचार, पर्यावरणीय दायित्व और समाजशील अधोसंरचना का भी समावेश अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है। इसी बोध के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हरित दृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दायक नेतृत्व तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को नवीन ऊर्जा, तकनीकी सक्षमता और पर्यावरणीय संतुलन से समृद्ध कर रहा है। इसी क्रम में कोल्ड बिटुमिन के साथ 30 mm मोटी MSS प्लस तकनीक का प्रयोग प्रदेश के 6 जनपदों में 202 किलोमीटर लंबाई के मार्गों पर सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है।
इस नवोन्मेषी विधि में कोल्ड बिटुमिन इमल्शन का प्रयोग कर बिना किसी ऊष्मा स्रोत के सड़की सतह का निर्माण किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत शून्य और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक लागत प्रभावशील, वातावरणीय अनुकूल और जल प्रतिरोधी होने के साथ साथ हॉट मिक्स एवं पारंपरिक MSS प्लस तकनीकों की तुलना में अधिक यांत्रिक दृढ़ता व दीर्घजीवता प्रदान करती है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में संरचनात्मक डिजाइन, मिश्रण संतुलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर हमारे प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाती है, जिससे कार्य न केवल शीघ्र पूर्ण होता है बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर वायुमंडलीय शुद्धता भी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक न केवल सड़क निर्माण की नवीन परिभाषा प्रस्तुत करती है बल्कि ग्रामीण अंचलों में आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाकर स्थानीय जीवन गुणवत्ता और आर्थिक उन्नयन में भी योगदान दे रही है। ये पहल मात्र अधोसंरचना विस्तार नहीं बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सतत विकास और हरित भविष्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने का सशक्त प्रयास है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश हरित, टिकाऊ और समृद्ध भारत की ओर दृढ़ कदमों से अग्रसर हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवाचार की नई मिसाल कायम कर रहा है। मोदी जी की So once again, a very warm welcome, ladies and gentlemen. कार्यक्रम के अब अगले सत्र की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। शुरुआत करेंगे हमारे पहले टेक्निकल सेशन के साथ। Our first technical session of the day, ladies and gentlemen, challenges in road infrastructure development with construction material, quality control, skilled manpower, etc. I would like to now humbly invite on stage our respected chairman for the technical session, Shri V.K. Rajawat ji, लगातार तालियों के साथ डायरेक्टर जनरल रोड डेवलपमेंट एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. I request sir to please join us. So once again, ladies and gentlemen, we warmly welcome all our respected guests who have taken out their valuable time to be a part of this prestigious event, Full Depth Recycling and Green Technologies in Road Construction, organized in cooperation by Indian Roads Congress and UPRRDA, Rural Development Department or Government of Uttar Pradesh. जैसे कि हमने आपको बताया कि आज के हमारे इनॉग्रल सेशन के बाद अब कार्यक्रम में 3 टेक्निकल सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होगी और आप सभी को कुछ विभिन्न जानकारियों के साथ अवगत कराया जाएगा। We would like to inform you that throughout the course of the day, we will have 3 various technical sessions, which will be on different topics, which are going to be of relevant importance to everybody seated here. So this is going to be a knowledge-gaining experience for everybody here. And we will quickly start up with the first technical session once we are joined today by the chairman and the co-chairman, sir, of the technical session number 1. So ladies and gentlemen, we are still awaiting for many of our guests. Once they arrive, we will proceed. तो इसी के साथ स्वागत करती हूं मैं हमारे टेक्निकल सेशन 1 के चेयरमैन श्री V.K. Rajawat जी, डायरेक्टर जनरल रोड डेवलपमेंट एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. And we also welcome the co-chairman of the first technical session, Shri S.K. Verma, officiating Deputy Director General, Border Roads Organization, to please join us with a big hand of applause.
औपचारिक रूप से अभिनंदन स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री के.एम. सिंह जी को, डायरेक्टर, टू प्लीज जॉइन अस। पुष्पगुच्छ के साथ हमारे इस टेक्निकल सेशन के चेयरमैन और को चेयरमैन सर का अभिनंदन स्वागत करेंगे लगातार तालियों के साथ। And we also welcome the co-chairman for the technical session. And we would also like to invite on stage the participants. Can we please welcome Shri Sudeep Chaudhary, Additional Director General, Ministry of Road Transport and Highways, with a big round of applause. We also welcome on stage Shri D. Sarangi, former Director General, Road Transport and Special Secretary, retired Ministry of Road Transport and Highways. And we also welcome on stage Shri Brijesh Kumar Dubey, Chief Engineer, UPRRDA. And with this, I hand over the stage to Technical Session 1's respected Chairman, sir, to please proceed. थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आज अभी मॉर्निंग सेशन में हम लोगों ने सारा सुना है कि रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत काफ़ी लार्ज स्केल पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके अंदर एग्रीगेट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। करीब करीब कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन 30 से 40% रोड कंस्ट्रक्शन के एग्रीगेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट the cost of construction also increases. So now there is a need for the recycling of the old material to the fullest possible. I think today's session is focusing on this issue. So I now request Sudeep Chaudhary to make his presentation. Namaskar, good afternoon. I am Sudeep Chaudhary, Additional Director General MORTH. I am dealing with actually the National Highway projects in the Northern India states, and also quality control centrally in the Ministry of Road Transport and Highways. For last few years, quality of construction has actually drawn a lot of flags and criticisms. Most of us are aware of that. So we are actually, our task is cut out now. So some of the initiatives that we have taken over the past 2-3 years, and I should not say at the moment that things are actually fructifying the way we are looking forward to, but these are the initiatives which we feel will pay, the right kind of dividends, and it would also set up the right kind of ecosystem. The emphasis that was there in the ministry right all along was we should have basically as much objective system setup that is basically possible, so that human intervention basically is made as redundant as possible.
some technical glitches I'm unable to resolve. Okay, so we broadly, all of us know as engineers what are the conventional quality control measures. And MORTH all along have been going around very extensively to emphasize the roles and responsibilities of various stakeholders in the entire ecosystem of implementation. We have elaborate policy guidelines and which draws basically what are the roles and responsibilities, what should be the frequencies of inspections. All these documentation are also part of my PowerPoint presentation, which I've already shared with others. So that should be available to all the participants here. Going forward, actually, the unconventional initiatives that we have taken. So this is the first that sort of initiative. Okay. We have taken up mobile quality control vans in 4 of the states in the country on pilot basis. This initiative was taken about 2 years ago in the states of Rajasthan, Gujarat, Karnataka, and Odisha. So what we have done here, the equipment manufacturers and suppliers who are specialized in manufacturing the NDTs, non-destructive test equipment, we have roped them in. In fact, they are the partners. They are partnering the this vehicle initiative also, the contracts also. So they are the stakeholders. They are the partners in this initiative, and we have the contractors also. So what we have done, this vehicle setup, that is giving us NDTs of roughly, I think 10 NDT tests are performed. Rebound hammer, ultrasonic pulse velocity test instruments, pile integrity tests, reverse scanner, then your ground penetration radar, asphalt density gauge, soil density gauge, lightweight deflectometer, retroreflectometer, marking thickness gauge. So the first 3 are primarily, and the 4th one also, are primarily for basically the structural testing. EPR is for pavement layer thickness that we are doing, non-nuclear asphalt density gauge, density of bituminous concrete, soil density gauge, bulk density of soil. Of this, the result that we have so far is the number 7 is probably giving us a little bit of trouble, soil density gauge. So the density, OMC, whatever we are getting from there, there are some issues, but looking forward, we'll probably be on this. Lightweight deflectometer, I had a lot of doubts when we had started with this initiative, but it is giving good results actually at WT. It is for non-bituminous, basically structural layer. It gives us the MR values also. So say for example, if going by IRC 37, if the MR, if your say CPR is roughly about 5% or thereabout, so that says then MR in that case is 10 times of your CPR value. So that is up to 50. Going beyond that, it is a typical relation is there. So it could go as much as 100 MPa also. If you have a composite, different MR combinations, then we restrict it to 100. It can go much higher. All these tests are possible. Actually, we can ascertain what is the MR values for GSBs also, for subgrades also, and it is correlating very well. So when the NDT goes in the field, NDT vehicle, it does the testing. It also, ensures the compliance with the design parameters, and in case there are some departures, so that is also brought in the fore. In synergy with this, we have also set up a portal also. Actually, quality control monitor portal is there in the mod. All this data that is being tested by these mobile quality control vans. Actually, what is being done in each of these states, 600 kilometers of test is being done per month in, you say, n number of projects, for example. And those tests are repeated again next quarter. So we have legacy data also. So that gives us an insight into what way
the migration has taken place, whether there has been some improvements in the subsequent tests, those have been carried out, qualitative improvement is there, or further deterioration has taken place. So those are enabled. And these are onboarded on the portal on real-time basis. It is the van is also geotagged. So at any point of time, we know actually where the van is. It gives us an indication. The entire data is accessible to ROs and PDs. So from there, they can get a guidance, This is sort of a diagnostic test. So the way the doctor, analyzes, puts his stethoscopes and finds out whether there are indication of large-scale maladies or not. So this is that kind of test. But it is it is much beyond that stethoscope thing. It reveals much beyond what is our expectation. And it gives you proper guidance regarding what should be the deep diving and deep delving that we should be doing. And the legacy data is also available, so that in a way helps us to understand whether there has been qualitative improvement or not. So now our plan is basically we have also roped in IIT Gandhinagar and IIT Delhi to, give us further guidance regarding whether we can, contractually enforce this or not. My understanding so far is that contractually it will be very difficult to enforce, but we can establish a good synergy between NDT testings and destructive testings. And way forward, now we are looking to diversify this venture. Probably we'll maybe another 10-15 vehicles in coming times very shortly. We are just trying to understand now. In fact, today morning also I spoke to my colleague in Delhi that what are the improvements that I'm looking forward to. We'll have video tutorials also shot out and workshops organized. So that is the current plan that we have. This is another great initiative actually, the road asset management system. This was initially piloted under WPTA in 2014, road asset management system. We have an elaborate portal on this. These are several modules actually, I think around 12 modules. Not all are functional, but it is mandatory to have the test performed for completed projects, and every 6 months thereafter, this road asset, the network survey vehicle run is made mandatory. There are 13 modules. So pavement management system, road information system, location reference management system, these are functional now. Maintenance programming tool is there. It is already, algorithm was done and it is there, part of the program is there, but we are not using it. I will come into the details regarding what are the advantages. Accident information system, breach information system, these are still to be activated. Separate initiative has been taken by MORTH for breach management system, so that will be dovetailed and integrated into the system in coming times. So the input data for road asset management system, this is collected by network survey vehicle. I'll come back to the slide maybe a bit later. So this is the configuration of the vehicle, the transverse profilometer. Pointer काम करता है नहीं pointer नहीं अच्छा छोड़िए. So in the front, if you see that beam kind of a thing, that is the laser transverse profile logger. So it records the profiling. Then after that is a laser profilometer. So profile is recorded. These are all AI system. And we have the GPS, GNSS modules. Then video login modules is there. Laser crack measurement system. So in the 3D laser-based system, this is the upgraded version of the NSB. In earlier times, we did not have that. So here the data fetching is almost impossible. So whatever data is captured, that is fed into the system. And then we understand what is the, this system was actually initially devised when we had done the algorithm. So that was based on IS 2015, the maintenance of bituminous 2015. So the architecture is different now. IS 2023 architecture is significantly different. Here we are going by pavement condition index. At that time it was not there. So that was a visual sort of a thing, but it is giving us good results.
So what has been made mandatory is get this vehicle run into your completed projects. Immediately the project is completed, you have this analyzed. What is your IRI index? What is your rating and tracking, reflection, etc. That gets fed into the system, and the system then tells you what is the stage of whether it is good or excellent condition. So that kind of indicing is there in the IRC 82. And every 6 months thereafter till the DLP event, even beyond that, even the O&M period also, this is getting replicated. So using this, actually what NHAI has done, NHAI has used this system very effectively. So far, 1 lakh lane kilometer they have evaluated, and they have taken contractual remedies also based on these outputs. So, physically seeing something and then taking action, objectivity will be missing. So when you get system generated, system triggered, outputs, it is easier always, very difficult to overlook that and dump it away. They have taken contractual enforcements also, and this is paying us very rich dividends. So this is one of the probably most important initiatives that MoRTH has taken. The next one, automated intelligent machine-aided construction. It took us a long time actually to launch this initiative. Minister himself was very passionate that we, make this implement this lock, stock, and barrel for the entire national highways network. But I had my own skepticism. I thought that to diversify it right from day one, without knowing the technology fully. Ground people should know the technology, its benefits, then only this should be diversified for the international highway network. So here what happens, the entire modeling of the road design, that is 3D modeling is done, and that is fed into the system. Put it in a nutshell, that is fed into the system. It is AI driven. Your motor graders, compactors, and even the wind up. Okay, so the bottom line is this: the output data that gets fed into the system, and even from remote area, from headquarters, also we can make a number of passes are there. So whether that is complying with the compaction requirement or not, that can be visually appreciated, and we can understand. So, paucity of time, I will not probably get into it with kind of detailing that I wanted to. So, this is another actually research initiative that MoRTH has taken. We all know about FWDs. FWDs anyway, this is discrete data collection is being done. So at certain identified locations only, we are taking the FWD data. From there, we get to understand what is the kind of your structural integrity, structural behavior is there in the underlying layers. The benefit of this system is that this can generate heat maps. The continuously it keeps on running on your national highways or any road for that matter. Even on finished roads also, it can give indication. Heat map can be generated all along the road for the entire area of traverse, and that gives you an indication basically what is the kind of structural integrity that is there, post-construction, pre-construction, both. But actually, it will be a for us to implement. For the moment, come to this. This is the I'll show. This technology is being extensively used worldwide. At the moment, MoRTH has entered into an MOU with Complete Instrumentation Solution. The gentleman is there, Mr. Chadda. Can you just stand up, Mr. Chadda, if you're here? Yeah. So we have been bargaining very hard with him. I think Ministry has already torn him apart a lot. But at the end of the day, he has been given 2,000 kilometers of water cast. That he will do at his own cost. The main challenge that will be confronting us
to how to basically bring it in, because it appears to us it is a very monopolistic technology. That is the only thing, sir. So with that, I think I should stop. I would not take much more time. These are the major initiatives that MOT had taken over the last few years. And I'm very optimistic that we'll be able to set up a very objective system, no manual intervention, nothing, everything e-way, driven by AI and ML, and that are the future things to come. Without that, the kind of initiative that government is taking, it is almost impossible for us to ensure quality of construction. Thank you very much. Thanks. Thank you, Sudeep, for in-depth information on the quality assurance and adoption of new technology. So now I request our Shri Sarangi Sahab, ex-DGRD and SS, to make his presentation on challenges in road. Thank you. मैं नीचे कैसे जाऊंगा? कैसे कौन सा वाला? नीचे. Thank you, Chairman Sahab. Very good afternoon to all of you. Today, inaugural session, Honorable Deputy Chief Minister Sir told three very, very important. If I recap that, he told us that the roads we are building should be at lower cost than what we are incurring today. Second, he told the durability of the life of the roads enhanced. And third thing, he also emphasized that in doing all these things, we should give due regards for environmental sustainability. These three things are very, very noble objectives for all of us. But friends, let me tell you very clearly from my 35 years experience in Ministry of Road Transport and Highways and more experiences gathered after that working as chairman of the accreditation committee of IRC. That's giving very, very good experience and exposure to things. The path achieving these objectives are very, very difficult. So whatever challenges we are facing, where we are facing, some of the things, how we can alter, improve. So I'll be telling, so I'll not be dwelling into any technological things, but more of temperament, attitude, practice, enforcement that you can do. So friends, I would request you all to have attention, please stop cross-talking and hear me. And you can correct me to feel anywhere. This slide I will not go into. This is all about our road system and particularly national highways. Other roads have not been compiled, but this I am not going to discuss. See, let us come to some of the realities. The roads we are designing for 20 years if it is flexible pavement. If it is rigid pavement, we are designing for 30 years. The bridges we are designing for 100 years. What we are expected to do is design life. As far as the road is concerned, the wheeling force, flexible pavement is supposed to be delayed, done to be routine maintenance. There has to be some kind of preventive or other kind of maintenance. Same thing for rigid pavement. Same thing for bridges also. Certain items like wearing cord,
suspension joint, railing, bearings need to be changed, and some routine maintenance and rehabilitation. But friends, what is happening? We hear that roads constructed a year or 2 years after doing miserably. CRI has conducted some study on Sousa. We have had him in many seminars highlighted that the bridges which failed in the last 20 years or so, that data he has compiled and found that the average life of failed bridges is only 34 years. That's very, very serious thing and a shame on all of us. So how we can change this? Coming to the material, basically we are using two types of materials. Natural materials like soil, sand, forum, stone, gravel, and materials which are manufactured, processed in some kind of factory. So as far as natural materials are concerned, till few years back, considered that it is unlimited quantity. We can utilize as much as we like, but now the realization has dawned on most of us. It's not unlimited. The quantity is limited. We cannot go on utilizing as per our will. What we generally encounter, the locally available material, what does it mean? At economical haulage are generally not meeting the specification in many of the locations. So you have to carry it from a longer distance, that costs more, that the carbon footprint, obviously, and uncontrolled quarrying impact the environment badly, whether it is sand mining, whether it is stone quarrying, we all know it. And all these activities, quarrying, crushing, transportation, all have huge carbon footprint. Lot of carbon is generated. Added to this, the mining policies of the states sometimes they havoc with the construction projects for soil. Sometimes there are huge delay because contractor is not allowed or easily cannot get quarry permits. If you come to the factory manufactured materials like cement, steel, bitumen, so and so, obviously in their entire life cycle from quarrying, crushing, transportation of raw materials, manufacturing, transportation, everywhere there is cost involvement, there is a carbon footprint generated. There are also issues of durability in many of the products because unless the basic materials are durable, obviously the finished products will not be durable. What we feel or what we face the problem in the projects, the source approval is a very cumbersome thing. There are many times hitches between the contractor and the consultant working as authority engineer or independent engineer has to force approval because of various reasons. Then there is cost volatility, which has a tremendous impact on satisfactory performance of the projects like EPC, HAM, BOT. And sometimes like bitumen, we face shortage during the peak construction period of say February, March, April. This is the reality. Now, what opportunity we may have over the years because of use of certain materials in different pilot projects, because of research in different academic or research institutes of the country, we have lot many waste materials, industrial byproducts, whether it is fly ash, bottom ash, pond ash, processed steel slag, ground granulated blast furnace slag, red mud, phosphogypsum, recycled aggregates, recycled concrete aggregates,
municipal solid waste. This has been used in some of the projects, and this can save a lot of soil if we use municipal solid waste in embankment construction, waste plastic. All these are available, enabling guidelines, enabling standards are all in place, but still use is not picking up. FDR in UP may be an exception, but what we find in national highways and other say, state highways or NDRs, use of most of these products are not getting traction. Similarly, we are having new materials like ultra high performance fiber reinforced concrete, fiber reinforced polymer bars, modified bitumen, PMB, CRMB, stainless steel, which have their utility in different circumstances. Although UHPFRC, because of efforts of our Honorable Minister, it has get traction. I think more than 30 bridges are either under construction or completed using the material which claim to have concrete grade ranging from M120 to M150. So if that is being possible, there is no way we should avoid it, which tremendously decrease the dead load and accordingly the structural dimension of all components, substructure, foundation, everything. We have also new material mixes like biobitumen, ministry has given to research projects, but otherwise this has been started whether from pine needles, whether from rice straw. Many materials are being tried of biobitumen. Geopolymer concrete in laboratory, it has been made successful concrete without cement, and pilot project has also been led. Maybe in coming days we'll be able to use it more and more. Bamboo crash barrier, you know how many lengths of crash barrier we are having on our roads, and it looks sometimes saddened that the crash barrier, the accident, deformation, or something partially broken and no repair of that. If you can have some cost effective, and people of proponent of this bamboo crash barrier has established they can also meet the crash test by latex. So we should look that into with proper interest, but nothing should be used, as I will subsequently cover, without satisfying its technical sufficiency. Then techniques such as recycled asphalt pavement, full depth reclamation, which allow us to use the materials of the existing pavement courses. There is nothing in future. This should be not exception, but this should be norm. Then there are geosynthetics in various forms or various applications, whether it is filtration, separation, surface, subsurface drainage, erosion control, stabilization, strengthening, but utilization of the right type at right location, right design, and the right implementation after trial section, what required. So next is commercial stabilizers. Probably in this today's session, its applicability in FDR we'll be discussing more. Then, apart from these products for which there are enabling standards, guidelines by IRC, by ministry, there are many products accredited by IRC. Those are accredited for use on pilot basis. Those can be also tried, not in the entire project, but in small sections, that we can better understand their performance, their standards, and popularize their use. So what challenges we are facing in use of these materials? You know, because being in the acquisition committee, I am looking many times. The problem is that the new materials are proposed,
based on laboratory tests. But any civil engineering project, laboratory test itself is not adequate. It should be properly validated because the mix design, the method of compaction you could deploy in the laboratory, whether that would be actually replicated at site, there are many ifs and buts. But we don't have the proper validation, or even if we have the validation, that is incomplete, that does not infuse adequate confidence. Then pilot project implementation is very cumbersome. Being in the ministry, S&R in charge for roughly 4 years, I have seen it and I have felt it. As a field engineer, if sometime an opportunity is coming to implement a pilot project, we should be more than happy. We should facilitate the research institute, the contractor, the promoter, whosoever is coming with these suggestions for a pilot project, we should be more than happy to facilitate him so that he understand the behavior of this kind of materials. Ministry has issued for preliminary purpose 4 circulars. We found shortcomings in first circular, then second circular, then third circular, and the first circular, last circular came in the September 2024, in which we have very categorically stated that these materials have to be tried, tested not only during construction, but it should be explored during the project preparation. The DPR consultant must evaluate these available materials in the locality, examine them and come up with the proposed material which gives the best economical purpose to the project. But unfortunately, that is not happening. And it's the first step where we are failing in use of these materials. DPR consultant just do some hanky-panky business just to propose. If nothing comes, then instead of GSV and WMM to propose CTSV and CTP. The role ends there, which should not be the case. Then contractors' interest, EPC, BOT, HAM project, allow them to innovate materials, to bring their own process technology, but the focus remains on economization of the cost and the cost of construction. That's a very good objective. Nobody denies that. But along with that, the life cycle cost, the durability, the performance, but always we lose sight of those things and the focus remains only on the construction cost, which is a highly undesirable thing. Then as far as the new material come, the authority engineer, the independent engineer are always hostile to this use of these materials. Why hostile? Because if you allow it, you have to read more, you are not sure whether this is okay or not okay. So who will take this much of problem? Better not to allow. And from the contractor side, the problem is that if you do proper trial section, and our circular of September 2024 lays emphasis on the trial section, because even for any DBM layer, BC layer, we should have trial section, but contractors are not willing to demonstrate the technical sufficiency of the material, the behavior of the trial section. Then there is no long-term performance evaluation. I will give a little example. If time exceeds, I will speak some of these slides. See, in our accreditation process, we have made it binding that if some product is coming for renewal of accreditation, there has to be performance evaluation by any IIT, NIT, CRRI or other government institute, no private institute. What kind of performance evaluations we are seeing at? Nobody knows. Somebody has not gone to site. Somebody picked up some course. Contractor has done something. Somebody has supplied some material. He picked up course. Somebody tested it and giving a report that it is performance evaluation. I thought that we should have a proper checklist or SOP how the performance evaluation should be. But this is one major tool for which use of new innovative materials are anchored. I remember S&R zone is the Ministry of Road Transport Highways had a big Google sheet and all executing agencies were asked to fill up the use of materials, their performance, but hardly that is coming. And after all, we, the officers of different
executing agencies, government departments. If we are not proactive, definitely we will not be able to do this. I think these slides I will not go one by one, but what is now a acknowledged fact that in many of the road projects, starting from expressways to rural roads, the case of premature distress failure, even failure during construction, cannot something which cannot be ignored. Sir, And time, please wind up. okay, okay. So I will not go into these. These are the problems, distress, the lapses which we notice in different highway projects. I'll not be going into individual things, but I'll come. You see, why these lapses come? Why there are failures or the premature distress? On the contractor side, there is always a focus on cost cutting because of unreasonable low bid price. There is non-availability of required skilled manpower. Even if contractor wants, he cannot deploy it. It is not available in the market. That's a reality. Emphasis on progress, but not on quality. How many kilometers to be built in a month? Poor planning, procurement, material management. Even if contractor spends the same money, if it can be spent in a more efficient manner, that would have given much better product. And then, particularly if some specific thing like if you are being a building a RUL, if the representative from the geosynthetic material is there, that makes some difference. But unfortunately, we don't do it. Now coming to authority engineer, independent engineer. The problem is we evaluate the CVs in a very elaborate manner, but what person actually remains during the construction period, nobody knows. Many times the positions remain vacant. Bridges are constructed with engineer is not at site. Questions about competency, attitude, authority. One major problem we are now having over the years that our manpower vis-a-vis the project size, project number is too small compared to any developed countries of the world. Working environment is not quality focused. Clarity is not on quality, but on progress. And there is no mechanism for reward and punishment. So that does not motivate us. And these are the consequences loss to the government, to the environment, to the everything else. And how we can do. Sudeep told number of things. Ministry has taken action. It is taking step. But what I would like to highlight, it is for us individuals, which have to first learn how to do the things correctly. If I learn how to do the things correctly, then probably I will be able to implement it. If I don't know, there is no way I can implement it. In one of the seminar, I asked, there were a number of engineers, how do you do sampling or what is the acceptance criteria of concrete? I failed to get a correct reply. Take some cubes, do testing, but what is exactly the acceptance requirement? Okay, I think time is gone. So I will give always emphasis. The integrity is the secondary thing. The primary thing is your knowledge, your competency, your skill. If you have this, then probably you can deploy integrity. If you don't have this, integrity means nothing. And how to do this is a very tedious, time-consuming process. We should first map what are the gaps, what an individual engineer require, then that can be supplemented through variety of measures. I think I have explained that. Thank you for your attention. I hope, Chairman sir, I have exceeded time, but you permit I take one more minute, not exactly connected to my presentation. Okay, sir.
Actually, the objective of this today's seminar, see, this IRC standard, I passed as a convener, then convener of HSS, but with a lot of heavy heart. We kept a proviso that commercial stabilizer can be used by they feel comfortable, subject to output performance is satisfied. If in the IRC, with all the expertise laws we could not, we expect that somebody in the field will take that call, then nothing bogus than that. So I hope the proponents, the opponents of commercial stabilizer should have a very, very healthy discussion during these 2 days, and we should modify this particular provision in IRC 142 in the next IRC session. If that happens, I will be very, very happy. Thank you. Thank you. इसी से चला लेंगे, इसी से आगे करेंगे, ये आगे। ओके, नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार दुबे, मुख्य अभियंता UPRRDA। आज मुझे मौका दिया गया है कि यूपी में एडॉप्शन ऑफ FDR पर हम अपनी बात रखें। 2 पॉइंट यहाँ कहेंगे जो हमारे से पहले सारंगी सर ने कहा कि कोई भी न्यू मटेरियल लैब में टेस्ट होकर प्रयोग के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा भी यही मत है, UPRRDA का भी ये मत है कि वो लैब में टेस्ट होकर फील्ड में नहीं आना चाहिए। कम से कम फील्ड में इतना निर्माण हो कि उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो सके। दूसरा पॉइंट सर ने कहा कि एडिटिव की जो परफॉर्मेंस है उस पर अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो IRC कोड में स्थान पाएंगे। ये भी वेलकम करने का स्वागत योग्य स्टेटमेंट है। इन दोनों के आगे हम एडॉप्शन ऑफ FDR जो यूपी में है उसको रखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द of PMGSY3. See, UPRRDA is meant for the operation and monitoring of the PMGSY in UP. We have 2 departments, PWD and Rural Engineering Department. They execute the work on behalf of Uttar Pradesh for PMGSY. So initially in PMGSY3, we submitted 1215 proposal road DPR to mode, and out of that, 898 were sanctioned, but 299 projects were returned back with the comment that cost per kilometer is very high. It was discussed here, and then few teams started with that time ACS, who just finished his tenure as a Chief Secretary of UP. He himself went to the one service road of Purvanchal Express, 5 kilometer stretch was being constructed with the cement with additive stabilizer. That time it was the product was additive product was a stable road, and we saw the execution and process of the cement with additive stabilization work there. Then one team with the JS MORD that time, and PWD, NIRDA and RED team went to the Vijayawada district of in Andhra Pradesh, and they saw few roads in Krishna district. And then the third, in February 21, 2021, one team of chief engineer with the Shri A.K. Jain Sahab, who is also here, and me also in that team, we all went to the Krishnapatnam port. And again, the private players, they constructed that time that road.
for their own purpose. As I said, if you see the chart in PMUSY road, which we submitted for sanction, the per kilometer cost for UP was 135.98 per kilometer. If you compare with other states, it was too high, very high. And this is the cost of the 5.5 kilometer, 5.5 meter width road. And the purpose, reason for this high rates was use of fresh aggregates. It was in use quantity, and also the cartage, long hauls for the aggregates, because all ferries are situated at the border of the UP, and transportation length is very high, and also what was that time that conventional road with the use of that time aggregates were damaging very fast, low life. So we that time UP team decided to go for the FDR, and then when we decided to go for FDR with the cement and additive, there were few problems, constraints, non-availability of approved schedule of rate. We had one past experience of the poor construction. In 2015, PWD started this trial with one road in Kanpur district. Then scarcity of equipment also was the problem, and also the main thing, the execution. इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स उनको अनुभव नहीं था कि कैसे फील्ड में इसका निर्माण करें. Then the whole thing went in front of the chief minister, and he decided that we should go for this project, and we should go in total length available for FDR. Then few interventions were made for DPRC. We appointed one PMU, project management unit. Field data were collected for the soils of the different areas, and major thing, train of equipment, use of train of equipment were decided. Texture classification of soil were done, and availability of aggregates in pavement, that was also considered as per the area. And then because cement is being used, so one production layer for the shrinkage cracks should be there, and SAMI layer were decided. And then problem was for design layer, pavement design. So approval for SOR we prepared with the help of some data available from Maharashtra and other places. We suggested something, and then NERDA also helped us, and ultimately we came out with 3,760 per cubic meter rate of the stabilized base. And then we started preparing project, and at the same time we got 898 road sanction, and out of that 9 roads we requested NERDA to permit us to make it as a pilot project of FDR. And for that pilot project, we executed with some intervention in SBD, tendering, and cement additive stabilizers. Their selection process was also decided. Condition for selection of CCS were also decided. Job mix formula, what are the parameters should be considered. See, whatever I am saying, that time nothing was available. Everybody has given some paper here, there, but no proper study and detailed results were available that time. And then we decided something like job mix formula, and what are the parameters required that time, mandatory trial stretch, what should be the length, and what should be the parameters and results. PMU were assigned with the DPR preparation of the 299 roads which were rejected and sent back with a high cost, and planning and execution. In that we wanted some assistance, and trial patch clearance. Trial patch were made mandatory in the presence of the engineer from project management unit, and then
in quality control, we sought some assistance from PM. Main of equipments which we decided to see, these all depends. We took the help of the international literatures and processes available that time, and we decided computer control binder, water tanker, additive spreader, recycler, motor grader. If you see the particular size and length and width were decided, and pad foot roller of the 20-ton vibratory tandem roller and pneumatic tire roller. This was decided, and then we also decided the brief process of the execution and testing. This was the whole total project was from PMGSY, and it is mandatory to have a lab. So lab establishment, then deployment of the technical manpower, plant and machinery. Plant, machinery and manpower, everything was important there. So initially we decided that it should be placed. Additive accreditation certificate from IRC. It was made mandatory to have that. Construction work program. If you see afterwards, I'll show you how we have decided those things. Sampling of the representative sample available in the road for preparation of JMF, mixed design, and then execution of trial stage, 100 to 300 length, and then UCS test 7 days and 28 days. These are the parameters. If you see the 9 roads parameter, 9 roads which were selected for the trial stage, it was from different region of UP, Bundelkhand, West, Center, and East. After that, we submitted few more projects for FDR, and we got sanction of 525 road, 146, then 525, and in 23, 24, 64 roads, and latest in March 25, 3 roads. All from by FDR. See, as I said initially, जो टेंडर होना था जिसको अपने FDR के लिए यूज करना था, SBD में इसका कोई प्रोविजन नहीं था, but we put some interventions. First 9 pilot projects we made mandatory that compulsory experience of FDR work should be there. Availability of FDR equipment should be there. JV were allowed in and selective qualification criteria, and MOU with additive manufacturer or firm we called as a technology provider should be there. And for the next 1200 kilometer, we relaxed a bit, and we allowed the contractors with the experience of CTB, CTSB, PQC, and ETA also. And afterwards, उत्तर प्रदेश के भी contractors को उसमें मौका मिलना था, इसलिए any contractor who is having experience of road contract were allowed, but financially he has to, it was asked to be sound. Means financial criteria should be there, and that up to that time we also developed some process, some test results were done. Our first road was ready by October 21, and that interventions which we made, see why I am saying इस process को उस समय नहीं होने पे decide करने के लिए in house बड़ा अध्ययन, चर्चा और लोगों से गाइडेंस लिया गया, जिसमें इन हाउस इंजीनियर PI के जितने थे उनकी इन हाउस बनी हुई, जिसमें CRRI, मिर्डा, सभी के ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की मदद ली गई. इवन एडिटिव एंड मशीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व लोगों से भी मदद ली गई. कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स की भी ट्रेनिंग की. यहाँ तक उनके की प्रोफेशनल कौन होंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जनरल मैनेजर होगा या लैब की एक टीम होगी, वो तो होंगे ही, साथ में एक आदमी फील्ड में ऑपरेशन से रिलेटेड अलग होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसे ऑपरेट नहीं किया था. जिस समय एग्जीक्यूशन शुरू किया तब समझ में आया कि स्पीड ऑफ
reclaimer was very important, तो हर चीज वहां पे जरूरी थी. And training, after giving training to our people, we had chance to showcase our work to other states also. And after that, we developed one indigenous, with the help of our state technology department, one software, Uttam. I'll explain afterwards. So all these things were documented and we called it as a standard operating procedure. This is around 70-page book which we wrote, we discussed, and then we released for the use of our engineers inside our UPRRDA engineers and SQMs also. That includes acceptance criteria of CCS, the contract SOP for quality control and a standard operating procedure for sample collection up to JMF. एग्जीक्यूशन के समय में जिस समय ट्रायल होगा PMU का इंजीनियर उपस्थित रहेगा. इट वाज मेड मैंडेटरी. स्टेट क्वालिटी मॉनिटर जो टायर 2 क्वालिटी चेक है, इसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोगों ने इनिशिएट किया कि ट्रायल स्ट्रेच के क्लियरेंस के बाद जो मेन कैरेजवे MCW का निर्माण होगा वो स्टेट क्वालिटी मॉनिटर की उपस्थिति में होगा और वो इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी मेंटेन रहे. और उसके लिए उनके जो प्रिस्क्राइब टेस्ट हैं वो करते हैं और साथ ही साथ कोर एक्सट्रैक्शन और उसके टेस्ट को भी लैब में करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर की लैब में करेंगे. श्रिंकेज क्रैक्स को रोकने के लिए जो सामी जियोसिंथेटिक हम लोगों ने डिसाइड किया था, उसको ले करना भी एक अपने में चैलेंज था. उसको एग्जीक्यूट करते समय UPRRDA के इंजीनियर्स एंड PMU के इंजीनियर्स को भी डिप्यूट किया गया. It was made compulsory the presence of at least one engineer from these two teams. If you see, I'll just show the data. जो हम लोगों ने टोटल प्रोजेक्ट था उसमें जो JMF बनाया, चूंकि इनिशियली वी अलाउड एडिटिव companies to have JMF from NABL lab, do all tests there. 601 suggestions came from NABL accredited lab. CRI did 3. And IIT 124 out of 728. And trial stage report, it was made mandatory to have it from IIT NIT CRRI only. And we had from IIT 558 and NIT 170. 728. I'm not going in detail with the stress absorbing membrane because SAMI, geosynthetic, and laying of SAMI is also technically very attention seeking, so that everybody knows. And we have adopted more criteria for the application of these things. And after laying of SAMI tag coat, we use BC. See, all these things I tried to explain in short how we adopted. That time Secretary Mode visited Chitrakoot Road, and present Secretary Government Mode also visited road of Sitapur. In short, if you see the process जो कि शुरू में उपलब्ध नहीं था, उसको decide किया गया with the help of different institutions, clearing, grabbing, shoulder preparation, polarization, spreading, grading, NMC test, FDD test, and cement spreading, cement quantity check, CCS of liquid addition, recycling, grading, compaction with padfoot roller, compaction by PTR, and then UCS test and phenolphthalein test, then curing and finished FDR based, then SAMI and BC. See, with all these experience, I can say FDR technology is very economical. Life, we expect 15 years at least. Lesser
maintenance cost, conventional conservation of national resources, agreed बचाया, माननीय मंत्री जी ने सुबह बताया, environmental friendly, reduce carbon footprint, positive impact on socio-economic, effective in the most distressed pavement, reuse of existing material, very speedy construction, एक दिन में 300 से 700 मीटर के लेंथ का FDR बेस बनता है, lesser hindrance to the traffic, जितनी जल्दी बनेगा ट्रैफिक उतनी आराम से मूवमेंट करेगा, एंड 2500 to 2700 meter per kilometer is saving in some ways. I'll just show few streets. They came here, we had some capacity building, all meeting photographs are here, training to AE, JE, contractors, engineers, and also we help contractor to select the key personnel for the execution of the road, as well as execution in the construction, as well as field testing. And we asked so many things, and then we deputed them to the field where FDR were in process for their training. And 4 days training were made mandatory. All these things, capacity building, were done for a state as well as for the other state. I have mentioned here 14, but today it is 22 states they visited our FDR work. And then we took part in conference also on 25th May 2022 in Delhi. See, initially I said work program. We designed this work program for 1 year. Now I can say we can adhere it. Initially, we were not having any defined process, but now we can say we can adhere to this process of the from clearing and grabbing up to BC laying in 1 year. And then deployment of the staff, we made requested government to depute the person, technical person from contractor as well as from PIU were needed, and it was necessary that time. And then, as I said, इतने बड़े को कंट्रोल करने के लिए इन हाउस उत्तम यूनिफाइड टेक्निकल ट्रैकिंग एंड आर्गुमेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसमें सैंपल कलेक्शन से लेकर कॉन्ट्रैक्टर का डाटा, उसके डिटेल्स, उसके मैनेजर्स एंड सैंपल कलेक्शन से लेके ट्रायल स्ट्रेच की रिपोर्ट तक के डेटा आपको उसमें मिलेंगे. इतने जितने JMF हैं, चाहे वो NABL लैब के हो, IIT या CRRE के हो, वो भी उसमें मिलेंगे. ये हम लोगों ने कंट्रोल किया. और इस उत्तम मॉनिटरिंग में इफ यू सी whatever I said, कि management basic details of the FDR roads were there, and with the help of this Uttam, we controlled the total process and execution in the field. Now, cement with additive, we used 10 additive. We gave Neocrete also clearance, but it was too late. That time the project was at the fake end, and it was not executed in the field. But the from LPAVE, ANT, Geocrete, GeoPave, TerraGyme, Basil. Mr. Dubey, I think we'll wind up in Okay, next 2 thank 3 minutes. I'll just take 2 minutes. I'll show you a few things. UCS, if you see, from minimum 4.5 to 7 MPa were our window, but we in some of the cases we saw up to 12.12 or even 11 above that. If you see the benefits, reduce carbon footprint, economic I have already described. Now, कार्बन क्रेडिट के लिए भी हम लोगों ने एक कंपनी को इंगेज किया है. अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने कितना अचीव किया, बट ITI लिमिटेड गुवाहाटी, जेनेथ एनर्जी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद and Kaveri Infra Projects Private Limited Hyderabad, they all combined and they have started work for us. If हमें कुछ पैसा मिल गया तो हम स्टेट के रोड्स को और बनाएंगे. हम GPS सिस्टम को अभी वहां पे हमारा एक स्टॉल भी लगा है, मैं कहूंगा आवर्स देखें. हमारे पास जो GPS सिस्टम है उसमें हम लोगों ने कैमरा लगाया और AI बेस्ड हम ट्रैकिंग कर रहे हैं. एंड इस ट्रैकिंग का फायदा भी मिल रहा. फायदा ये है कि हमें वर्क शुरू होने से पहले हिंड्रेंसेस दिख जाते हैं, मिल जाते हैं. हमारी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो FDR की है, जो मैं रखना चाहूंगा अथॉरिटीज को टू कंसीडर फॉर द
further research work like good quality earth in subgrade and CBR more than 5. We made mandatory to have this, then go ahead. Moisture level in subgrade. अगर कहीं पे पानी इकट्ठा होता है या HFL ऐसा है, आजकल तो समझ में नहीं आता कि HFL के ऊपर से कब पानी चला जाएगा, क्योंकि ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स फॉर ड्रेनेज पानी कहीं से कहीं जाता है. So this is also very important. This may damage the whole sub base and I'll point out a few things. See, CTB and FDR. I'll not go for the different sizes, but definitely in CTB sizes are defined, but FDR जो भी फील्ड में उपलब्ध है हमें वही यूज करना है. ग्रेडेशन डिफाइंड है, जो IRC की बुक है उसमें भी और जो नेरेडा ने दिया उसमें भी, मगर क्या फील्ड में मिलता है? नहीं. रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट, जब हम CTB में जाते हैं तो हमें बाहर से 100% बाहर से लाना है, लेकिन FDR में वी डोंट नीड एनी मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. एंड कोड, यस, फॉर CTB IRC 37 is available. For FDR, still I say whatever work we have done, no code is available. I'll point out few things for IRC 14225 which has been released. See, there they have mentioned 1st June 2024, HSS committee approved the draft on the instance of Ministry of Rural Development to expedite the finalization of the document. They had more meeting on 23rd November 24 and decided that in instant case, document specific to cementitious binder should only be approved. मोड ने रिक्वेस्ट किया, EC ने कहा सीमेंट का कर दो. मोड ने जो सैंक्शन किया है वो सीमेंट विद एडिटिव किया है एक्सेप्ट बिहार. तो ये सैंक्शन किसके लिए है? आई डोंट नो. UPRRDA 5820 किलोमीटर बना चुका, 4000 किलोमीटर इन रेस्ट ऑफ द इंडिया इट इज इन प्रोग्रेस. Altogether 10,000 kilometer cement with additive is in progress, completed part. We have completed around 5,400 kilometer base with the cement and I don't remember FDR road with only cement. CTB is there, but that I don't remember. And also one definition is there. The FDR can be defined as a pavement rehabilitation technique where bituminous underlying pavement layers excluding subgrade and earthen unpaved shoulder material of unpredetermined thickness are excavated, pulverized and blended with the binder and compacted to act as relatively as a hard bound base layer of the new pavement. हमने तो मिट्टी सबग्रेड से यूज किया है या ऊपर से किया है, तो क्या ये कोड हमारे लिए है? नहीं है, क्योंकि their definition says that this is the excluding of that. So 2 points. One, with cement only, not applicable to us. With without earth or without subgrade soil, also it is not applicable to us. So my request, JMF and field execution should be studied again, because in JMF we design in lab with the size 37.5 minus, and in field we even get 53, even up to 75. If you do the work, the bigger boulder, if comes at the, we can throw it out. But finish to that, we could not do anything with that, and that affects the UCS, the test parameter of our road. Knowledge of testing of FDR road is still very less. Our engineers learn, but they are not applicable. They are not applying fully. Even few state quality monitors, national quality monitors doesn't know how to test. एक टेस्ट सड़क में एक नेशनल क्वालिटी मॉनिटर ने 50x50 का डिग किया और कहा हम डेंसिटी निकालेंगे, तो FDR में तो नहीं होता. दूसरा,
जो नेशनल क्वालिटी मॉनिटर हैं उनको भी इनिशियली मालूम नहीं था, आज की डेट में मालूम है, उस समय मालूम नहीं था व्हाट शुड बी द मॉइस्चर लेवल आफ्टर ड्राइंग। उन्होंने लिया, 2 घंटे सुखाया और टेस्ट कर लिया, कहा भाई ये तो कम आया, 2.5 आया, 3 आया। Initially, it was not properly defined for them also. And we are facing, we have so many ATRs to be rectified, but we are developing that process. And that mistake was done initially. So, our two learning so far is with additive CCS, that it reduces shrinkage, cracks, reduces doses of cement, helps in getting early strength and enhance strength, maintain long-term durability, increases modulus and flexural strength. So I will request again to the IRC as well as the scientists and members of that committee, please reconsider and do the test in the field. Fortunately, we are having 5-6 teams, 5 teams who are doing performance evaluation in the field. लेकिन process अभी भी defined नहीं है, वो टेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के जरिए डिसाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई ना कोई रिजल्ट आए, और जब रिजल्ट आए तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज इंक्लूड इन योर कोड सो दैट we can certify our work which we have already done. Thank you very much. Thank you, Mr. Dubey, for a very detailed presentation on FDR. Thanks a lot. कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उनका जरा नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, FDR road is best quality of road construction and Indian produced best management of machinery. तो कमेंट है। मिस्टर सुनील कुमार, इसमें क्वेश्चन नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज एलेबोरेट। मिस्टर सुनील कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। या you mentioned simply network ramps NSV. So what is your question exactly? Please give the mic to him. No question. It's only comment. Okay, thank you. Mr. Mukesh, theoretical concept. Practical concept is not there. In this session, practical and clarity of green technology of road with respect to flow innovative in this course. Okay. Another comment from Mr. K.S. Pratap. All the lectures are very useful. So it's basically comment, no question. Another Mr. Arvind Kumar. Seminar is very useful. It's okay. Okay. Thank you. So now I open the floor for discussion. If there is any comment specific to any speaker, they can raise. No comment. Okay. Yeah, please. Is myself BC Pradhan, ex-technical director. It's not audible. It is working. Okay. So, Mr. Brijesh Dubey has given a very good and detailed presentation so far their experience there, having with execution of large projects under FDR. So he has raised valid questions about adding of additives to the FDR layers. It has been, as he has mentioned, that it is only cementitious material. So the code is silent about addition of additives, commercial additives. So actually, from the very beginning, when we have conducted a lot of training program, etc., we have given emphasis on addition of additives along with cement for enhancing the strength of the layer that we are going to construct under FDR. So that was the concept, and accordingly, it was given then the direction for adoption of FDR technology,
We are now departing from that procedure so far as the IRC code SP 142 is concerned. So the IRC should take into consideration regarding the request of UPRRDA so far as the experience they have gained or they have already implemented the large size projects under FDR by using different kinds of additives. Undoubtedly, the additives will definitely beneficiary and beneficial in FDR technology, enhancing the strength of the layer, then shrinkage, then moisture resistance and durability. So this needs to be again studied very vividly by the scientist and especially CRRI so that a concrete decision can be given before finalizing the or revision of the FDR code, whatever it has been published. Thank you. Thank you. May I request Mr. Sarangi Sahab to reply on that? It's really very pertinent that CCS has not been included in the ARC 142, that is the APR document. In fact, as everybody knows, the document preparation methodology from the committee to HSS to the council, because what document came from the committee, they apprised to HSS that the data from UP government as to performance of the road with the CCS was not made available. That was their main grievance. So now, because of that only, I requested let this 2 days deliberation open up all the information UP government have on implementing. Actually, this presentation by Mr. Dubey was very excellent, but when in the subsequent presentation, the specific data, performance data will be coming, I think the committee, Mr. Mathur is there, who was the subgroup convener for this particular code, then hopefully after this 2 days deliberation, we can come to a conclusion and that may lead to modification or amendment of IRC 142. But then that has to be based on evidences. I hope evidences will come in these 2 days deliberations. Thank you, sir. Any other question? Hello, sir. My question is to Chaudhary, sir, regarding innovative technology and non-destructive testing. Sir, you have mentioned about NSV, and in NSV, the major part, one of the most important information is the roughness and unevenness of the surface. So, sir, there are two things I want to ask. One thing is when we measure bump integrator, there is speed has been mentioned as 32 kilometers. But when generally in NSV, the vehicle moves faster. So that gives somewhat a different data. And so second important thing, in bump integrated testing also, there were chances of tampering of data. And with NSV also, there are some loopholes because reports are presented and tests have been conducted by private agencies. So, sir, is there any plan to connect real-time data which we take from NSV directly, which, that can be uploaded to website, so that tampering of data can be removed in the whole process, sir? So this tampering of data actually, that was the main issue that we were struggling with. When we had set up the road asset management cell in NHAI, that was about, I think, 3 years ago. So when we started collecting data from all fronts, the idea was that data should be plugged in from state governments, NHAI, NHIDCL, BRO, all agencies. So those started coming in. When we basically went into the forensic investigation of data, then it came to our notice that data is getting fast. So thereafter, we migrated actually. The NSV that is being specified by MORTH now is an upgraded version, where data tampering is almost impossible. In fact, in my presentation, I have emphasized on that. So that, that duality is almost done away with. Now the data set that is coming in fact, again, I had also told that NHAI has actually gone ahead with doing, extensive testing of around 1 lakh lane kilometers. So that translates to roughly around 25,000 kilometers of completed projects. And
See, I'm coming to that. See, real time is one part. Real time is also happening. It is not that it is not happening. We have a portal. That portal is actually the data is getting onboarded here. Nothing is being done, by any specific individual. Everything is getting done from the portal. So it is actually getting onboarded on the portal on real-time basis. So data fetching, that interface is almost, impregnable. Can I ask a question, sir? Yeah, please. Yeah. Good afternoon to all. Two questions I have. First of all, congratulations on this innovation that has happened in the last 4 to 5 years, where right from we've taken a huge risk in terms of saving resources of the nation. My question is, would we dare to look at this experience and apply some bit of innovation in the highways as well, because there is a shortage of materials? And the second case is that the code of IRC 142, where would be the cases where we can apply that particular cementitious in situ FDR constructions, because that will further save money in those cases possibly. So thank you very much. Question is open. I think Sarangi Saab has already replied to your query. Do you need further? I think he has already clarified in the earlier question that IRC code is going to be modified based on the test results and field trials. Yeah, so it will be considered by the committee, no issue. Yeah. Sir. Sir. Next, after him. Yeah. Sir, I am from Himachal PWD. Yeah, you're not audible. And we are doing approximately 3,000 kilometers of FDR work in Himachal. Good afternoon, sir. I am Manish Sehgal, SC from Himachal PWD. Sir, we are doing approximately 3,000 kilometers of FDR work in Himachal. It's a hilly state and we are facing a lot of difficulties. But what I have seen and felt that the portion where we have already done our FDR work, but BC or wearing leaf is not laid, it has been damaged badly in the recent rains. There are a lot of ruts because traffic is running, a lot of potholes, and even at many places, due to some slips and slides, the portion of complete pavement has been washed away. So I just wanted to have an idea how to repair those potholes, ruts, and the portion has been gone away in the rain. अभी एफडीआर लेयर के रिपेयर पर कोई डायरेक्शंस नहीं है, जहाँ भी होगा फिर से ले करना होगा, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, सब ग्रेट अगर कटेगा तो एफडीआर सस्टेनेबल नहीं है। नंबर 2, एफडीआर इतने एक्सपीरियंस के बाद आप कह सकते हैं कि एफडीआर लेयर को बहुत दिन तक अगर ओपन छोड़ेंगे तो रट्स होंगे, सरफेस इरोड होगा, फाइन्स के रूप में हम सॉयल यूज कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उस पोर्शन को जितनी जल्दी ढक सकें ढक दें। एंड दैट्स व्हाई अगर 28 डेज, अगर अभी तो हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, 28 डेज मैंडेटरी है यूसीएस के लिए, तो उससे भी जल्दी अगर हम कर सकें कोई टेक्निक के द्वारा स्ट्रेंथ जानकर, तो इट विल बी गुड। अभी रिपेयर का कोई नहीं, वो न्यू कंस्ट्रक्शन ग्रुप में दोबारा। After him, only one question more. No more. Hello, sir. Okay. Good afternoon, sir. Myself S.K. Kushwaha from Ministry of Road Transport. मेरा हमारे आदरणीय सारंगी सर से एक सजेशन लेना सर, क्वेश्चन है सर। आपके स्लाइड में एक था क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल पर, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडेक्वेट एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड सुपरविजन कंसल्टेंट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। This is very challenging and important part, sir. I need your suggestion how it can be implemented in the field, sir. From your experience, how should we upgrade it, sir? Thank you, sir. Yeah, so it's a very pertinent and real question nowadays. I think everybody is facing in ministry or in NHAI. Soon ministry is going to launch a new document for DPR and authority engineer,
DPR consultancy engagement is going to be on the rating system basis, which is being developed by NHAI. Document was already uploaded on the website. Comments have been received, and yesterday we have already finalized the document. Soon it will be launched, where all those your problem will be addressed. So if any consultant deploys a poor performance, it will give him a negative rating, so that in future bidding contract, his weightage is going to be about 40%. So all those rating will be recorded on the portal. Ultimately, he will not be able to qualify for future project. Similarly, same arrangement is being done for the authority engineer engagement also. So all your problem which we are nowadays facing of poor quality of the key personnel, poor deployment at site, and lack of knowledge as well, lack of experience as well. So all those problems will be addressed with the launch of these two new documents. Yeah. Thank you. Yeah. Sir. Sir. Good afternoon, sir. Okay. You and then him last. Sir. Okay. Sir, with the approval of chairman, sir, I have two questions from Dubey, sir, about FDR technology. Like the first one, whether any life cycle analysis has been done in its shape about this method and the conventional method. If any report is available, it would be beneficial for the people here, or like if they can share. If not, is it possible to do that? And the second one, the cost in their this slide, they shown 131 lakhs per kilometer of conventional road of 5.5 kilometer. What is the current cost after this FDR technology? Whether any substantial decrease in the cost? If not, then why we are using this? And if yes, can you tell me about the cost? Thank you, sir. पहले वाला मैं आपको बताता हूँ. See, life cycle cost analysis we have embedded in our RFP for DPR consultant, at least for comparing flexible pavement and rigid pavement. But it is very correct. There is no appropriate method. Ministry has in a research project to IIT Kharagpur to develop a matrix and a software also for determining LCCA for different. It is basically pavement specific, but for different options. I think their project is in very advanced stage. Once that is done, we can do, because it combines the performance models. There are different models, and what is happening in our roads that they are comparing, and quite in advanced stage. Maybe in another 1 year, we'll be having that model, which will help us comparing different pavements as their life cycle cost. And your second question? Average cost 135 per kilometer came down to 103 lakhs per kilometer that time. And now, when we have reduced our FDR from 3,760, it has gone to 2,783. So the further DPR will definitely will be less, around 25 to 30%. Thank you. Last question, Mr. Chadha. Well, first of all, very good afternoon to all of you. सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बोल रहा हूँ. आपने कहा था IRI and other parameters which are being measured through the network survey vehicle. Let me tell you, sir, the binary files are there. No one can fudge with the binary files. So you cannot fight the data. Yes, you can fight the Excel sheets when you produce the data. But binary files are available with NHAI and they can really check it. And we have put those things in place. So there's no fudging of data which is possible. And that is the reason NHAI does excellent work with Dr. Munjal handling it. Second part of it is real time. We are using laser track measurement system there. So you're capturing a hell lot of data with it. You are capturing 11.4 crore points per second. Please appreciate that. So giving that in real time is not easy. So it takes us around 3 days to process all the parameters, be it running, potholes, cracks in 3 days. Okay. Now, whether it is possible, yes. As far as rural roads are concerned, let me bring it to you to that aspect of it, because tomorrow that will be the need of the day. It is now possible. We have already launched that system wherein you will get rutting, roughness, potholes,
and also the images of the roads in real time with you. So you just have to send the driver with the vehicle wherever the repair has been done. He will drive the vehicle, and on your system you can click everything. On your Google map, you will come to know whether roughness is within the limits or whether there are any potholes. Just click on there, you will get the size of the pothole. You will get the image of the road. All that has been done, but you see, you are talking with 4 parameters in rural roads, but when you're talking of national highways, you are talking with 20 parameters. So yes, we are working in that direction, and even in rural roads, you cannot find the data. Thank you. So now the question and answer session ends. I think this particular session is going to be very fruitful for change in the code, which IRC is already doing, and maybe in the deliberation tomorrow also. So I will now finally request our co-chairman to conclude remark. Namaskar, good afternoon, distinguished delegates, the guests and colleagues. This was a very vibrant session, the first session of the 2-day seminar, where we had eminent speakers. Sri Sudeep Chaudhary, who spoke on the quality assurance, quality control, and the automation. He very widely covered the present trend and the modern techniques to be adopted, the constraints and challenges coming in the transition period from conventional method to the modern techniques. The modern techniques have already been adopted in the national highways and are in the process of implementation in other areas. The presentation was very elaborate and holistic in nature. The question and answer session made it more interactive. Now the responsibility lies with us to take the challenges, to take the thoughts ahead in implementing and making a smooth transition from conventional method to the new techniques, because it will fasten the progress of work, give better quality, help in economizing the structure and better durability of the roads. The next section was taken by Sri Sarangi sir. It was basically on the challenges in road infrastructure. He talked about the quality, cost and durability concern in the past conventional methods. There also he mentioned about the premature failure of the structures, like failing bridges in 30-35 years, failing pavements in less than 5 years. He also advocated and talked about the saving cost, speedy construction, and in the same time, taking care of the environment also. He talked about the alternative materials and the technology. So the challenge with us is to change our mindset and thought process from the conventional method to the new methods to meet the requirement of the nation and to make the country a developed country. The third session was taken by Sri Brijesh Kumar Dubey. It was mainly concentrating on the FDR initiatives taken by the UPRRDA, UP government. The presentation was very interesting, and the challenge taken by UP government is really laudable. They have taken initiative in meeting the aspirations of the people and the state for faster development with the limited resources available, may be in the form of money or material. Now, there has been certain areas of concern regarding the codifications and guidelines available in different levels. These differences will always be there. And if there is no difference in opinion, there will be no development.
So let us take all these differences in a positive manner and move towards a better world. With this, we conclude this session. I convey our sincere thanks and gratitude to the distinguished guests present here, all the participants, colleagues, ladies, gentlemen, and the chairman of the session, Sri Rajawat sir, and speakers of the session, Sri Sudhi Chaudhary sir, Sri Sarangi sir, and Subhit Dubey sir. Thanks to all, and not the last, the organizer, the UP government, and the UPRRDA, who provided this platform for this vibrant and knowledge-sharing session of 2 days. Thanks, everyone. Thank you. And we'll take a moment to express our gratitude to the speakers of the first technical session. In order to do that, I humbly request, first up, our respected chairman of the first technical session, Shri V.K. Rajawat ji, to please do the honor and express a humble gesture of gratitude. First up to Shri D. Sarangi ji, लगातार तालियों के साथ आभार व्यक्त करेंगे. Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts and insight with the first technical session. एक बार फिर मैं हमारे सेशन के चेयरमैन सर से अनुरोध करती हूं कि वे आभार व्यक्त करें श्री ब्रिजेश कुमार दुबे जी का लगातार तालियों के साथ. I also request the co-chairman of the first technical session to please do the honor and present a humble gesture of gratitude to Shri Sudeep Chaudhary ji. And now I would like to invite Shri Rahul Gupta ji to please join us on stage. Shri Rahul Gupta ji, Secretary General IRC, to present a humble gesture of gratitude to our respected chairman of the technical session 1. Let's give a big hand of applause, ladies and gentlemen, for Shri V.K. Rajawat ji. उन लगातार तालियों के साथ आभार व्यक्त करते हैं for chairing the session so well. I once again request Shri Rahul Gupta ji, उन लगातार तालियों के साथ, I request sir to please do the honor and present a humble gesture of gratitude to the co-chairman of first technical session, Shri S.K. Verma ji, उन लगातार तालियों के साथ. We would like to capture this moment with a group photograph with everyone. Thank you so much, gentlemen. Thank you for those thoughts that were exchanged with the first technical session. Now, ladies and gentlemen, we will disperse for a lunch break, and we will resume immediately after the lunch break for the next 2 technical sessions, which await you all. Ladies and gentlemen, we will gather in this very auditorium. Exactly at 2:45, we will resume with the next technical session. आप सभी से अनुरोध है, exactly 2:45 पे हमारा अगला टेक्निकल सेशन आरंभ होने वाला है. आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया लंच के उपरांत यहीं पे हम सब सम्मिलित होंगे.
ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है। 30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिटुमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटेशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे जल भराव, ईंधन रिसाव और तापमान अस्थिरताओं के विरुद्ध भी अत्यंत सहनशील एवं मजबूत बनाता है। वर्तमान में ये उन्नत तकनीक प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग 282 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। जल भराव जैसी समस्याओं से बचाते हुए इस तकनीक से निर्मित सड़कें वर्षों तक अपनी मूल संरचना और प्रदर्शन बनाए रखती है। बार बार की मरम्मत की आवश्यकता न होने से गिट्टी, बिटुमिन व अन्य संसाधनों की बचत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। ये सतह भारी यातायात से उत्पन्न गड्ढों, जल भराव और तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, साथ ही तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। हमारे दक्ष अभियंताओं द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन, श्रम, अनुपात और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अपनाई गई ये तकनीक पर्यावरण संवेदनशील विकास, नवाचार और सुदृढ़ अधोसंरचना निर्माण का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी सशक्तता, स्थायित्व और सतत प्रगति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आधुनिक भारत की विकास गाथा अब केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें हरित नवाचार, पर्यावरणीय दायित्व और समावेशी अधोसंरचना का भी समावेश अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है। इसी बोध के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हरित दृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणादायक नेतृत्व तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को नवीन ऊर्जा, तकनीकी सक्षमता और पर्यावरणीय संतुलन से समृद्ध कर रहा है। इसी क्रम में कोल्ड बिटुमिन के साथ 30 mm मोटी MSS प्लस तकनीक का प्रयोग प्रदेश के 6 जनपदों में 202 किलोमीटर लंबाई के मार्गों पर सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस नवोन्मेषी विधि में कोल्ड बिटुमिन इमल्शन का प्रयोग कर बिना किसी ऊष्मा स्रोत के सड़की सतह का निर्माण किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत शून्य और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक लागत प्रभावशील, वातावरणीय अनुकूल और जल प्रतिरोधी होने के साथ साथ
हॉट मिक्स एवं पारंपरिक MSS प्लस तकनीकों की तुलना में अधिक यांत्रिक दृढ़ता व दीर्घजीवता प्रदान करती है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में संरचनात्मक डिजाइन, मिश्रण संतुलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर हमारे प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाती है, जिससे कार्य न केवल शीघ्र पूर्ण होता है बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर वायुमंडलीय शुद्धता भी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक न केवल सड़क निर्माण की नवीन परिभाषा प्रस्तुत करती है बल्कि ग्रामीण अंचलों में आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाकर स्थानीय जीवन गुणवत्ता और आर्थिक उन्नयन में भी योगदान दे रही है। ये पहल मात्र अधोसंरचना विस्तार नहीं बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सतत विकास और हरित भविष्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने का सशक्त प्रयास है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश हरित, टिकाऊ और समृद्ध भारत की ओर दृढ़ कदमों से अग्रसर हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवाचार की नई मिसाल कायम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी दृष्टि और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व ने इस योजना को ग्रामीण भारत के उत्थान का आधार बनाया है, जिसे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। 30 mm मोटाई का बिट्यूमिनस कंक्रीट BC गोल्ड मिक्स तकनीक के माध्यम से प्रदेश के 9 जनपदों में 306 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस अभिनव तकनीक में कोल्ड मिक्स इमल्शन का उपयोग कर बिना ईंधन जलाए बिट्यूमिनस सतह तैयार की जाती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। हमारे कुशल अभियंताओं और तकनीकी विशेषज्ञों की निपुणता से निर्मित ये सड़कें सामान्य हॉट मिक्स की तुलना में अधिक दीर्घजीवी और टिकाऊ हैं। ये तकनीक लागत प्रभावी होने के साथ साथ निर्माण कार्य को तीव्र गति प्रदान करती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। ये पहल 9 जनपदों और आसपास के ग्रामीण निवासियों के लिए सुगम यातायात, बेहतर व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि को बल मिल रहा है। ये केवल सड़क निर्माण नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो उत्तर प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के नए शिखर पर ले जा रहा है। ये केवल एक निर्माण तकनीक नहीं बल्कि एक पर्यावरण संवेदनशील विकास दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अभिनव प्रयोग 2000 शुरू किया। ग्रामीण जनता को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई। तो उस सेक्टर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बड़े अभिनव प्रयोग को किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में एक नई टेक्निक FDR बोलते हैं, फुल डेप्थ रेक्टिफिकेशन के माध्यम से कार्य शुरू किया। इस तकनीक में जो पुरानी रोड होते हैं, जब उनको अपग्रेड करते हैं, उसी रोड की सामग्री को रिसाइकल करते हुए नई रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसके माध्यम से जो पर्यावरणीय क्षति जो होती है कि जैसे डीजी ट्रांसपोर्टेशन के नए पहाड़ों को तोड़ मिट्टी बनाई जाती है, उन सबकी बचत होती है। वर्तमान में FDR टेक्निक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 6000 किलोमीटर रोड बनाई गई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो है UPRDA के माध्यम से हम लोग जो सरफेस क्लीनिंग है उसमें कई नई सारी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के। ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती बल्कि
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है। 30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिटुमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटीशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे जल भराव, ईंधन रिसाव और तापमान अस्थिरताओं के विरुद्ध भी अत्यंत सहनशील एवं मजबूत बनाता है। वर्तमान में ये उन्नत तकनीक प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग 282 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। जल भराव जैसी समस्याओं से बचाते हुए इस तकनीक से निर्मित सड़कें वर्षों तक अपनी मूल संरचना और प्रदर्शन बनाए रखती है। बार बार की मरम्मत की आवश्यकता न होने से गिट्टी, बिटुमिन व अन्य संसाधनों की बचत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। ये सतह भारी यातायात से उत्पन्न गड्ढों, जल भराव और तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। साथ ही तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। हमारे दक्ष अभियंताओं द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन, मिश्रण, अनुपात और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अपनाई गई ये तकनीक पर्यावरण संवेदनशील विकास, नवाचार और सुदृढ़ अधोसंरचना निर्माण का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक सड़क है, बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी सशक्तता, स्थायित्व और सतत प्रगति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। तो लंच के उपरांत कार्यक्रम के अगले सत्र में आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। Now, ladies and gentlemen, we are about to begin with the next technical session for the day on the topic Technology for Green Highway Construction. And obviously, ladies and gentlemen, first up, I would humbly invite on stage the chairman for the technical session 2. I humbly invite Shri Amit Shukla ji, IFS Director General NIDA, to please join us with a big hand of applause. I also invite on stage the co-chairman for the next technical session. Please welcome Shri S.L. Suryavanshi, Chief Engineer, Madhya Pradesh Public Works Department. मैं अनुरोध करती हूं इसी कड़ी में श्री परवेज अहमद खान जी से, काउंसिल मेंबर IRC, के वे मंच पर पधारें और स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे चेयरमैन सर और को चेयरमैन सर का आज के हमारे इस अगले टेक्निकल सेशन के लिए। आपकी उन लगातार तालियों के साथ
And with this, I humbly invite the speakers to please join us on stage. In this league, please welcome Dr. Dharamveer Singh, Professor, IIT Bombay. A very warm welcome, sir. We also welcome Dr. Vishal Thombre, Deputy Chief Engineer, BMC Mumbai, to please join us. तालियों का उत्साह थोड़ा सा और बढ़ सकता है. And we humbly welcome on stage Dr. A.K. Sinha, Chief Scientist, CRRI, Central Road Research Institute. A very warm welcome, sir. And with this, I request you to please proceed. Good afternoon to all assembled delegates. So we have 3 presentations before us and the speakers have already been introduced. So I'll request Dr. Dharamveer Singh Ji, Professor IIT Mumbai, to make his presentation. All speakers have given a duration of 25 minutes. So I'll request them to stick to the time. So over to you, Dr. Dharamveer. ये दूसरा अच्छा यहाँ पे कैसे So there is a small correction. The timer says 20 minutes. So Very good afternoon to all, और नमस्कार सभी को. First of all, thank you very much to UPRIDA for this wonderful opportunity. This is a kind of a perfect time that we are discussing about new technologies, also the green technologies that we are talking about. So I will just talk about not really FDR, but I will give slightly more than that and try to understand that what are the technologies are there, how can we really combine things together. And right now we are looking into one technology, but there are multiple technologies that we can combine together and they really maximize the benefits actually. So my presentation is on in general about the recycling and a couple of things that I will show you. First of all, this is very well known thing that the recycling, the bituminous cement is 100% recyclable. You can do 100% recycling if you really plan to do that. Now there are multiple ways of doing that. अगर कोई existing payment है, उसको कैसे recycle करना है? How do we do the recycling? What are the different techniques that we are using? So let's see how the stages goes actually. आप देखेंगे इसमें this is how it looks like. अगर कोई आपको road दिखता है, this is how the road looked like initially, which looks to be structurally sound from the bottom. However, the top layers have gone bad actually, for example. Now this is the initial stage,
And once you go to the next stage, then you need to do the recycling or you have to do the milling actually. Remember, you are talking about the milling now. So you are milling the material, and after milling, there are multiple ways that you can utilize that. And we are going to discuss all the ways that what is the in situ, what is the in-plant recycling processes are there. Second step goes like this. This is how the mill material has been collected from the different sites and has been stockpiled somewhere in the plant actually. And if you see the definition in general about the recycling, there are two kinds of recycling people talk. Let's say FDR, this is cold recycling. Because there is no heating procedure, there is nothing, we are not going to heat any aggregate between nothing. अगर आप in general बात करेंगे, cold recycling, hot recycling, there are two processes that we are usually discuss actually. अगर आप sample देखेंगे, this is how the sample look like. One is the cold recycling, another is hot recycling. Remember, these are only for the witness layer. If you have the witness layer which is 100 mm or 150 mm, and you see that we have to do the recycling on the top layer. There are a couple of projects, good projects have been done in India now. If you see the left side, sample is a cold recycled sample. You see the color is a little bit brownish color, and this is your kind of regular mix that you can see. Because the emulsion is there between the emulsion that we try to use. So if you categorize them, there is an emulsion, there is a foam. Worldwide, if you see the practice, people are using either emulsion or foam between for recycling only the top layer that I'm talking about. I'm not going further down into the aggregate layer and subgrade layer. I'm not going to that, but I will discuss about that later on. So you can do the in situ recycling or you can do the plant. Now you can make the combination. There are 4 different combinations that you can think about. Either it is your emulsion or in situ or in plant, or it can be your co-pigment, either in situ or in plant. Now this is how you can categorize them. Either it is cold in place, it means on the site we are doing the recycling, or it can be the central plant recycling. It means everything has been done on the plant, and then you bring it to the site. Now, if you see this cold recycling technique, now there are multiple ways of doing that. Now you must be curious that what is the way that we are following in India right now, and why we are not really upgrading ourselves, or we are not going to the next level. So think about that. First, we are looking into the single train. This is the method which we have been followed in India right now. We are only using the single train right now. Most of the project, almost 99.9% project. We don't have the 2-unit train or multi-unit train. What are the difference between them? And why do we really need to worry about that? And why we need to go for the twin or multi-train kind of recycling process? If you see the photograph here, I'll show the photograph briefly. If you see this is the process here, this is a single unit train. You don't see any paver anywhere. There is no paver. You have only single machine that is milling everything, recycling everything on the site, and you are just compacting it. And this is the emulsion tank or maybe the foam between. After that, you do the compaction with the knowledge chain. Only single machinery is there which is doing everything. There are certain challenges with that. You are not sure that how the aggregate gradation will look like. You don't have the control on the aggregate gradations. You don't have the control on how the mixing will go. There are certain challenges. And also, there is a non-uniform thickness sometimes that you may encounter. Now, this is the twin train. So, twin train means you have the recycling here, machine is there. You see the unit here actually. Now you have brought the paver here actually. Earlier, if you see the back slide, there is no paver. There is no paver look like this. But if you look into this particular scenario, there is a paver. However, what you don't see here, whatever this machine is putting in this paver, it has been paving it. So we have gone to the next level now. We are paving using pavers so that it gives the better quality, better thickness, better control, and better additivity altogether. However, this particular technique also does not take care about the screening, about making the kind of mix very homogeneous in the nature. Then go to the next level. Now, this is the kind of process which many developed countries use. So it has multiple things. You have the kind of screening here and crusher also here actually on the site itself. This can go into the plant also, but this is how the things look like, and then you have the paver also. So this is how the unit of trains look like. So we'll discuss about all these things. Now, whole central plant recycling can be done
conventional plant, or you have the standalone plant actually. For example, your development plant is there or DSC plant is there. You can definitely use that actually. And if you go further, this is how it looks like. This is the cold central plant recycling, and many of the projects have been done in this particular using this particular technology. You have a standalone plant, and in this plant you are just putting aggregate, emulsion, or foam, whatever, and then you just take it to the site and then bring it actually as a regular mix actually. Now the question is, how do we do that? If it is so straightforward, if it is so easy to do that, then why we are not doing that? Or what are the challenges that people have been facing so far actually in these technologies? If you see there's a critical point, there are a couple of points that you can see here. There is emulsion and foam you require, the filler is there, you have the wrap is there, and there is a mix design. Success is also there, the failures are also there. The failures may be there not because the technology is bad, because the execution or the kind of mix design or the kind of planning that is not up to the mark actually sometimes. Now, I will just show very briefly about the kind of concept-wise. This is how the FDR people are doing actually. The existing road, you do the milling, you do the polarization, you add additives, and then you mix it again, and then roll it, and this is how it is actually. My purpose is not to go into the deep of that, but my purpose is to show you how the technologies can be combined together. That's what I will show you later on. Now, what people are doing worldwide, if you see the two different techniques people are using for FDR in other countries also, they are using it in emulsion and foam, or they are using certain kind of cemented additives actually. Yeah. In fact, emulsion and foam is also popular if you have a lot of aggregates layer and there is not a lot of soil in that particular layer. This particular technique is also quite viable. People have been using that actually. Yeah. Or you have the cement additive, that's what people are discussing now in this particular model. Now, what do we do that? There are different additives that you can think about. There are different steps. You have the cement additives, you have the water, you have the kind of recycled materials. How deep you have to do, how do you do the compaction, how do you do the mixing, polarization, how many times of cycles, all these things are there, which is definitely the purpose of organizing these 2 days things actually. Everything looks fine, but sometimes you will also see like this actually. And then you may see that there are certain issues that is going on in terms of the execution actually. Technology is not bad, but how do you do the execution actually, that is more important. Then comes the SAMI layer, that what people have been doing that. What is the SAMI layer, how do you put it? There are different kind of layers that people can use for on top of the FDR. It doesn't mean that you cannot really do the good job. There is a good job also. You can get a good course sometimes, but there is a challenging part of taking the course sometimes from the FDR because of certain regions. However, you can see this like this also sometimes. Now the question comes whether the technology is bad or the quality is bad or whether this road will survive or not survive actually. So ultimately the engineer want to know that question, that whatever has been done, how long it is going to go actually. Now what I'm going to discuss here, the combination. That is my main purpose of talking about this presentation. How do we really think about the combination of the layers? Now this is here you have to think about what exactly we can do to maximize the benefits. You have the FDR technique, you have the FDR that you know, you have the cold central plant recycling, it means on the plant you can do that, or you have the cold in-place recycling. Now, if I ask you that let's do the combination of these things, depending upon the site conditions. Let's do the combination of maybe CIPR or CCPR, let's do the combination of FDR plus CIR, let's do the combination of something, depending upon the site condition. And there are a couple of sites sometimes, depending upon where do you have the failures in the layer. If you have the failures in the bottom layer, definitely you wanted to take all the mill material, put it somewhere on the plant, do the FDR on the side, bring it back, the cold material. There are multiple ways that you can really do the combination of the technology that you can think about it. I will show you a couple of examples. This is the first example. Depending upon the site condition, you can think about sometimes when you have the very thick layer of pavement, the bitumen layer is around 200 mm or it is failed actually, sometimes top layers actually. You may think about a couple of technologies together. Either you can take out the material and then put it in the plant, do the cold central plant recycling, then do the cold in-plant recycling and combine them together. And this is not like this is a fancy thing, which is happening already all over the world. Depending upon the site condition, depending upon what thicknesses do you have. So this is the kind of thing that you can think about. Other thing that you can think about, FDR plus CCPR. And this is quite innovative way actually, that you can think. You do FDR, and then you know that whatever layer has been made
has been put up on the plant. How the plant, that whole recycling now you're doing with the emulsion. FDR has been done to take care of the bottom layer, bring CCPR from there, and then lay it down. This way you are combining the two technologies together. You are rectifying the problem with FDR. You are also using the milled material using CCPR. And on top of that, you can put maybe 40 mm BC or whatever you want. Remember, these are the treatment to do the deep treatment into the pavement layer, deep treatment. And you know there are a lot of issues and you wanted to optimize the cost. Sometimes you can also do, you have the FDR, either you can take FDR or cold recycling, whatever actually. On top of the FDR, or on top of the any other layers, you can put different types of things. In fact, you can put concrete on top of the FDR. You can put short parallel concrete on top of FDR actually. If the FDR layer is good, you can definitely do that. You can also think about the thin layer on top of that. You can also think about BC plus other layers actually. Many innovative ways that you can think about actually. In fact, cold recycling or cold mix can also come on top of that actually sometimes. So this is how the cold recycling combination may work actually, depending upon your understanding of the subject. Now, next is the hot recycling. Now, hot recycling, another important area that we are thinking about nowadays. And we are not really putting too much focus right now, but if you see in general interest among the practitioners or the highway engineers, there's a lot of interest in this technology. A lot of bitumen saving is there, a lot of aggregate saving is also there. And this is how the people are now looking into that. How do we maximize the plant recycling actually? Definitely the cold in-place recycling is also there, but cold in-plant recycling, which is gaining a lot of popularity nowadays actually. And you can think about, this is how it looks like. You have the plant recycling, you have the in-situ recycling, same thing. Like what we have the cold recycling in plant, in-situ, same thing you can think about the hot recycling also, where you have the hot mixing is going on actually now. Now, hot in plant recycling and hot in-situ recycling that you can think about it. Now, a couple of questions that people ask us actually. Can I do the hot recycling? Can I really save the money out of that? What type of the plant I need to use? How do I do the MIG design? How do we really do the construction? These questions have already been answered actually. Already been answered by so many practitioners, so many researchers, so many countries. So if you're really struggling with this answer of these questions, it means you're not aware about the technology actually. It's just like big understanding of the subject, understanding of the technology only. Otherwise, recycling is one of the most popular technique in the developed countries. Japan uses up to 60%. In fact, US uses up to 40 to 50% actually. Europe uses even 100% also actually. So definitely you can think about these questions are not very strong questions, but yes, they are the concerns that people have sometimes actually. It means we have to educate our people, we have to educate our practitioners so that they can think about using this technology actually. This is how the hot in place recycling. I'm not seeing many projects here in India, but definitely there are certain projects going on in this particular technology where you do the recycling in place only. You see the big heaters here actually. Big heaters are here, and this is one of the projects which was done by, I think, Vidgan long back, I think 2019 and so. And it was one of the successful projects that they carried out in India. See how the things look like. Now the important thing I will show you here, I will just skip a couple of slides because this is more technical slide, but I will go to more practical slide, which is kind of concern to us. There are the different rejuvenators, so let me skip to that. Important thing is here actually. You build a road, and let's say for example it failed actually. A lot of rutting has come, a lot of issues has come. Now the question people ask, do I really need to use the rejuvenator that I am using? A rejuvenator is required just to make sure that have the stiffer wrap. What kind of rejuvenator do we need to use? How do we evaluate the quality of rejuvenators? How do I really think that this rejuvenator is cheaper for me and cost effective and also it is durable for me actually? Therefore, you definitely need to have certain more mechanistic approach actually. And this is one of the kind of approach that we also use sometimes. Just you can think about doing some recycling that we do actually. This is one of the kind of tool that many of the IITs have nowadays, that how do you do the kind of rutting test, whether the rutting is happening. You see the major highways is rutting now. A couple of highways, you see a lot of premature ruttings also, multiple reasons. But yes, there are certain better approach that we have to adopt now, that how do we really think about the kind of like better MIG design approach.
And once you see this after maybe 7 hours hammering, and this is how you may think about the different kind of mixes actually. Some mixes may fail prematurely, some mixes will not fail, some mixes may like miserably fail, depending upon what is their composition, what is their gradation, what is their binder content, what is their execution, compaction, lot of. So I will skip few slides, and then again I'm coming up now. I'm again combining hot and cold together actually. There I combined cold together. Now I'm combining hot and cold together here now actually. So you can again think about it that how do we combine hot and cold, and it has been done. Recently, I think one of the projects they did this particular technology that they adopted, that FDR and CCPR, CIPR plus HIPR or hot in plant recycling. You can combine now. So there are multiple options available depending upon what do we have, how the project look like, what is our execution plan, what is our like the kind of construction plan actually. For example, this is one of the examples. You can have the CCPR plus HIR. CCPR means the cold central plant recycling and hot in plant recycling actually. It has been executed already actually. Many of the project has been done in India based on this particular technique that they have the cold central plant recycling and they have the hot in plant recycling actually. Up to 30% and 40% RAP has already been used actually for the technique. You can also think about cold in place recycling. For example, FDR plus HIR. You can also think about that. That how do we really use the multiple recycling technologies together. So the whole purpose of showing you all these technologies just to make sure that you are aware that recycling is not a kind of something you need to ignore actually in the future. And in the future, it is such a wonderful opportunity that we have in front of us. Because really a lot of opportunities are there for doing the recycling and different combinations actually. Already been done. Many of the combinations that I showed you, people are already trying that actually. So definitely, I think that's how it is look like. But one thing that I wanted to show you here actually, whatever technology you use, you have to have the certain kind of plan. You have the technical understanding, you have the training, you have the quality control, acceptance policy, feedback, and data collection actually. That's what we are now looking into. Technology is not going to help you if you don't know how to utilize that properly. We have seen the best technology also being failed in India actually sometimes. It is not the technology is bad. It is how do we execute that? How do we really do the construction? What is our practices that we follow actually? And with that, I think I conclude maybe well before 20 minutes. Chairman, sir. So, thank you, Dr. Dharmveer Singh Ji, Professor IIT Mumbai, for giving us a wonderful exposition on IRC 120 recycling. So, different shades of green were shown by him. So, now I invite Dr. Vishal Thumbare, Deputy Chief Engineer, PMC Mumbai, for giving his presentation on implementation of green technology in urban roads. ये आगे करने के लिए नमस्कार. First of all, I am very much thankful for the organizers for giving me chance to share my experience. Basically, I am a field person, so मैं साइड पे ही खड़ा रहता हूँ और साइड पे बातें होती प्रैक्टिसेस होती है उसमें उसके बारे में मैं थोड़ा we'll discuss in detail through my presentation. Before that, regarding today's topic, full depth recycle and green technology in road constructions. Yes, this is new technique, just few years started in our country, and day by day it's growing from growing in all our cities and villages. So we should study in detail because there are various advantages and a lot of experts are talking about this technology. I will just speak about its application. So just to start with, these are the contents of this presentation. I will just brief in Mumbai what we are doing and various green technologies what we are using in Mumbai.
uh, uh, I will discuss one technology which we call as green technology, which is nothing but thin and ultra thin white topping, and some experimental work which we have done in Mumbai. Well, just to have refresh, Mumbai is formed by 7 islands. The area is very less, 436 square kilometers. Out of we having a road network of about 1941 kilometers. Now it has been increased to 2055 kilometers. Apart from this, some roads are owned by PWD, MMRDA, MSRDC, MADA, and private layouts. In urban city, we had concretized up to 1,214 kilometers of roads, which is in concrete and white topping. I think which is highest in our country as if you compare with urban cities. These are the few activities which are carried under Chief Engineer Roads: construction of development plan roads, maintenance of major and minor roads or where bus routes are plying, widening of existing pavements because everywhere now the properties are there, but we have to just wide. There are no new roads coming in Mumbai. And these are the various methodologies which we improve or repair roads by using asphaltification, massification, concretizations, interlocking pier block, thin and ultra thin white topping. These are the various great technologies for urban roads. Few of them are full depth reclamation, which is our today's topic. Second one is which we are using geopolymer concrete, and third is thin and ultra thin white topping. So I'll be speaking on thin and ultra thin white topping just to have a short discussion about FDR. Before going for FDR or any reclamation, we have to do certain investigation or certain tests, which are nothing but, as we all know, I'm just refreshing. All of us are working on site and consultants designing various roads, highways, and different villages roads. We all know that yes, of course, we have to do pavement condition. Now again, there are different types of pavement condition survey. Nowadays, we are doing with the help of LIDAR, and even we are using AI and ML, artificial intelligence and machine learning. Payment composition, we have to see what is the history of that particular payment. Structural evolution is very, very important because if we know the deflection of that particular structure or of that particular payment, then we can decide which type of methodology is to be used. This is very important. We can't use one technique or one technology everywhere in cities. So we have to study scientifically, design it, and then we have to decide whether we have to do asphalt, whether we have to do concrete, whether we have to do thin or ultra thin white topping. I will just run because in 20 minutes I have to finish everything. Milling, we all know milling plays very important role. It control removal of existing pavement to a desired depth. Whatever retting or whatever distress are there, we are just removing with the help of milling machine. In no case we have to use JCB or anything. We have to use only milling machine so that we get uniform depth. Existing displaced pavement demolition using bulldozer dozer or backhoe. Now full depth reclamation. All the reclamation material of the pavement with or without fresh stabilized in situ with suitable stabilizers to produce the base course of the pavement to be overlaid by bitumen. Basically, we have to mill it. We have to reclaim the entire depth as per the design or as per the requirement, and then we have to go further. During this process, yes, we have to do some soil stabilization, and at some portion we have to use some additives. These are the various advantages of soil stabilization reduction in
Usage of aggregates hereby reducing carbon footprints. This is very, very important. Now we are talking about zero carbon. So again, we are talking about carbon credits. So as far as possible, we have to use recycled material, whichever form, without affecting our specification, quality of construction. Reduction in construction time. Yes, it depends on site to site, but the time which conventional for construction of pavement is required, certainly it is less in case of soil stabilization technology or in FDR. These are the few steps how we have to go further. Uh, First of all, we have to mill it, then cement, we have to spread the cement or any other material, then we have to add additives in it, then recycled, compaction, then grading, rolling, curing, then prime coat and surface layer. Surface layer may be in the form of asphalt, it may be in the form of panel concrete, it may be in the form of thin or ultra thin white topping, because it's a varying course. This is just a definition or some points or guidelines given by MORTH. As far as possible, we have to use local material due to their various advantages. Now, regarding geopolymer concrete, we had done some experiments in Mumbai on Eastern Express Highway and Western Express Highway for filling potholes, because we can't hold traffic for longer time. So we were searching such a material which sets very fast, and we came across this material, which is nothing but geopolymer concrete. After laying, it comes in 25 kg of bags. Now there are a number of players in market. We have to just mix it and lay it on the surface. It sets within 2 hours. We can open for traffic after 2 hours. So again, there are research going on how we can reduce this 2 hours to 1 hour or 30 minutes. Now, these are the some districts which we can across for any pavements. Well, these are the some districts which we normally come across: rutting, cracking, settlement, and potholes, which is expensive if service life cost is considered, because every time either we have to do overlaying or we have to attend bad patches or we have to attend potholes. So what are the different reasons for this? Why does it happen? Improper subgrade, then improper surface and surface drainage. This is very, very important, because most of our utilities are below our pavements. So we have to address in such a way that it will not affect our space or subbase. Leakages to underground water mains and wet utilities. Wet utilities might be it might be water mains or sewer mains. There are some pockets where during rain water is stagnated on that particular surface, water logging is there, and if the vehicle is plying on that particular pavement, then distress is bound to happen. Increase in traffic density and axle loads. We have to design scientifically, we have to do axle loads spectrum, and as per IRC SP 76 or IRC 58, we have to design the concrete or white topping pavement. Frequent cuts on road pavement due to various utilities. As we all know, all over India, we had seen whenever we lay asphalt pavement, next day utility person come, he ducts. What happened? There is a fault in electricity, there is a leakage in water main, there is a fault in optical fibers. So every year we face or we do trenching about 500 kilometers. Now we had come across, we at this point has been addressed in the form of ducts. Now we are providing separate utility ducts so that our main carriageway is stable. Current practice, we are using cold mix for attending these bad patches, mastic, rapid, hardening concrete, which sets in within 6 hours, geopolymer concrete, micro surfacing. This is also one of the good technology and fast technology which we had started using in Mumbai, and ultra thin white topping, thin and ultra thin white topping. I will just go
little bit in detail. Basically, there are three types of white topping: thin white topping, ultra thin white topping, and conventional topping. This is nothing but as we are having asphalt overlay, in the same manner we are having concrete overlay. Now it is differentiated by thicknesses. If it is between 100 mm and 200 mm, it is called as thin white topping. If it is less than or equal to 100 mm, then we are calling as ultra thin white topping. This is the typical cross section where on the existing asphalt pavement, we are just milling the existing pavement because number of years the traffic is flying on that particular area, so we get consolidated base and sub base. So we are not disturbing these consolidated layers. We are just milling the top surface, distress surface, and on that distress we are putting a thin layer of 100 mm to 150 mm of M60 grade of concrete in Mumbai. These are various advantages. Reduction in thickness. If we compare with the conventional concrete, it varies from 300 mm to 350 mm. In this particular technology, of course, every road has to be designed. What we had seen, the thickness come between 100 to 125 mm. So we are calling as reduction in thickness, fast track construction. Since we are using M60 grade of concrete, it says very fast because we are using mineral and chemical admixtures in concrete. So whatever strength we are getting after 20 days of curing, even we can get after 72 hours. And when we achieved flexure strength of 4.5 Newton per mm square, we can open for traffic. That we are getting after 72 hours, depending upon the grade of concrete which we are using. Reduced maintenance is a concrete, so at least it lasts for 25 years without any maintenance, no potholes, no distress. It's been has been seen. We had done we are using this technology from last 20 years, and whatever roads we had constructed by using this technology till date, there is no distress seen on these particular payments. We are just milling the surface. Why we are milling the surface? Because we can get a good bond between asphalt and concrete due to these two different surfaces, due to these two different materials. Due to these composite actions, stresses in the top concrete layer are lower in view of this composite action. This is. I will just go a little bit fast. Concrete mix design plays very important role because everything depends on the how you design the mixes, because strength is very important, and whatever target strength we are achieving and after how many days we have to open for traffic, as per that we have to design the concrete mix. We can design this concrete mix by using IRC 44. Even these are few mixed designs. Construction practices is just similar that of concrete roads. In case when we talk about joints, in case of concrete pavement, we do joints, transverse and longitudinal joint. In case of transverse joint, after every 3.5 to 4.5 meter, we have a longitudinal joints, and after the 3.5 we have a longitudinal joint and transverse joints. But in this case, as per IRC, they had recommended that the usual spacing is 12 to 15 times that of thickness, which is 0.6 to 1.8 meters. In Mumbai, we are having joints 1 meter by 1 meter. Early joint cutting is very essential because we are using high grade of concrete. It sets very fast. So within 5 to 6 hours, it is mandatory to cut the joints. Due to this, your warping and culling stresses reduce. This is just the cost comparisons of different methodologies. 4 minutes, sorry. Okay. Some experimental stretches by using this technology. We can design white topping with the help of IRC SP 76 2008. Now it has been revised.
2015. Thickness of TWT, thin white topping, can be determined by type and volume of existing and expected traffic, strength and condition of existing pavement, material properties of concrete. Well, these are routine tests which we normally do. These are the experimental actual flexure stage which we got. As per IRC, we should have minimum 4.5 megapascals. After that, we can open for traffic. Here we got after 7 days, it was 6 to 7 megapascals. This is another experiment. Since few years back, this technology was new. So we had done some instrumentation by putting some strain gauges and thermocouples during construction, during concreting. These are the strain gauges and thermocouples. It was arranged in different directions so that we can know what are the stresses and what are the top and bottom temperature coming on the pavement. These are all the site photographs. Pouring of concrete is done what we do similar in case of conventional concrete. These are actual photographs since in city roads are having width 12 meters, 15 meters, or max to max 27 meters. So there is a limitation of using slip form pavers. So we are using fixed form pavers. Chemical curing is must because since we are using MCC grade of concrete, heat of hydration is lot of heat of hydration is there. So to address immediately, chemical curing is there so that it can maintain the moisture content in concrete. Early joint cutting is there, diamond cutting after 5 to 6 hours, curing by pond curing or chemical curing. Even this trace has passed more than 16 years. There are no distress on this pavement. This ultra-thin white topping, it was constructed way back in 2006. Today, still the road is working. It is in Mahul, Chembur. Just near to this road, Hindustan Petroleum and Indian Oil refineries are there. So all type of heavy trucks are plying on that. Multi-axle loads are plying on that. But we are not seeing any distress on this pavement. This analysis was done. I think 1 minute is there. Now we are having lots of data through this instrumentation. Even we can optimize by using this data, and we had optimized even further the thickness has been reduced. By reducing thickness, tremendous time is saved and money is also saved. Non-destructive testing has been done, water permeability and rapid chlorine, penetration rate, RCPTs. These are all the practical photographs, all the site photographs which I am sharing with you. No water was percolating through this pavement durability test. These are the test results. First time we had used GPR, ground penetration radar, because there were two different material. One was asphalt, another was concrete. And we were just eager to know what is the bonding between these two different layers. So this experiment we had done every year till 8 years. And these are the actual results. We had seen 80 to 90% of perfect bond between asphalt and concrete. So conclusion nowadays has come that we have to move further what we are using in conventional method. Yes, FDR is one of the best method where you can recycle the existing material. We can use some additives on this existing material. We can have a very good surface, very strong surface, and on that FDR we can either we can do DBM, dense bituminous macadam, or asphalting concrete, or even we can do panel concrete, or even we can lay thin or ultra thin white topping on this particular technology. There are various advantages which we can see in near future.
Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vishal Kumbare, Deputy Chief Engineer. He has really presented a very nice exposition of the field work and his field experiences. In fact, Maharashtra has also sanctioned a 10,000 kilometer project on rural roads with thin white topping. My colleagues would recall. It's a huge thing which is going to go on now in Maharashtra. Now we invite Dr. A.K. Sinha, Chief Scientist, CRRI, on valorization of different waste materials for road construction. This one? You. Three pointer है और आगे बढ़ा. स्लाइड नहीं आ रहा है ना. So please start quickly. Yes, slides are on. Good afternoon to all present on the dais, of the dais. First of all, I like to thanks to IRC as well as UPRRDA for giving the opportunity for the presentation. So here I am going to present CRRI work related to recycle of different waste materials. It is not a only recycle, it is a value addition of waste materials. So in this presentation, we will cover specifically which is work carried out by CRRI, and it will all included in the IRC different guidelines, IRC SP 98, IRC SP 121, and as well as 132. Okay. So different type of waste materials are coming from, either it is coming from the mining in the tailing form or as a overburden. And from the industry, different type of waste are coming like pond ash, fly ash, bottom ash. All are coming from the thermal power station. Copper slag is coming from the copper industries. Jarosite, Jarofix, zinc slag are coming from the zinc industries. And phosphogypsum is a waste material coming from the fertilizer industries. Marble dust is coming from the marble industries. And other waste material like foundry sand, it is coming from the molding industries. Chrome slag is coming from the chromium industries. Red mud is coming from the aluminum industries. MSW, we are knowing all what is MSW, and iron slag, steel slag, copper slag, all are included in the IRC SP 121. Waste plastic is included in the IRC 98. So first of all, any waste material when we are going to use, it should be non-hazardous. So first of all, before starting any test, we have to carry out hazardousness, means TCLP test we have to carry out after getting non-hazardous. Non-hazardous means permissible limit of inorganic and heavy metals should be below the permissible limits as per the Ministry of Forest Climate Change guidelines. If when we are knowing that it is a non-hazardous material, then we have to categorize in the laboratory, and then we have to design
either in embankment के लिए और subgrade के लिए और BC layer के लिए. And after designing that, we have to study the performance in the laboratory. After that, getting the feedback from the laboratory, we have to go into the field as a pilot study, and then we have to study performance in the actual field condition. After that, we have to develop construction methodology, and then it can be included in the IRC guidelines. So for environmental assessment, we have to do TCLP test, and all inorganic and heavy metal concentration should be below as per the permissible limit provided in the Ministry of Forest Climate Change guidelines. So, generally, we are getting waste materials is non-plastic in nature. So, considering the non-plastic nature, cover soil. This is the pictorial view of the cross section. When we are getting less than PI 10, we have to provide cover soil, and cover soil nothing but it is a subgrade materials. So, soil properties for subgrade material is already written in the IRC guidelines. So these following waste materials has been carried out by CRRI laboratory, Jarofix, copper slag, phosphogypsum, marble dust, steel slag, and we will proceed for the further presentation. These are the different waste materials coming from the zinc industry, like overburden, tailing, jarosite, jarofix, granulated zinc slag, coarser zinc slag, depending upon the extraction process. So, one case study I like to present here. In State Highway 9, Pithoragarh to Udaipur, Jarofix was taken from the Hindustan Zinc Limited, and 3 sections were laid down. First, only Jarofix was used in the embankment. In the second, 50-50 Jarofix and soil was used, and in the third section, control section, which was carried out by using conventional materials. And this is the pictorial view of the construction. During the construction, different parameters, thickness, modulus, gradation, all parameters we have studied. And after construction of that, performance monitoring was carried out by measuring deflection, settlement, environmental assessment, visual condition survey. And these are the settlement parameters, which was compared in the laboratory by doing consolidation test and by doing laboratory test, and then actual in the field condition. Not so for environmental assessment, this is the red color is showing the track up, downstream side, upstream side. Samples were taken, soil sample and water samples, and it was compared with the list of guidelines, and it was found that permissible limit is below as per the Ministry of Guidelines. So economic analysis was also carried out. For a typical cross section, 4.5 lakhs can be saved by using Jarofix material. So after getting feedback from the pilot study, technical discussion was carried out at the site as well as in the workshop form, and try to convince the stakeholder like a state PWD, NHI people, contractor, and then it was decided that in bulk quantity it can be used in the construction of retained field in the flyovers. So this is the pictorial view of the slide at the site, and this is the finished road. And after getting feedback from that, in IRC 132, it has been included, and this is taken from the IRC code. And under this is a cross section of the Jarofix embankment, as it has some PI value, around 17 PI value is that. So in this section, copper soil was not incorporated. So no need in Jarofix. In the case of Jarofix, no requirement of cover soil. So some of the award has been received by CRRI. Copper slag is coming from the
copper industry, and it was taken from the Birla Copper Industries Dahej, as well as from the Tuticorin. And this is a cross-section, proposed cross-section, which is mentioned in the IRC 132. And this is the case study 2. At Tuticorin, copper slag was used in the construction of embankments by mixing. This is the lead cross-section at Tuticorin. And here, pilot study, copper slag was blended with soil as well as with fly ash, and then whole construction was carried out. During the construction, different modular settlement analysis was carried out, field CBR also determined, and then roughness performance study was carried out by using different equipments, and it was found that this can be used as an embankment material. As a structural field was also examined by evaluating different parameters. Economic analysis was also carried out, and it was found that for a particular 400 meters and having 2.5 meter high embankments, 3 lakhs can be saved by using copper slag as embankment material. Now it is used in bulk quantity in the construction of roads. So this is taken from the IRC 132, another view of that one, and different award has been received. Phosmogypsum was carried out from PPL Paradip Phosphate Limited, and it was found that phosmogypsum is also a stable material for the construction of road. If you will see phosmogypsum, we will see it is waste material which is available on pan-India basis. 5 sections were laid at the PPL Paradip. These are the sections in subgrade, as well as in embankment, as well as a GSB layers, and control section was laid down. You see, it is very difficult to get site also. So we have tried, but in the campus of PPL, we got one stretch where 5 sections were laid down, where water logging was also there. And this is the pictorial view of the different construction process during the construction also. Here also different parameters were evaluated, and this is the pictorial view of the finished experimental. This is the details of the project. And after the construction, performance study was also carried out. Here also different awards have been received by CRRI, and these are the typical properties of phosphogypsum. And this is the cross-section of, it is a non-plastic material, so cover soil was proposed here for phosphogypsum in the case of phosphogypsum. Red mud is also a waste material which was carried out from Muri, Jharkhand, as well as from the Koraput, Birla Industries. And you see in southern part of India, red mud is available in bulk quantity, and this can be used as an embankment material. So in case study 4, red mud was laid down in National Highway 130, where new greenfield area road was going to be constructed. So here, this is the pictorial view, a typical view of that, and this is the different construction stages has been, and it was decided that actually in the red mud, moisture content is very high. To reduce that, fly ash was blended for the construction of that. So this is the view of the construction site. One section is soil section, another section is red mud with fly ash, and other section was laid down by red mud in only subgrade. During the construction, different parameters were evaluated, and now this is the pictorial view of the finished road, and measurement for performance measurement is going on. So this is the typical view of the geotechnical properties of that. Municipal waste, you see in huge quantity, 1 lakh ton per day it is being produced in India, and CRI has carried out from the Gazipur landfill area, and where 200 ton garbage were taken out, and in the segregation plant we have segregated that materials, and this is the segregated view in the laboratory as well as from the plant. And composition analysis was also carried out, and it was found that after passing 35%, 91% is soil-like materials. So this is the pictorial view of that. After CRI study, it was concluded that about 60 to 70%
MSW can be used in the construction of embankment, and rest of the waste material from the MSW can be used for the energy conversion plant. So this is the, now after a study of CRRI, now it is being used in bulk quantity in to Delhi. Also it was being used as a embankment materials. So some of the photographs I have shown. This is the typical properties of MSW, and based on that, IRC medal or MORTH hackathon was issued by CRRI. Marble dust is coming from the marble industries, and you see 95% marble dust is coming from the Rajasthan only. And this is the typical properties of the marble dust, and some cross-section has been proposed. As marble dust is also a non-plastic material, so cover swale is proposed in the IRC guidelines also. And this is the foundry sand was also investigated, taking from the different industries all over the India. Around 12 industries has been characterized by CRRI, and this is the typical property of that. Foundry sand is also available on pan-India basis in huge quantity. Chrome slag was taken from the Odisha, and it was investigated by CRRI, and this is the typical property of the chrome slag, and it can be used as embankment materials. And in upper layer also, iron and steel slag already mentioned in the IRC guidelines. Different type of iron and steel slag by the operation of different type of steel slag being generated, and this is the typical properties of the steel slag. And granulated blast slag was also taken from the Karnataka, and you see this is the typical properties of granulated blast slag, and it can be used in the construction of road. Iron and steel slag application, different type of application of a steel slag is given. It is already mentioned in the IRC guidelines. And this is the pictorial view of the steel slag pilot study. It was carried out as Hazira, Maharashtra, Jharkhand, Arunachal Pradesh, and already it is incorporated in the IRC guidelines. So plastic waste is also incorporated in the IRC guidelines based on the production, thermoplastic and thermostatic, two type of plastic being generated, and based on the source, different type of plastic waste are coming. And for application of plastic waste in the bitumen, we have to thread like this 2.36 to range of 600 micron, and this is the specification of that for application of plastic waste. And this is the pictorial view of the case study of plastic waste which was used in the construction of road at NCR. And we can say all waste material which was investigated by CRRI, it can be used in the construction of embankments. And before any application of waste materials, environmental analysis should be carried out, and there is no any requirement of exported equipment. Indigenous equipment is sufficient for application of these waste materials. And before application of waste materials, field study as a pilot study is required to know the performance of that material in actual condition, and it will conserve the conventional material, soil or aggregate, which is very depleting. All that, it will also reduce the pollution, that, and economic analysis should be carried out when you see economical viability is also required before using in bulk quantity. This is my short presentation. Thank you to all for listening. So thank you, Dr. A.K. Sinha, Chief Scientist, CRRI. Kindly take your seat. You have presented before us really a rainbow of all the waste material potentialities which are before us, and your work is very vital. Now we had three sessions, three presentations before us. So I declare the floor open, and certainly you must be brimming with questions. I don't have any written questions before me. So I would pass the mic around if somebody wants to ask any question. So kindly raise your hands.
for the questions. It's a post-lunch session, so maybe I'll start by asking one of the questions. We had this invite topping in FDR, so I was just discussing with my colleague, Professor Dhanbir Singh ji, where do you use FDR and where do you use TWP? So some brief discussion on that would be required. So who would take that question? It depends on type of soil, what soil we are having, and nowadays white topping is used only. Basically, it is a rehab technique. For new roads, we are not using white topping, but for rehab techniques, we are using white topping. So for years, the traffic is plying on that particular road, and we are just using the residual strength of the sub base. Going further, we can use this FDR method. We can add some additives when we are doing soil stabilization. During the soil stabilization, we can add some additives, and after this full depth, full depth recycling, on the top either we can do DBM, asphaltic concrete, or we can do white topping. In Mumbai, we are not done white topping on FDR. So yes, we are planning to do in future. So I think Ahmadji mentioned about the confusion between FDR and white topping. So that is quite obvious confusion sometimes. See, FDR is you're recycling something actually. You're recycling the existing material. So that is recycling technique. Now, white topping is not recycling. It is you are constructing a new layer on top of that with new materials, with maybe like M40 grade or whatever actually. But on existing BT payment. Now, if suppose, for example, your existing bituminous road is very good condition, but there is a frequent damage, maybe potholes are happening, or you are doing maintenance very frequently, and you decide to strengthen it and then ensure that, okay, next 15 years, nothing should happen. But you are sure that payment is good. On top of that, you can definitely put the white topping. So name comes black, and top of that, there is a white. So that is the white topping. FDR is like recycling technique actually, where you wanted to rectify the damage which is there anywhere in the layer actually, depending upon whether it is aggregate layer or bituminous layer or maybe subgrade layer. So FDR is not like just one solution for all the problems. So it can, depends upon the situation actually. I hope I it is not my question, but I would just like to supplement what Professor Singh told. In fact, the tendency to provide bituminous overlay on a distressed bituminous pavement is not the only option. Thin white topping can be a better option in many of the cases. In any case, for highways, Ministry of Road Transport Highways has issued a very detailed circular which supplement IRC 76. For rural roads, whether that can be exactly used or with some modification that can be used. But to supplement IRC 76, there is a very detailed guidelines from Ministry for highways and state highways, MDRs, those kind of roads. Thank you, sir, for that clarification. Any more questions? Yes. Now I can see some hands are stirring up. Quickly, kindly pass these. I can see chief engineers from different SRRDs also. They're not asking questions. Like Chief Engineer Himachal is also sitting. No questions. So please ask a question. Sir, good afternoon, sir. Is there any project where or any material also? So let me give you the clear definition. White topping is always done on top of the bituminous pavement. So if it is recycled FDR, this is not white topping. So the definition is clear. White topping means if you have the existing bituminous road,
which is in the structural good condition, but bituminous road. You have the thickness of the bituminous layer has to be there. In fact, existing bituminous road, on top of that, you are putting the concrete. That is white topping. If you do FDR, on top of that, you do the short panel concrete. Like panel size is 1 meter by 1. Then this is going to be the short panel concrete actually. And you can consider FDR as a maybe CTB or DLC, whatever. People have done that. In fact, successfully people have done that. So we can do short panel concrete or FDR. Definitely, it is a good option actually. A good option. Any more questions? Irfan Rishi from Jammu and Kashmir. We have talked about the carbon credit score and reducing carbon footprints. Any study or analysis what is the exact value of this carbon credit score? Because we at another end we are using actually cement and other additives which definitely have carbon footprints. So any such analysis done and difference there, kindly share the values please. For 100 kilometers of. So here I think would be in a better position. So yes, Dr. Shukla, would you like to respond to it? He is asking about the savings in terms of carbon. Sir, so far this has not been calculated. It has been calculated? Sir, no, it has not been calculated so far. What can be the saving in terms of carbon credit? Okay. So what is the framework like? Could you just tell him how do we assess the carbon saving, etc.? How do we go about it? Or if somebody is more confident in the floor, would he answer his question? Yes. Good afternoon, my Sanjay from India. Yes, carbon credits is counted on the diesel fuel consumption, direct and indirect. Direct, what you save, and indirect, what you save in terms of logistics of materials. So if you go to Google, there is a clear formula established by European Asphalt or European Union for fuel consumption. So there is a very clear formula, and we use that. Morning, Mr. Sir told us Uttar Pradesh saved 7 lakh plus liters on diesel only in state of UP. So that transpires to huge number. So But I his have a- question was very specific regarding carbon saving. So, Yeah, so that's carbon of saving. course, we can visualize what is the saving in terms of fuel aggregate, but in terms of carbon saving, that is what is. So you have mentioned that there is a formula on Google. You can search for it. But I would request the CRRI also to bring out something on this. So how can we go about, because lot of 10,000 kilometers in the entire country, and even in urban areas and all other parts of the country, this thing is being done. So if some kind of handholding, some kind of guidance of carbon assessment. I have a question for him. Maybe IRC can do something on that. Sir, IRC is already having application. I don't exactly remember the number, but how to calculate this, there is already in IRC document. I can find it out. Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है. So you are saying that it is being brought out? Sir, it is already brought out, sir. IRC has a document, but I have not used it and I am not very conversant, so I can't say, but there is a document and it can be shared. Okay, so I'll request the Secretary General, Professor Ankit Gupta wants to say something. Okay, that will also do it. What is the IRC? SP 133. So now you have got a specific answer. IRC SP 133. So are there any more questions? Yes. Sir, I have one question. Sir, So I'm Ashish Pathak from Ultratech Cement. I'm in charge for white topping of the pan-India basis. We are propagating this concept on the pan-India basis. So as far as carbon rating is concerned, absolute green technology says 70 points should be the absolute green technology. Carbon rating as far as white topping is concerned is 61 and asphalt is 36. That is all we have evaluated on the basis of the various descriptions given in the ASTM and IS standards. Thank you. ASTM and IRC. Yeah, IRC. So both you have used and you have done it. Yeah, we have done it on our own. So it is 36. Where is this document?
So this document has been prepared by us only for our purpose. Now, which can you give us your ID and all? Yeah, I'll just give it. I'll give it to Dr. Vishal Tumre. He knows me very well. And Dr. Dharamveer No, also. if you can tell us your name, your organization. I am Ashish Pathak. I am in charge for white topping, pan-India basis. Okay. And So you have done it. Thank you, Ashish. Thank you. Thank you. Very much. Thank you. So, any more questions or? Sir, namaskar, sir. Sir. Yeah. So my question is simple. I want to ask the suitability of FDR. If my crust has severe settlements, it has depressions to a higher level, should I go for FDR or not? Question. And up to what MSS or FDR can serve the purpose? Traffic, up to how much traffic we can go for FDR in terms of MSA, 10 MSA, 20 MSA? So, who would like to answer this question? On the dais? Yes. Okay. So this question is going to be answered in the next session. So I think, yes. Last question. Sir, in India, we have built so many rural roads in 7 lakh kilometer plus as per the data. And FDR is only 10,000 kilometers done. So why, how and when we look at bigger solutions in FDR or rural roads in its talk? No, what is your question? My question is why only 10,000 kilometers for FDR in last maybe 10, 15 years, and where we have built lakhs of kilometers for rural roads which are due for rehabilitation, upgradations. Why we are going slow on FDR? No, the issue is not why we are being slow. The issue is that it was a capital intensive exercise. You needed machines, you didn't have machines, number one. Number two, PMGS5 per se was with new connectivity initially. Later on, there was a limited target of 50,000 kilometers. That was in 2013. We only came up with a big target of 1,25,000 kilometers in 2019 plus. It was only UP which went about it in a grand way. It needs the support of the SRRDAs also. And you don't have the IRC specification also. There are certain, certain ifs and buts. So UP has taken the lead and we have all thanked UP for it, and that is why we are sitting here. A lot of things needed to fall in place. That is why, we are in this situation. But now the future looks very promising, and there are so many states where this work is going on, so they will take it up. There are other works as well. For example, PWD is also here. There's several persons from PWD. Maybe they would be thinking about adopting it in their FDRs, in their ODRs, etc. Okay. So I would now like to hand over to my co-chair and kindly give your comments on the presentation. धन्यवाद सर। आज पोस्ट सेशन में 3 प्रेजेंटेशन हुए हैं सर। पहला प्रेजेंटेशन डॉक्टर धर्मवीर सिंह प्रोफेसर आईआईटी के द्वारा दिया गया सर। इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था सर। इन्होंने जो रिसाइकलिंग को 100% रिसाइकलिंग के लिए बताया सर। वर्तमान परिस्थितियों में जो लगातार हम न्यू सरफेस करते हैं तो हमारे हाइट बढ़ती जा रही क्रस्ट से, जिससे रिसाइकलिंग से हमारा पर्यावरण के साथ साथ हमारा जो मटेरियल है बचता है और इसमें कास्ट रिडक्शन होता है। इसके बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए हैं और साथ में जिन्होंने जो तीनों तकनीकी हैं, तकनीकी को अलग अलग और कंबाइंड कैसे किया जाए उसके बारे में बहुत ही अच्छा वेल डिफाइंड किया है। चाहे FDR हो, CCPR हो, CIRR हो और HIR हो, और इन तीनों मेथड्स में अपने प्रेजेंटेशन बताया है किस तरह से हम इनको कास्ट रिडक्शन कर सकते हैं और मटेरियल सेविंग कर सकते हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन है सर हमारे अर्बन रोड्स में डॉक्टर विशाल थोम्बरे डिप्टी चीफ इंजीनियर BMC द्वारा दिया गया है, जिन्होंने अर्बन रोड्स का फील्ड एक्सपीरियंस और थ्योरी एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर बताया है और जो अर्बन रोड में जो प्रॉब्लम आती है और उसमें डिस्ट्रेस आते हैं उसके कैसे सॉल्व किया जाए, FDR के माध्यम से, वाइट टॉपिंग के माध्यम से, रिसाइकलिंग के माध्यम से इन्होंने बताया है। और FDR और वाइट टॉपिंग के लिए थिन और अल्ट्रा थिन के बारे में बताया सर।
और इनका प्रेजेंस में सबसे अच्छा रहा कि जो रिडक्शन ऑफ टाइम, जो ओपन ट्रैफिक ओपन करने के लिए जो 3 आवर 4 आवर है, इसको 30 मिनट्स में कैसे किया जाए उसके बारे में जोर दिया गया है, और एग्जिस्टिंग मटेरियल को कैसे रिडक्शन किया जाए उसके बारे में अच्छा प्रेजेंटेशन दिया गया है सर। तीसरा प्रेजेंटेशन सर, वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल का उपयोग करने के लिए किया गया है। जो हमारा डिफरेंट टाइप की वेस्ट है सर, पॉन्ड वेस्ट है, फ्लाई एश वेस्ट है, बॉटम वेस्ट है, ब्लेंडर है, मार्बल वेस्ट है सर, कॉपर वेस्ट है या फ्लाई एश है। इनको हम एम्बैंकमेंट में या सब ग्रेड में यूज करके जो कन्वेंशनल मेथड जो मटेरियल है उसका रिडक्शन करते हैं, और जो वेस्ट हमारा ह्यूज क्वांटिटी पड़ा रहता है उसको हम रोड मटेरियल यूज करते हैं, तो हमारा कन्वेंशनल मेथड जो मटेरियल यूज होता है उसमें रिडक्शन होता है। और ये कास्ट के साथ साथ जो है इसमें हमारे पर्यावरण की दृष्टि बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छा जो जिन्होंने जो जोर दिया है कि जो हमारा म्युनिसिपल का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका 60 से 70% जो है हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं। प्राय देखिए कि जो म्युनिसिपल जो वेस्ट होता है शहर के चारों तरफ या शहर के अंदर, वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है। यदि हम उसको रोड के में उपयोग कर रहे हैं तो हमारे कास्ट रिडक्शन के साथ पर्यावरण की दृष्टि से और शहरों की जो सफाई होती है, गंदगी दूर होती है, उसमें भी हमारा बड़ा योगदान हो रहा है। इस प्रकार जो हमारे जो तीनों प्रेजेंटेशन है पर्यावरण की दृष्टि से और कास्ट रिडक्शन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सभी प्रेजेंटेशन, तीनों प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूपीआरआरडीए और एनआरआरडीए मोर सभी को धन्यवाद इस सेशन को प्रारंभ करने के लिए, और आईआरसी यहाँ पे इस महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा के लिए किए। धन्यवाद। और आज के इस टेक्निकल सेशन को कंक्लूड करते हुए हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे सम्मानित स्पीकर्स का। टू डू द ऑनर, आई हम्बली रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर फॉर दिस टेक्निकल सेशन, श्री अमित शुक्ला जी, टू प्लीज डू द ऑनर। और आभार व्यक्त करेंगे डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी का उन लगातार तालियों के साथ। एक बार फिर हमारे टेक्निकल सेशन के चेयरमैन सर से मेरा अनुरोध है कि वे आभार व्यक्त करें डॉक्टर ए.के. सिन्हा जी का उन लगातार तालियों के मध्य। I request the co-chairman of this technical session, Shri S.L. Suryavanshi ji, to please do the honor and present a humble gesture of gratitude to Dr. Vishal with a big hand of applause. मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री विशाल अग्रवाल जी, लगातार तालियों के साथ वाइस प्रेसिडेंट आईआरसी। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आभार व्यक्त करें हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर फॉर द टेक्निकल सेशन, श्री अमित शुक्ला जी, आईएफएस डायरेक्टर जनरल रेडा, फॉर चेयरिंग द सेशन सो वेल। उन लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ। And once again, I request Shri Vishal Agarwal ji to please present a humble gesture of gratitude to the co-chairman of the second technical session, Shri S.L. Suryavanshi ji. उन लगातार तालियों के साथ। We would like to capture this moment with a group photograph. आप सभी के साथ एक group photograph के माध्यम से इस पल को हम capture करना चाहेंगे। With an outstanding second technical session for the day, ladies and gentlemen, it has been a learning experience for each and every one of us. We still have one more technical session to go. Once again, we thank all the participants for joining us on stage.
आप सभी से अनुरोध है, हमारे कार्यक्रम का अगला टेक्निकल सत्र भी अभी बाकी है, but we will disperse for a short tea break. I request you all another 15 minutes and we will reassemble here. Thank you.
फूलों की होली होगी। नहीं नहीं नहीं, फूलों की होली नहीं।
Ladies and gentlemen, we are now about to start with the third and the final technical session for the day. आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, एक बार आप सब विराजमान हो जाएं, तो कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है. Once again, ladies and gentlemen, we warmly welcome you. And now we are proceeding forward with the next technical session on the topic Full Depth Recycling Reclamation FDR. इसी कड़ी में आज के हमारे अगले इस कार्यक्रम के टेक्निकल सेशन के चेयरमैन को मैं आदर से आमंत्रित करती हूं मंच पर. With a big hand of applause, can we please welcome on stage the respected chairman for the third technical session, Shri D. Sarangi, former Director General, Road Transport and Special Secretary, retired, Ministry of Road Transport and Highways. Once again, a very warm welcome, sir. We also welcome the co-chairman for the third technical session, Dr. Abhishek Mittal, member secretary, H9 committee, IRC. उन्हीं तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन. और इसी के साथ इस कार्यक्रम में मैं अनुरोध करती हूं श्री सत्यजीत दलाई जी से कि वे मंच पर पधारें. एडिशनल चीफ इंजीनियर एंड काउंसिल मेंबर टू प्लीज जॉइन अस. औपचारिक रूप से
हमारे इस अगले टेक्निकल सेशन के चेयरमैन और को चेयरमैन सर का अभिनंदन स्वागत करने के लिए। अब चले तो पहले चले तो पहले चले टाइम नहीं है यार, तो 2 मिनट नहीं है, अभी कुछ बोलने वाले हैं। And with this, we would like to invite on stage the speakers for this technical session. I humbly invite on stage Dr. Sudhir Mathur, Chairman, Drafting Group and Member H9 Committee, IRC. देखिए लोग कम हो सकते हैं, तालियां तो ज्यादा हो सकती हैं. In this league, I also invite on stage Dr. Ankit Gupta, co-convener H9 Committee IRC, to please join us. And I humbly invite on stage Sri Binod Kumar, member H9 Committee IRC, to please join us. With this, I hand over to the dignitaries to please proceed. Thank you. This session I consider to be the most important one because we'll be discussing on the Full Death Reclamation Code, IRC 142/2025. As I explained, and it has been also explained by some other dignitaries, there has been some issues. So the first presentation will be by Dr. Mathur. In fact, he, as the subgroup chairman, he drafted this document. And I would, he will be the first presenter, and I would request him during the course of his presentation to clarify these two issues, why the commercial stabilizers were not included. And I think in the morning session, Mr. Dubey was also pointing out the soil from the shoulder, it is not included. So on these 2 points, he will definitely give his clarification. Then during the question hour, we'll have further discussion. So 20 minutes the time for it. यार बाहर जाते हैं। वो लैपटॉप चेंज हो गया। नहीं ये नहीं है, वो मैंने पूरा फोल्डर कॉपी किया। फोल्डर के नाम से, लखनऊ के नाम से। मैं गई सर नहीं है यार, ये तो हम तो पता है, हम देखिए छोटे आपके पीछे चेंज तो करिए, वहाँ जाके चेंज कर देंगे, यहाँ सेट हो जाएगा। एक बार
Very good afternoon to all the esteemed delegates. And as Chairman Saab, Dr. Sarangi has already pointed out that today I am going to make a presentation on this guidelines on full depth recycling FDR technology for pavement using cementitious binder, which has recently been published by IRC as IRC 142/2025. In fact, this document was prepared by the H9 group of IRC, and then in turn they assigned the responsibility to a core group to make an initial draft. And the group members was myself as the chairman of the group, and then Dr. I.K. Pateria from NRIDA, Dr. Ambika and Dr. Bharat from CRRI, and of course, Mr. Rakesh Kumar from NRIDA also assisted us, because while drafting the document, we needed a lot of information. And since UP RRDA has done considerable work, so we have taken inputs from there also. And on the basis of the entire information, we made a draft which was discussed in the various committees of H9, and then subsequently it was discussed in HSS and executive committee and council meetings, etc., etc. So इसको चेंज कैसे करेंगे? So full depth reclamation is actually a very, very innovative construction technique that offers sustainable and cost-effective solution for rehabilitating deteriorated pavements by pulverizing and reusing the existing pavement materials. FDR reduces waste and conserves natural resources. And this technique has gained popularity worldwide, because when I was preparing the document, I have gone through the several international documents, and I found that it has been gaining popularity in many parts of the world. So this, based on the information which we have collected through the international literature and of course from the local experience, this document was drafted. And this technique has gained popularity worldwide due to its ability to improve pavement performance, reduce maintenance costs, and minimize environmental impact. Actually, FDR is a very highly intensive machine-based technique. Actually, FDR is a highly machine-intensive technology where one needs a series of equipment like road reclaimer for milling and pulverizing, then motor grader, cement and lime spreader, water tanker, vibratory pad foot roller, vibratory drum roller, and then front end loader and pavement, etc. to accomplish the task. But it is very fast construction methodology. If you do a well-organized job, then about 1 kilometer of road very can easily completed it within a period of 3 to 5 days. And in today's presentation, we shall discuss all the pertinent aspects of FDR, which has been taken into this IRC document. Okay. So the outline of the guidelines is like that. There are 6 chapters. The first chapter deals with the information on FDR technologies. Second chapter deals with the pre-project evaluation for FDR, because every road is not suitable for FDR works. Okay, it has been widely used, but there are certain limitations. So those limitations should be known to the engineer before they go for the FDR technology. Then once we decide that we are going for FDR, then how to design the pavement. So that has been given in detail in chapter 3, which deals with the structural design of pavement with the FDR. Then the next most important aspect is that whatever we are milling and pulverizing and mixing, mix design is very, very important, because if the mix is not proper,
then the pavement is not going to perform in a satisfactory manner. So mixed design is a very, very important aspect which has been detailed in chapter 4. Then comes the construction operation. Because as I told you, it is a highly machine intensive technology. So we are using very, very advanced milling equipments. And then for cement spreading, we have, though it can be done manually also, but in order to maintain a uniformity for spreading the cement, we have suggested cement spreader and then compaction equipment also, because they are sometimes big size stone aggregates also. So to crush them, we need a pad foot roller, then an ordinary smooth roller, like that. So all those things have been detailed in the chapter 5 on construction operation and equipment required. And equipment is also, there are specific requirements which have been outlined in this chapter. And then finally, the strength and the quality control, because if the quality control is not done in a proper manner, we may end up with poor road. So all these things have been given in these guidelines. And then finally, one appendix is there which gives tables for collecting the data. Okay. So full depth reclamation is what? Full depth reclamation of pavement is a rehabilitation technique which involves the breaking up and pulverizing of the existing pavement layers to its full depth, blending the same with the stabilizing agents like cement, lime, or any other suitable additive, and compacting the mixture to create a new base layer which acts as a relatively hard-bound base course of the new pavement. So there are many advantages. Full depth recycling of the existing pavement offers a significant cost-effective and sustainable rehabilitation process, as FDR minimizes the need for virgin material and reduces hauling and disposal of the old pavement material, as has been brought out in the morning session. And then FDR can restore the structural strength of deteriorated pavement, making them suitable for increased traffic loads. We come across with many roads where FDR is very suitable, especially the roads which suffer with distress like rutting, raveling, cracking, and in general loss of quality. So generally these problems cannot be solved by replacing the existing layer or providing a overlay over it, and especially when the base and sub-base layer have weaknesses. So in such type of cases, FDR is an excellent technology for overall improving the road quality and its long-term performance. Apart from rehabilitation of the distressed pavement, FDR can also be used for upgradation of the widening of roads, existing roads to the higher level of traffic, and FDR can save up to 40 to 60% of the cost compared to the traditional reconstruct, as FDR reuses the existing material. And FDR layer as a cement-rated base provides a strong base over the existing subgrade or subbase with a strong resilience modulus, improving the road's structural integrity, and require only a thin bituminous layer, maybe a thin BC layer or a DBM and BC layer over it. FDRs are typically completed faster because we are reusing the same material, and as I've told you that in 3 to 5 days, if you do the things in a systematic manner, one can complete a kilometer of road. And thus this technique offers a cost-effective, environment-friendly solution for restoring damaged asphalt pavement and extending their service life. You can see that if you are providing a stabilized base layer, you are spreading the load to a greater width, and as such, the lower layers get less level of stresses, and obviously this leads to the improved pavement performance. And since it is a sort of a impermeable, not 100% impermeable, but impermeable to some extent,
So the moisture related damages are also less in case of FDR pavements. So when I was doing the literature survey for preparing the document, I have found that abroad it has been used in highways, urban roads, rural roads, and even in airport also to a limited extent. But in India, it is now being adopted in reconstruction and rehabilitation of rural roads in many states, and it is gaining popularity. And as I have come to know through you, sir, that you are going to sanction thousands of kilometers of road in future using FDR. Now, you know, sometimes we say that the practice come first and the specification and standards come later. So same thing happened here also. When we gained lot of experience in FDR technologies, and especially in UP and in some other states of the country, it was felt that there is a necessity to bring out a document which should specify each and everything, like materials for incorporating recycled layers in structural design with proper mix design, construction methodology, proper quality control, so that it can be used widely across the country. So therefore, task for formulating this FDR was assigned to H9, as I have told you, and these guidelines have been evolved after a series of discussion with committee members, user agencies like PWD, NRI, academic and research institutions like IIT, CRRI, equipment manufacturing, and suppliers, etc. Now, as Mr. Sarangi was telling me that we have only taken cement. I will just give you some points that, but these, why we have taken only cement and not the commercial additive, because in these guidelines, after a detailed deliberation at HSS midterm council meeting, executive council meeting and council, it was decided to publish this document only with cement as the additive and not CCS. So this I will just bring out certain points for discussion purpose, you know. Now, why we have not considered CCS at this moment, I just want to clarify. First thing is that during the literature survey, while preparing the document, all the international documents, manuals, published literature on FDR indicated only cement as the major binding agent with lime and fly ash. The second thing is that we got some lab results from CRRI and other agencies, and what those results were indicating that the major gain comes from the cement. And when they compared the FDR mixes in the laboratory with cement vis-a-vis cement with additive, it was found that with additive there is not much significant improvement in terms of strength and durability. And what was their finding was that the major strength comes from cement alone, as was observed in the laboratory. Then there is another question which was raised by many of the field engineers, that when the cement comes to the site, we can check the quality of cement. But we don't know about the additives, because whatever is being supplied by the additive supplier, that we have to accept, because we have no, maybe they can bring some report from IIT or CRRI, or maybe it is a accredited material from IRC. But the field engineers were saying, sir, हमको नहीं पता कि ये जो material actually में जो यहाँ use हो रहा है, वो same है जो कि lab में accredit हुआ या lab में test हुआ, तो उसका कोई procedure नहीं है उनके पास. And moreover, it is a very costly material. अगर सीमेंट आपका 5 या 6 रुपए किलो है, तो ये 30-40 रुपए किलो है, या लीटर के हिसाब से जैसे भी है. तो मैंने सोचा कि कहते चलो, मैंने NRIDA में बात करा और मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर हम सीमेंट से खाली करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है, और सीमेंट विद एडिटिव से करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है. So what was provided by NRIDA is that if you go for
FDR with cement only, the cost per cubic meter works out to be approximately 2,000 rupees. Whereas if we go with an additive, the approximate cost is something around 3,750 per cubic meter. So this is a major difference. So now if I do a calculation per kilometer, taking 5.5 meter as a width, so the cost of construction with cement works out to be 27.5 lakhs. Whereas with additive, it works out to be 51.5 lakhs. तो आप सोचिए कि करीब 24 लाख रुपए पर किलोमीटर का फर्क है. अब अगर इफ वी आर गोइंग टू सैंक्शन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, जैसे आप मान लीजिए यूपी नहीं, मान लीजिए 5,000, जैसे मॉर्निंग में बता रहे थे 5,000 किलोमीटर का काम किया. अगर मैं 5,000 को 24 लाख से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल गो इन करोड़. So that is, what I am saying is that I am not against CCS. If they can prove that with CCS the performance enhances multiple times, then of course no problem in accepting that. But till the time the data comes on the performance, and as I have been given to understand कि ये जो यूपी में सड़कें बनाई हैं उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट जितनी भी सड़कें बनी हैं they have all been constructed with cement and CCS. सीमेंट अलोन के साथ डेटा नहीं है. तो मे बी अब NRIDA जब जैसे बिहार में या और अदर स्टेट्स में, मुझे पता नहीं कहाँ पे, जब वहां से डेटा आएगा तो probably the picture will be more clear. So these are the things which I just wanted to bring to this August gathering, कि why it has not been included in IRC 142 at the moment, just because कि अभी हमारे पास कोई परफॉर्मेंस डेटा नहीं है, and the cost of construction with CCS is very, very high. Now, as I was telling in the beginning that not every road is suitable for FDR. We have to look very carefully कि कौन सी रोड को हम FDR में कंसीडर कर सकते हैं, किसको हम FDR में नहीं कंसीडर कर सकते. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले एक साइट विजिट करके डेटा कलेक्ट किया जाए, उसको एज ए डेस्कटॉप स्टडी वी शुड डू, एंड दिस ऑल हैज बीन given in detail in the document. 3 minutes left. Okay, but sir. I can Okay. give you another 5-6 minutes. Okay. Okay, I will conclude fast. Okay, I will conclude fast. Sir, the very important thing in the FDR is that FDR layer is a sort of a semi-rigid type of material, pavement layer. So it should rest on a firm ground. अगर कोई सॉइल मान लीजिए, अगर कोई रोड फेल हो रही है बिकॉज ऑफ द सब ग्रेड फेलियर, या वहां पे ड्रेनेज इश्यूज हैं, वहां पे वाटर टेबल बहुत शैलो है. अब आज जैसे मॉर्निंग में बात हो रही थी कि कहते हैं ऊपर से भी बहुत पानी आता, तो मतलब उन सब इश्यूज को देखते हुए ड्रेनेज इशू को बहुत इंपॉर्टेंट है टू एड्रेस. अगर ड्रेनेज इशू एड्रेस नहीं हुआ तो देयर कुड बी प्रॉब्लम. इसीलिए वी हैव told all these things in a very elaborate manner in the guideline, but we have specified that 5 CBR should be minimum. अगर 5 से कम CBR है तो don't take the risk, क्योंकि otherwise वो FDR layer आपका क्रैक कर देगा. Then there are other checklists also which we have given. I'll not go into detail because of the time constraint. Then comes the design. तो इसमें 3 तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं. एक कंपोजिट बेस ले सकते हैं जिसमें बोथ बेस एंड सब बेस स्टेबलाइज टुगेदर, देन स्टेबलाइज्ड बेस विद ग्रैनुलर सब बेस, एंड ग्रैनुलर बेस विद स्टेबलाइज्ड सब बेस. नाउ we have, somebody was telling in the morning that FDR cannot be done if we don't include the subgrade. No, that is not a correct approach, because we should look into the basic principles of pavement design. There has to be a drainage layer beneath it, because it is not like a concrete, it is a semi-concrete, semi-rigid pavement. So there has to be a thin granular layer which should act like a drainage layer
beneath the FDR for the long-term performance. Maybe today we may see that, okay, the road is performing. And so this issue was deliberated very much in depth in the various committee meetings. And then everybody said that some thickness of granular material should be left below the FDR, and accordingly that has been given for different categories. Of course, the thicknesses we have changed as per the traffic condition. Then mixed design. Mixed design, in a routine manner, we collect the sample, we check the gradation. Gradation is very important because if the material is not properly graded, it is not going to perform in a long term manner. So gradation, plasticity, all those aspects should be very carefully looked in. And then we should prepare the sample, check the UCS, also do the durability and all those things, which are the routine things. So gradation has been specified. We cannot accept any gradation. कि कुछ भी आ गया पत्थर है, कुछ भी उसको लेकर mix कर दो. No. It should be well graded. If it is not well graded, then it is not going to perform. Similarly, the percentage fines should not be excessive. Somebody was saying why we don't take the earthen shoulders. There is a risk. if अगर आपका earthen shoulder मिला करके अगर आपका वो gradation इसमें fit होता है, you go with earthen shoulders. But अगर वो earthen shoulder मिला के if the fines are exceeding, then earthen shoulder is not permitted. You remove the earthen shoulder and do a good engineering. Because this is an engineered material. इसमें हम compromise नहीं कर सकते. Then the type of binders, the ordinary Portland cement, pozzolana cement, fly ash, lime, or any other granulated blast furnace, or even you can consider some waste material if you feel that some gradation improvement is required. So then mixed design report should contain gradation, liquid limit, maximum dry density, unconfined compressive strength, wet density, etc., etc. Then compressive strength. मेरे पास पीछे आया था एक यूपी का ही केस था कि उसमें कई जगह पे जो स्ट्रेंथ थी वो 4.5 से नीचे आ रही थी, कहीं पे मतलब ज्यादा आ रही थी, तो उसको जो एनक्यूएम थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो फिर हमने कहा कि देन आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन इन द कमेटी, जो पूरी कमेटी बनाई थी जिसमें डॉक्टर अंकित भी थे हमारे साथ और डॉक्टर साहू थे और मनोज शुक्ला जी थे हमारे CRRE के. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई अगर मान लीजिए लोअर स्ट्रेंथ आ रही है तो आप उसमें थोड़ा बिटुमिनस थिकनेस बढ़ा दो, लेकिन उसको चेक कर लो. ऐसा ना हो कि वो इतनी लो हो कि फेल हो जाए. और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, मान लीजिए 10 एम्पा 12 एम्पा आ रही है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहां क्रैक हो जाए, तो उस केस में एक क्रैक रिलीफ ले दो. सो दोस थिंग्स वी हैव ब्रॉट आउट इन दिस गाइडलाइंस. Then durability test. This is weight of loss of material. And then construction equipment for FDR, road reclaimer is a very, very important, and road reclaimer के भी specifications clear होने चाहिए कि कितना वर्थ होना चाहिए. उसमें pulverization is also very, very important, क्योंकि अगर हमने material को pulverize नहीं किया ठीक से, तो then also it is going to create a problem. So all those aspects have been brought out in this guidelines. So as you can see that this is a combined picture. And as I have mentioned here, that the entire process can be done within 3 to 5 days. But before accepting any methodology, we should go for a trial stage. And in the trial stage, check each and everything. जहाँ पे भी doubt हो, उसको आप check करो. अगर कहीं गड़बड़ है तो दूसरा trial stage बनाओ. लेकिन trial में ही आप सारी चीजें confirm कर लो. Once you are through with the trial, then the remaining construction will go comfortably. So these are the strength and quality control tests. And then we have given a series of recommended tests as per IRC for checking the quality of cement, depth of pulverization, thickness of stabilized base, gradation, cement content mixing, moisture content density, etc., etc. Then strength of subgrade can be checked by DCP test. And for that, the necessary formulas have been provided. Cement spread kitna uniform, that is also very important.
कि ऐसा ना हो कि कहीं सीमेंट ज्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो सब दिए हुए इसमें। एंड देन मिक्सिंग चेक करने के लिए मिक्सिंग यूनिफॉर्म, क्योंकि पूरी फुल डेप्थ तक सीमेंट पहुंचना चाहिए, ऐसा ना हो कि केवल ऊपर रह जाओ नीचे की लेयर में ना हो, तो उसके लिए फिनोप्थिलीन टेस्ट सजेस्ट किया है। एंड देन इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेंथ, and then acceptance criteria, as I've already told, that it should be 3 to 7, 4.5 within 7 days and 4.5 to 7 in 28 days. और अगर कहीं पे लोअर या ज्यादा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमको फिर काम करना पड़ेगा। सिमिलरली क्रैक रिलीफ लेयर, it is also very very important. Depending upon the condition you can go for crushed aggregate, जिसके लिए को आजकल कोई जाता नहीं है, नॉर्मली सामी या जियो टेक्सटाइल की लेयर देते हैं, एंड विच इज वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली। एंड देन ओपनिंग टू ट्रैफिक, उसके बाद नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि 7 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है तो गो फॉर ए बिटुमिनस लेयर, अदरवाइज क्या होगा कि देयर विल बी लॉट ऑफ इरोजन एंड अननेसेसरली डैमेज टू द pavement. So as fast as you can do, plan according to that. And this is a advisory which has been attached with the document. And what are the, if somebody wants to go with the CCS, then what are the parameters which one has to check? That has been provided in the CCS, and CCS is a part of the document. So you can, the field engineers can make a decision that whether they want to go with cement or they want to go with cement and CCS. So those steps have been provided. So with this, thank you so much for your kind attention. Thank you, Mathur Saab. In fact, it was a complete overview of IRC 142. In fact, the questions which I posed to him, he has addressed in his presentation, but I sense the mood of the house. There is bound to be a lot of questions. We'll take it at the end of the session. The next presentation, the next presentation is by Professor Ankit Gupta. He is also co-convener of S9 committee. So his presentation will be FDR quality issues and challenges. मेरी पेंट्री खराब कर दी इसने। ये देखो क्या हो गया। क्या हुआ? वो शॉर्टकट खुलता सर, वहां से आपने उठा ली होगी ना। ये आ गया। क्या खुले खुले ट्रैक हुई? कौन सा? फोल्डर 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 लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ये सब लक्ष्मी तो है, खुली ना, कॉपी का ना रह गया। वायरस आ गया। हाँ वायरस आ गया। कुछ लगा ही निकल गया। मैं तो लैपटॉप लगा दूँ। लैपटॉप है? दो विटनेस लैपटॉप। It will be better if participants can write down the questions in sheets. I think from IRC it is available sheets, the questions, so that we can take maximum number of questions that way. नडल कनेक्ट कर दी।
देखिए तो इसमें कुछ काम करेगा सो वो है नीचे दोनों बताएंगे दोनों काम कर इसको स्लाइड में मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है जाओ आप चेंज करो जाके जाओ छोड़ो छोड़ो चेंज करो ऐसे ही हो जाएगा Good evening, everyone. Chairman sir and all the fellow presenters and co-chairman sir, UPRRDA, IRC and all the delegates present here. So I'll be discussing something about the hot topic FDR. On the technical front, looking at the codes, as a researcher, what are the questions which is arising from the code? Some of the answers we are getting from the code. Some of the answers we are not getting from the code. I am looking in a both perspective because right now I am representing IRC H9 committee also. So obviously we also need to understand that codes are also being limited because codes are being made by us only. Okay, so whatever the limited knowledge all the members are having, we try to put them in the best way and come up with a code. And obviously the codes are always subjected to a revision. Whenever there is some good knowledge, some more updation knowledges are there, we can always revise the code. So with this idea, again, whatever the available knowledge which we are having in terms of the code, some of the questions I am arising, and obviously I am also a part of answering the same questions also, which we are also trying, but it should not be taken in that way that it is a question on any one of us. But probably in a better idea, we just want to move forward. Okay. So again, I'm not going the customary slides of the FDR, that what is an FDR. Probably I have just updated these slides from my presentation, which I presented in the IRC annual session in Gandhinagar. At the same time also, the similar slide was there that we have constructed close to 6,000 kilometers in UP and many in other states also. Very promising technology. That's why it has been implemented and that's why we are discussing also, because it has some promise. Okay. It has been recently seen that there's a one guideline came into the practice, that is IRC 142, okay, which talks about the FDR with the OPC. We have few documents available with us, starting from the IRC SP 89 part 1, then the SP 89 part 2, something about IRC 37 because that is the mother document of the flexible payments. We have some guidelines being issued in the international conference by the NRIDA, that is the guidelines for the FDR. That has been converted into in a better way as a IRC 142. And in the meantime, one document which helped us a lot was the Iowa-based document, which was the FDR in the US. So these were some of the documents which has been really helpful and which are still paving the way for the way forward. But still there are some questions which we'll be discussing. Okay. So we had some questions because this was the question. Earlier, these were the issues. Now I have a clarity in these issues. That the design UCS. Okay, so I'm using the word specifically design. So this is the design UCS for which we have to target or which we have to design our mix in the laboratory. Okay. Now when we are designing for any value in the field, we need to target that design in the lab. Okay, and when I'm targeting that design, there are three factors which has been given three different values in the three different codes. Okay, the strength of 4.5 MPa UCS I have to achieve in the CTB layer in the IRC 37 also. I have to achieve this 4.5 MPa UCS as a base layer from the IRC SP 89 also.
and the same design value of 4.5 UCS I have to achieve as a base layer through IRC 142 also. The three different factors which is given in the three different codes are 1.5, 1.1, 1.25. Okay, so again that makes the question that designing a same UCS value of 4.5, why I needed three different factors. And specifically when I'm talking about a CTB, which is a very controlled kind of a mix, because I'm using a plant, I'm using a perfect gradation, I'm having a very good quality control over the cement and everything, I am making a factor of 1.5, means 50% higher target in the lab. As compared to something which I'm doing in a FDR, I don't know what is there in the beneath of my layer. I had some pits and have tried to identify that what is my thickness layers. But that factor of safety has been reduced to almost like 1.1 or 1.25 as compared to 1.5. And how this 1.25 or 1.1 or 1.5 is arriving, that's also a question which at least the scientific community needs to be addressed. Steps for mixed design, they have very clearly identified in the IRC 142 that what should be the steps for the mixed designing of the FDR or the base layer. The target design should be the lower one, so that is also they have clarification. Core to cube conversion factors, that was something because there was some misnomer because IS 516 we are also using, which is a core to cube conversion factors like 1.25, and specifically I'm including the H by D ratio also, because H by D ratio is taken from IS 516 for the cement or for the rigid layers, and then IRC SP 89 part 2 was also giving some kind of a core to cube conversion factors. Okay, so but now IRC 142 has adopted the values which is from the IRC SP 89. So that has some clarity. Subgrade is very clearly mentioned that it has not to be disturbed. Okay, they have again given the UCS values, the design UCS or the target UCS which we are achieving in the lab within the 7 days in the range of 3 to 5. And 28 days it is 4.5 to 7. So there are some practical good things which has been clarity has been given. Now still I have certain issues. Heterogeneity is something which is very much will face in the FDR mixes, because what is there in the beneath of the layers, it is lot of heterogeneity because there's a lot of history about that layers. Sometimes a G1, G2 kind of a layers were also being laid for the construction of the low volume roads. So again, we have seen a lot of large size aggregates coming. So the code mentions that practically we have to remove the large size aggregates. But is it really a practical thing? At least with my limited experience, it is totally impractical. And if it is there, it is making some of the effects on performance. Okay, either sometimes your core is not coming, either sometimes your core is giving some very high or low values. So there is something which is there with the high or the bigger size aggregates. How to deal with it, it is still a big question, at least for me. Use of additional aggregate and soil. So this code clearly mentions that you have to use some additional material. So this is the additional available material. At least to me, it is not clear that what is this additional available material. Is it as aggregate? We call it as a fine aggregate or coarse aggregate. It is a soil. Is it a sand? What it should be? Or it can be anything which just satisfy my gradation. Because this additional available material should have some kind of a clarity, because someone is putting some additional material. How an engineer in charge will check that whether this additional material is okay or not? Or only it has to come into the gradation band. If it has to come into the gradation band, I can add each and everything, like whatever I eat also. Okay, so again, that is something, some kind of a clarity from our side. I am being from the IRC side also, we should have. Okay, the PI value for a base should be less than 20. So 20 PI values is something going on a very higher side of a PI. Okay, we have worked with almost like a PI value less than 10. 10 to 15, 15 to 20 is sometimes very challenging, but only with the cement with the PI values close to 20, it is almost impractical. I have done a lot of tests in my lab, at least with the PI values close to 20, only cement is sometimes not working well. Okay, again, sir has mentioned about this less than 5 MSA kind of a traffic. I have just highlighted that the bottom line says that we should not disturb our subgrade, and at least 100 mm of the granular layer has to be left if we want to do the FDR as per the IRC 142. So this is a very good idea, technically and frankly speaking,
but then it has to be implemented that at least 100 mm of the granule material should not be touched just for means having more and more granule materials from the existing layer. So this is a good idea, but again, then because whatever the experience we have in UP, we have probably not left any kind of a granule material. Probably in some of the cases where we have got a good depth of a granule material, we have left. But most of the cases, because the granule material was limited and it is an upgradation kind of a road, so most of the times we have taken this granule layer also. So again, that can be again very needs to be clarified. Okay. Then these are the quality tests already been mentioned. Okay, but as I mentioned in the UCS test, if the core to cube conversion factors is as per the IRC SP89, the IS 516 can be slightly omitted because then it can give a misnomer that which of the core to height to H by D ratio factor to be taken from IRC SP89 or IS 516. Because sometimes this can give some values changes because IS 55, if you will use IS 516, probably you will get some kind of a lower values of the UCS. And if you use the IRC SP89, you will get somewhat higher values of the UCS of the cube when you convert it from the core. Okay, so sometimes it can have advantages, like if you are getting a lower value, then IRC SP89 conversion factors can give you advantage and it will give you a higher value. But if you are using this for a higher value, because in the UP we have seen that we are getting values close to 8, 9 MPa also. So in that case, if you use the IRC SP89, it will again give you more higher value. Okay, so sometimes it has both advantages and the disadvantages. So one thing can be of a good thing. Now I have to talk something about the quality. So the first question as a researcher comes to us is, what is the meaning of equality? Are satisfying the values which has been given in the code is just the quality? Or something which is performing good, but even if it is not satisfying the values, it is also a quality. So somewhere we have to deliberate, because some of these values are coming from the experiences. It's not having its scientific or the technical database. Like for example, 4.5. Why there is a need of a 4.5 minimum design value for the UCS? In the US, there is so much of literature which talks about 3 to 4 MPa. If we just reduce this 4.5 to probably 3.5, that 1 MPa reduction can cost again a lot of saving in the use of whatever the cement and the other materials. So again, we can reduce the cost because the kind of the loading which we are experiencing on the low volume roads is not even of that level also. Because the 4.5 design MPa we are using in the IRC 37 for the high volume roads. So again, these values which appears to be quality conscious values sometimes may or may not give you a very clear picture of a quality. Now, what are some of the quality issues when we are talking with the field people are having? So sometimes they say, sir, core is not coming. Is this a quality issue? To my perspective, yes, it is a quality issue. Okay, so for me, I always focus that how many number of times the cores are attempted. That should also be a one important number. And out of the 10 times, if you are going only for a 5 times the cores are coming, it means 5 times the core is not coming because of the strength reason. Because if something we are cutting and something is not coming out, so then there is something a loss in the weight. You just do the coring for the PQC, you will get every time the core of a PQC. You do the coring of your asphalt mixes, you every time will get a core of asphalt mixes. So why it only happens with the base value that we are doing the coring and half of the times we are not getting the core? In case if you are getting more than 80 or 90% times the core, then perfectly okay. But if it is not coming, the number of cores to be attempted is also something which I feel should be counted. And if the core is coming, it should be of a full depth core, because we have seen that the height of the FDR can go up to 300 mm in a one go. Okay, so if the depth of a core, if we are getting less than 200 something, is it also something indicating towards the quality? Even in the 200 MPa or 200 mm, you are getting a good UCS value, but you are not getting a full depth of a core. Is it also a kind of a reflection of a quality? Sometimes I feel yes. Density gradient. Even in the core, we have done some slicing, like the top part density, bottom mid part density, and the bottom part density. And we have seen there is a lot of variation in that density. Is it a kind of indication towards the quality?
to me, yeah, it can be an indication towards the quality, because the kind of a compaction or the density what we have to achieve for the full depth, we are not able to achieve it. Core UCS strength is again a topic which has been discussed a lot. 4.5, if I'm having a strength like 4 MPa, anyone can tell us that will my road fail in the next 15 years? Or if it is just crossing 4.5, then it will be there for the 15 years. Because these values have been derived from our sister code IRC 130, IRC 37. And those values have been used for the highways. So again, there can be some more deliberation. We have done some kind of practices. We have done some kind of a construction, and let us appreciate those part. Okay, so it's not to question the jo ho chuka hai. Okay, but again, for some of the trial stretches, let us have some lower value. Why I am advocating towards a lower value? Because it is a cost saving kind of a thing. We are doing it for a low volume roads. So let us save more. Why there is a need of something like a 4.5 UCS? Okay. The durability procedure, it has been listed in the IRC SP 89. Will it behave same with the every type of a soil, and will it be same with when we are adding the CCS to it? Okay, because that durability procedure which has been adopted in the IRC SP 89 talks about CCS also. Then IRC 142 is without CCS. Then is there any change in the durability which we can expect or not? Okay, so because there are many companies who are claiming that adding their additives can improve the durability. If yes, then it should be more stringent parameters for them. So again, that is something which can be discussed. Residual strength, I have struggled a lot. I am doing a lot of residual testing, and then my residual values are coming more than 100% of the UCS, 28 days UCS. And to me, it looks like obvious because I'm doing a lot of accelerated curing, accelerated hydration. So there is a lot of gain in the strength. I have seen the gain in the strength as close to 150% also. So whether this is good, bad, acceptable, not acceptable, it is sometimes very challenging topic to be discussed more probably in a scientific community. But I personally feel that it can go beyond 100% of a UCS up to 140, even up to 150% also. Flexural test has been discussed. I think flexural test is not a quality control test. Okay, it should be avoided to use the flexural test as a quality control test. Okay, it is a design test, but probably we are not discussing a lot of pavement design in the IRC 142. Okay, we are just adopting the plates or the thicknesses which has already been given in the IRC SP 72. Okay, so IRC SP 72 gives us a brief idea about a pavement design, and we are directly using those thicknesses. So again, flexural test actually do not hold a lot of value during the IRC 142. Now, this is something interesting that we have seen a lot of cracks in the FDR, and that is obvious because of some cement which is there in the base layer. Now, when we can say that these cracks are reflecting quality, either none of these cracks are reflecting quality, or if the cracks are reflecting quality, then what are those type of cracks? Are these longitudinal cracks which is affecting the quality? Are these transverse crack which is affecting the quality? And because we have seen a lot of cores which is having a cracks up to a half of the depth, but when we have done the UCS, it is giving a perfect UCS value also. So there's a lot of understanding which at least I need to develop about the cracking mechanism, because we have seen that the cracks is an integral part. But are these a structural cracks, or it is just an integral part of the because of the cement? But normally, as I understand, if the cement is there, there can be some transverse cracking like we do in the PQC, and we basically do the joints so that the energy can be released from those cracks, those joints. So there will be, because we are not creating any kind of a joint, so there will be some kind of a transverse cracks at a certain distances. So we can understand, okay, transverse cracks can be generated. But if it is a longitudinal cracks continuous going up to a length of the roads, then we need to see that whether it is really having some kind of issue with the quality of the FDR or not. Another thing which I have personally seen is that after doing the FDR, some of the contractors, for some issues, they are not doing the BC layers, BC work. Okay, so there should be some at least minimum guideline that at least they have to do the BC works just after 4 months or 3 months of laying the FDR basis. Because I have personally seen that if the FDR layer is there and almost for the 8, 9, 10 months, the BC has not been done.
There is a lot of degradation of the FDR layer. The people are suffering with a lot of dust and the every kind of things. So there should be some guidelines from our side. Quality of SAMI or AIL, it is still not being discussed. Again, because the SAMI has been talked about a lot, but the quality aspects of a SAMI, still we are relying on the manufacturer. Hopefully they are doing it in a better way. On the whole FDR thing, the quality of a bituminous work is not being discussed much. Okay, I have personally seen some of the BC work, because specifically in the UP, we are investing a lot by having a 30 mm BC over the FDR works. Okay, so quality of the BC works can also be discussed, because I have personally seen the quality of a BC was not okay as per the requirement of a BC. They are performing good because there's a traffic is very less. But as per the requirement of the GMM, they are not able to find out correctly. The densities are not there. The density as per their GMM is okay. But when we done the GMM, then the densities were not okay. So there are again something more kind of a technical encouragement or knowledge sharing can be there to have a better BC works. Some quality issues and challenges is that heterogeneity is there. Okay, so how to address this heterogeneity? We have taken. Yeah. 1.5 minutes. Yeah. I'll be concluding, sir. I do not have much slides. So heterogeneity, how to, because the question of a mixed design has been discussed. Who will take a call that on a one project, I have to do a multiple number of a mixed design or a single mixed design? I have seen a length of a project, okay, where there is a lot of change in the values of the depth of the existing layer. But when I ask a question that can you give me the number of mixed design I have to do, I do not get an answer. When I decide that there will be a 5 MIG design, then obviously there will be some charges. So then, no, do it in a 1 MIG design. So that is a bigger problem. If you will take whole road as a 1 MIG design, then, and if the road has a lot of heterogeneity in terms of their material, it can have a lot of issues with the quality also. So number of MIG design in a project, if more than 2-3 MIG design, then it's a practical problem also how you will execute in a 1-5 kilometer road at 2-3 MIG designs. Values needs to be reworked. Okay, so again, the values, wherever I'm discussing 4.57, all these things. Evaluation period. Now this evaluation period is interesting. We are doing some evaluations of the FDR part, and even after a year of evaluation, we are sticking those values of 7 MPa. That if it is within the 7 MPa, it is good. And the same 7 MPa we have evaluated till 28 days also. So after 28 days, the strength should rise. Okay, so probably is the 7 MPa is the only good value, or should it be risen to more? So the evaluation period after the 28 days should have some reworked values. Okay, reflective cracking is something which has not been very clear to me. That means more cement, more reflective cracking, we understand. But how damaging these reflective cracking can be, still we want to see, because there are some of the roads which is having a values of close to 8, 9, 10 MPa. But those roads are behaving well. So if they are behaving well with the existing SAMI, then why we are worried about a higher cement content? Let us give the freedom to the contractor and let them have a higher cement content. Obviously, no contractor will put a higher cement content. But evaluation methods, again, there are destructive evaluation methods, but it is a very cumbersome. Can we have some quick kind of NDT methods? Variability in the field obtained, because there's a lot of statistics methods are available. How we can address this variability, like 4.5 MPa. It should be a core value, 3 core values, 5 core values. How much core values can give me an average of this 5? Again, this is one thing. It's not only totally about the cement-based CCS I want to address. Probably all the CCS base also I want to address. Again, if they want something to come up in their favor, probably they need to work out on these parts also. Why and how to you choose CCS is still a question for an engineer, for me like this, because I have 40 CCS in the market. So again, they should basically help us to find out, devise a methodology. QC test on CCS, I think Sudhir sir has already discussed. Role of CCS and additives should be clarified. In the CTB, are we adding CCS? No. So why in this material we are adding the CCS? Again, that clarity or scientific idea should come out. Needed for all soil types, means is the CCS needed for every soil type, or is it only needed for a high PI or medium to high PI, etc.? Needed after minimum what percentage of a soil? If I'm adding a 20% of soil, then only I need a CCS, or I need when I'm adding 50% of a soil, then I need a CCS. So again, these are some of the questions.
dosage of CCS additives they are telling us. Curing period reduction, are they reducing any curing period? So can we open it for a traffic earlier? Comparison of various CCS additives, this should be done on us on the basis of a cost and the performance. Okay. Again, this is the fatigue equation they need to develop as per the IRC SP 89. There are a lot many challenges also. Whatever we have done means the IRC UPRRDA in the limited time is a very commendable thing. Okay, so there is a lot of more opportunity which we can do. Probably as a last line, I just want to say, believe me, FDR is a really wonderful technology. To me personally also, technically also, scientifically also. Okay, and they are really working well. Okay. But even without the focus specification, UPRRDA has done a 6,000 kilometers of a road, and I really deserve them an appreciation. Okay, but the CCS, if they are adding to it, okay, they also need to come up with a strong study with and without, so that we should be very clear that whether the CCS needs to be added or not. I believe those all are wonderful products, but again, their needs in terms of a cost, in terms of a life cycle cost, needs to be justified. Thank you. Thank you very much, Professor Ankit Gupta. It was a very wonderful presentation and with a completely different flavor. I think instead of giving his sermons, his knowledge, he has posed more questions. And being co-convener of S9 committee, I wish during his tenure he will try to search for the answers to those questions. So we'll be discussing more during the next question hour session. Now the next presentation is by Sri Binod Kumar. He is also member of S9 committee, and he will be giving his presentation on soil and granular material stabilization using cement, lime and fly ash as per IRC SP 89. Respected chair, co-chair and delegates, good evening. ये जो सारे इश्यूज हैं एफडीआर के, सीटीबी के, सीमेंट का, लाइम का, फ्लाई एश का क्या रोल है, सीसीएस का क्या रोल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सीसीएस कैसे एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह का ड्राइंग श्रिंकेज के टेस्ट से क्या क्या ड्यूरेबिलिटी का टेस्टिंग होता है, ये सारी चीजें आई विल ट्राई टू कवर अप इन माय प्रेजेंटेशन. देखिए, आप कोई भी रोड डिजाइन करें ना करें, कोई सा भी कोड यूज करें ना करें, पेमेंट इंजीनियरिंग कभी नहीं बदलती, वो वही रहती है. और पेमेंट इंजीनियरिंग क्या कहती है? हम रोड इसलिए बनाते हैं कि जो भी लोड रोड के ऊपर आए अल्टीमेटली वो ट्रांसफर हो जाए फाउंडेशन को, जो सब ग्रेड होता है. और इस फाउंडेशन को जब सब ग्रेड में लोड ट्रांसफर होता है तो पेमेंट की कोई भी लेयर इंक्लूडिंग फाउंडेशन फेल नहीं होनी चाहिए. और फेल कैसे होंगी? ड्यूरिंग लोड ट्रांसफर किसी लेयर में कंप्रेशन आएगा, किसी में बेंडिंग आएगा, किसी में शियर आएगा, कुछ भी आएगा, लोड ट्रांसफर में कोई भी लेयर फेल नहीं होनी चाहिए, आप डिजाइन करें या ना करें. अब जब लोड सारा का सारा अल्टीमेटली फाउंडेशन को जाता है तो फाउंडेशन में कंप्रेशन ज्यादा रहता है, सबग्रेड के फेल्योर कंप्रेशन में चांसेस रहते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट में रटिंग होगा. स्टेबलाइजेशन की टेक्निक क्या करती है? स्टेबलाइजेशन मार्जिनल मटेरियल्स को, लोकल मटेरियल्स को, वीक मटेरियल्स को, नॉट सो गुड मटेरियल्स को, इवन गुड मटेरियल्स को भी स्टेबलाइज करता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सबग्रेड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ताकि वो प्रेशर झेलने के लायक हो जाए, कंप्रेशन उनके ऊपर आए तो फेल ना हो, बेंडिंग में स्ट्रॉन्ग बन जाए. यही सारे स्टेबलाइजेशन का काम है. आज हम लाइम, फ्लाई एश और सीमेंट तीनों के स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे. सबसे पहले इस चीज को समझिए, ये लोड ट्रांसफर है. चूंकि सारा का सारा लोड अल्टीमेटली किसको जाना है? रोड को ही जाना है, फाउंडेशन को जाना है. फाउंडेशन फेलियर नहीं होना चाहिए, इसलिए रिजिड पेमेंट की अगर हम बात करें, पूरा लोड एक स्लैब के एरिया को ट्रांसफर होता है, बहुत ज्यादा एरिया को ट्रांसफर रहता है, तो फाउंडेशन पर हमेशा प्रेशर बहुत कम रहता है. इसलिए कभी भी रिजिड पेमेंट के नीचे की फाउंडेशन, सीबीआर चाहे जो भी हो, कभी सबग्रेड फेलियर नहीं होता. रटिंग जैसी प्रॉब्लम कभी भी रिजिड पेमेंट में नहीं आती, क्योंकि प्रेशर इतना कम आता है रिजिड पेमेंट के नीचे के फाउंडेशन पर, सबग्रेड पर, कि फेलियर का कोई चांस नहीं. अगर आप देखें एक्सट्रीम वाले फोटोग्राफ को, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट का है. व्हील पाथ में बड़ा एक्सेसिव प्रेशर रहता है, ऑयल की सीबीआर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी रटिंग फेलियर हो जाता है, सबग्रेड फेलियर हो जाता है. स्टेबलाइजेशन पेमेंट के बीच में आते हैं. वो ना रिजिड जैसे लोड स्प्रेड ज्यादा करते और ना ही नैरो लोड ट्रांसफर पे फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जैसे होता है.
स्टैंड बीच में करते हैं। स्टेबलाइज लेयर चाहे वो एफडीआर की हो चाहे वो सीटीबी की हो, लोड स्प्रेड को बढ़ा देती है और लोड स्प्रेड बढ़ाने से नीचे वाले लेयर में प्रेशर कम जाता है। कंप्रेसिव प्रेशर से जो फेलियर होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो एफडीआर या सीटीबी न केवल सबग्रेड को स्ट्रेंथ देता है बल्कि उसके ऊपर की जो बिटुमिनस लेयर है, जैसे डीबीएम में बेंडिंग होता है, टेंसाइल की वजह से फटीग क्रैकिंग होता है, उसको भी सपोर्ट करके उनकी भी फेलियर को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। अब यही स्टेबलाइजेशन है कि हमें कैसे अपनी लेयर को स्टेबल करना है और स्ट्रेंथ देनी है। अब दो वर्ड है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। सारे लेयर स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए। स्टेबल का मतलब है ऐसा बिहेवियर जो मौसम के मिजाज के साथ बदल जाता हो। पानी आया तो स्वेल कर गई और सूखी तो श्रिंक कर गई। ये बिहेवियर जिन मटेरियल्स का होता है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल हो, क्ले सॉइल हो, ये स्टेबल बिहेवियर नहीं माना जाता। तो स्टेबलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कैसे अनस्टेबल मटेरियल को स्टेबल किया जाए। उसके लिए ब्लैक कॉटन सॉइल या क्ले सॉइल में हम लाइम का यूज करते हैं। लाइम क्या करता है? लाइम ब्लैक कॉटन सॉइल को स्टेबलाइज कर देता है। कैसे स्टेबलाइज करेगा? अगर आप लाइम का क्ले का अगर आप माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ देखें तो क्ले में सिलिका की और एल्यूमिना की शीट्स होती हैं और शीट्स के बीच में जो स्पेस होता है, अगर पानी आएगा उनमें भरेगा तो स्वेल कर जाते हैं। तो किसी तरह से जो शीट्स के बीच का जो एल्यूमिना और सिलिका के शीट्स का बीच का स्पेस अगर आप कम कर दें तो स्टेबलाइज हो जाता है। अच्छा, स्पेस क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बड़े ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस दोनों सीट्स के बीच में होते हैं। अगर आप इन दोनों सारी सीट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ा देते हैं तो स्पेस कम हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए की खत्म हो जाती है। तो लाइम यही करता है, लाइम कैटायन चेंज करता है। लाइम का अगर आप एक्शन देखें तो 3 तरह से होता है। पहला हाइड्रेशन और कैटायन चेंज। लाइम का हाइड्रेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। कैल्शियम आयन के ऊपर 2 कोवेलेंट का डबल चार्जेस होता है। तो क्ले में मोनोवेलेंट होता है। जब मोनोवेलेंट आयंस को कोवेलेंट डबल वैलेंट का जो कैल्शियम आयन रिप्लेस कर देता है तो शीट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो क्लोज आ जाती है, डीडीएल की थिकनेस कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाती है और जो उसका बिहेवियर है जो स्वेलिंग श्रिंकेज वाला वो एलिमिनेट हो जाता है। तो पहला प्रोसेस जो लाइम के साथ होता है वो हाइड्रेशन एंड कैटायन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आता है फ्लोकुलेशन। कैल्शियम पॉजिटिव आयंस है, क्ले के पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, सारे के सारे लाइम के ऊपर चिपक जाते हैं, फ्लोकुलेशन इसको कहते हैं। इससे भी आपकी सोइल का स्टेबलाइजेशन का बिहेवियर आ जाता है और वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पोज़ोलैनिक रिएक्शन। अगर क्ले के अंदर सिलिका है तो लाइम होता है, लाइम सिलिका से रिएक्ट करके वही जैसे सीमेंट के हाइड्रेशन में रिएक्शन में कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनती है, वही जेल फॉर्मेशन हो जाता है क्ले के साथ जब आपका लाइम रिएक्ट करता है। तो अगर लाइम को सिर्फ आपको मॉडिफिकेशन करना है, मतलब बिहेवियर चेंज करना है, स्वेलिंग और श्रिंकेज बिहेवियर को चेंज करना है तो कम लाइम डालना पड़ता है, उसको लाइम फिक्सेशन लिमिट बोलते हैं। जो उतना लाइम जो उसके बिहेवियर को स्वेलिंग बिहेवियर को चेंज कर दे तो ये 1 से 3% का आता है। अगर आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए और आपकी क्ले के अंदर सिलिका है तो कुछ एक्स्ट्रा लाइम चाहिएगा ताकि लाइम और सिलिका मिलकर के ऐसे जेल बना सके, वो उसको स्ट्रेंथ भी दे सके। तो आपको ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइजेशन का क्या, सिर्फ अगर स्वेलिंग श्रिंकेज बिहेवियर को ब्लैक कॉटन सॉइल को रिमूव करना है तो 103% लाइम भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर स्वेलिंग और श्रिंकेज बिहेवियर को चेंज करने के साथ साथ स्ट्रेंथ भी चाहिए तो आपको ओसीएसएच जेल की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, उसमें आपको एक्स्ट्रा लाइम जाना पड़ेगा, 4 से 6 या 7% का लाइम यूज कर सकते हैं। तो ये लाइम का मोड ऑफ एक्शन है कि वो कैसे स्वेलिंग श्रिंकेज बिहेवियर को दूर कर देता है और कैसे उसकी स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव कर देता है। लाइम फ्लाई एश में क्या होता है? लाइम में और फ्लाई एश में सिलिका है, लाइम में लाइम में कैल्शियम आयन होता है। तो लाइम और फ्लाई एश वही कैल्शियम और सिलिका की रिएक्शन करके सीधे जेल फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर लाइम के साथ सिलिका लाइम के साथ अगर फ्लाई एश यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ भी उसमें इंप्रूवमेंट होती है। अदरवाइज फ्लाई एश को अगर आप अकेले यूज करेंगे तो ग्रेडेशन चेंज हो सकता है। किसी मटेरियल में आपका कोर्सर मटेरियल है, फाइन मटेरियल नहीं है तो उसमें आप फ्लाई एश डाल दीजिए, फाइनर की वो कंपनसेट कर देगा। तो अगर मॉडिफिकेशंस के लिए फ्लाई एश यूज करना है तो वो अकेले भी काम कर जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के लिए अगर आपको चाहिए तो लाइम के साथ उसका जरूर चाहिए या सीमेंट के साथ उसको जरूर यूज करना, ताकि वो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की और कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट की जेल बन करके जो स्ट्रेंथ देने का काम करते वो उसमें हो जाए। अब आते हैं सीमेंट का। ये बड़ा हॉट टॉपिक है आज के इस सेमिनार का। सीमेंट का स्टेबलाइजेशन, ये तो हर सॉइल को सीमेंट स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ती है तो क्लोड फॉर्मेशन, वो थक्के वो बन जाते हैं ना, ढेले बन जाते हैं जैसे क्ले मिट्टी में, उनको तोड़ पाना, उनको पल्वराइज करना और ढंग से अगर सीमेंट की मिक्सिंग नहीं होती तो वो उस ढंग से वो स्टेबलाइजेशन का काम नहीं हो पाता। तो हाईली जो
प्लास्टिक सॉयल्स हैं, हाईली क्लेई सॉयल्स हैं, उनमें अकेला सीमेंट काम नहीं करता, या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट सीमेंट की डालनी पड़ेगी, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हाईली क्ले, अब कोर्ट तो कहते हैं कि 20 से ज्यादा अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो आप डबल उसमें जाइए, लाइम भी यूज करिए, पहले लाइम से उसको स्टेबलाइज करिए, उसका जो अनस्टेबल बिहेवियर है उसको दूर करिए, और फिर स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए सीमेंट यूज करिए। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर 10 से ज्यादा की पीआई अगर हो जाए तो फिर आपको उसका स्टेबलाइजेशन का लाइम के साथ भी पहले करना चाहिए और उसके बाद फिर सीमेंट का, तो डबल स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं लाइम और सीमेंट से। अब कॉमर्शियल केमिकल एडिटिव्स का यूज सीमेंट स्टेबलाइजेशन में कैसे हो? देखिए, सीमेंट स्टेबलाइजेशन का काम दुनिया में 1925 के अराउंड शुरू हुआ, और पहला जो डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर मिलता है वो 1935 में मिलता है, और 1950 में सीमेंट के अंदर एडिटिव्स डाले जाएं, कौन से एडिटिव्स डाले जाएं, उनका रोल क्या है, ये 1950 में ये रिसर्च शुरू हो चुकी थी, जब MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज में दो रिसर्चर थे, बड़े रिनोन्ड रिसर्चर रहे जो टेक्निकल में, डॉक्टर मोए और डॉक्टर लांबे। उन्होंने रिसर्च शुरू की कि 1950s की बात है ये, कि सीमेंट में क्या एडिटिव यूज किए जाएं, और उन्होंने एक दो नहीं पूरे 29 एडिटिव्स को रिसर्च किया, पूरे 29 एडिटिव की स्टडी की, और बहुत सारे एडिटिव से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन 1950s में कंसर्न क्या था? इकोनॉमी का था, क्योंकि इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन में स्टेबलाइजेशन का होता है, इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल का एग्रीगेट्स का हो जाता है जिसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो अगर सीमेंट बड़ा कॉस्टली है, आज भी कॉस्टली है, तो अगर आप थोड़ा सा भी परसेंटेज, 1% या आधा परसेंट या 1.5% भी अगर आप सेविंग सीमेंट की कर पाते हैं तो इसका इकोनॉमिक उसका इफेक्ट था। तो 1950s में इकोनॉमी एक कंसर्न था कि कैसे हम अपने सीमेंट स्टेबलाइजेशन में एडिटिव्स का यूज करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। अब अगर IRC SP 89 की बात करें तो इन कॉमर्शियल स्टेबलाइजर्स को, जिनमें सीमेंट के साथ एडिटिव भी है या कुछ स्टैंड अलोन, जिनको सीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो स्टैंड अलोन स्टेबलाइजर्स हैं, उनको इन 6, 7, 8 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। इनको आप कोड में तो देख सकते हैं, लेकिन फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन के आधार पर सारे के सारे एडिटिव्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले सीमेंट की हाइड्रेशन रिएक्शन को समझिए कि सीमेंट करता क्या है। अगर आप सीमेंट की हाइड्रेशन की रिएक्शन को देखें तो कैल्शियम CS, कैल्शियम और सिलिका सीमेंट है, वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन भी बनाता है और CSH जेल भी बनाता है। ये CSH जेल ही मेन बाइंडिंग फोर्स है, सीमेंट अपने आप में बाइंडर नहीं होता, ये CSH जेल ही होती है, जहां पर बनेगी उसी में सारी चीजों को बाइंडिंग इफेक्ट आ जाता है। अब 3 तरह के फंक्शन है सारे के सारे जितने भी केमिकल एडिटिव्स हैं। वो पहला है, या तो वो इस इक्वेशन को एक्सीलरेट करेंगे एज ए कैटलिस्ट, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे लेकिन वो एज ए कैटलिस्ट का काम करेंगे, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। जो स्ट्रेंथ आपको 28 डेज में मिलने वो आपको 10, 12, 8, 10 दिन में दे देंगे, जो आपको 14 दिन में स्ट्रेंथ मिलने वो आपको 7 दिन में स्ट्रेंथ दे देंगे। तो सिर्फ कैटलिस्ट का काम करते हैं। और हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में तो एक बड़ा जाना माना एक्सीलरेटर है कैल्शियम क्लोराइड, और इस तरह के बहुत सारे और भी सॉल्ट्स हैं जो उस समय 1950s में डॉक्टर लांबे और मोह ने भी सारे के सारे टेस्ट किए थे। तो एक्सीलेटर्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को एक्सीलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं स्ट्रेंथ को। अच्छा, जब वो कैटलिस्ट का काम करते हैं तो कुछ सीमेंट के पार्टिकल जो कैटलिस्ट ना होने से अनहाइड्रेटेड रह जाते हैं, वो कैटलिस्ट होने से वो भी हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट ना केवल स्ट्रेंथ को अर्ली बना देता है, पहले इसको दे देता है, बल्कि ओवरऑल अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो पहले तरह के एडिटिव्स वो होंगे जो इस रिएक्शन को बाहर रह करके एज ए कैटलिस्ट प्रभावित करेंगे, रिएक्शन की मतलब उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। दूसरे वो सारे एडिटिव्स हैं जिनमें सिलिका होना चाहिए और लाइम होना चाहिए, तभी वो इस रिएक्शन में सेकेंडरी रिएक्शन जिसको पॉजिट्रिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि सीमेंट से जो प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, ये जब सिलिका किसी भी मटेरियल में अगर सिलिका होगा उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो एडिशनल से ऐसे जेल बना देगा, एडिशनल स्ट्रेंथ दे देगा। अब ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनमें आपको सिलिका भी मिलेगी और लाइम भी मिलेगा, जैसे राइस हस्क है, फ्लाई एश है, माइक्रो सिलिका है, नैनो सिलिका है, GGBFS है, मेटाकोलिन क्ले है, इलाइट क्ले है, बहुत सारी क्लेज आपको मिलेंगी जिनके अंदर सिलिका भी होगा, लाइम भी होगा। CCD है, LKD है, लाइम क्लीन डिस्ट, जैसे क्लीन का लाइम का जहां डस्ट होता है वहां से लाइम निकलता है चिमनी से, जैसे फ्लाइज को कैप्चर करते हैं ऐसे लाइम को कैप्चर करते हैं। ऐसे CKD सीमेंट के क्लीन डस्ट जो उसमें से भी लाइम निकलता है। तो कोई भी मटेरियल अगर सीमेंट के साथ एज एन एडिटिव यूज करना है या तो एक्सीलेटर होगा, और अगर एक्सीलेटर नहीं है तो फिर वो इस रिएक्शन को
पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर लाइम होगा या सिलिका होगा। अब फाइनेंस अलग अलग हो सकते हैं। किसी जमाने में हम फ्लाइस की बात करते थे, फिर आज वेरी फाइन और अल्ट्रा फाइन फ्लाइस की बात करते हैं। कभी स्लैग होता था, आज अल्ट्रा फाइन स्लैग भी आ गया। कभी माइक्रो सिलिका होता था, आज नैनो सिलिका भी अवेलेबल है। तो नैनो सिलिका ज्यादातर एक बहुत अच्छा एडिटिव का काम भी करता है, अक्सर लिक्विड की फॉर्म में आता है। तो नैनो सिलिका न केवल इसमें कैटलिस्ट का काम करेगा, बल्कि एडिशनल जो CSH जेल के पोर्स हैं उनको भी भर देता है, डेंसिफाई कर देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो ये सारे के सारे आपको मिलेंगे सेकंड कैटेगरी में। और बहुत सारे जो एडिटिव यूज हो रहे हैं वो बताते नहीं कि उनके अंदर क्या है, उनके मटेरियल के CCS में क्या है, लेकिन डेफिनेटली इन्हीं मटेरियल के कॉम्बिनेशंस होंगे, डिफरेंट फाइननेस का होगा। जो जितना फाइन कर देगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, उतना स्ट्रेंथ को प्रभावित कर देगा, उतना ही हायर स्ट्रेंथ दे देगा, आपको अर्ली स्ट्रेंथ दे देगा। थर्ड कैटेगरी आती है स्टैंड अलोन स्टेबलाइजर। इन्हें सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, या थोड़ा बहुत सीमेंट की जरूरत पड़ेगा। वैसे ये स्टैंड अलोन है, अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो अपने आप खुद रिएक्शन से सारी स्ट्रेंथ देंगे। इसमें बहुत सारे जियोपॉलीमर्स आते हैं। जियोपॉलीमर्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंजाइम्स हैं जैसे टेराजाइम है, टेरासिल है, फुजीबिटोन है। ये सारे के सारे स्टैंड अलोन है, इनको सीमेंट की जरूरत नहीं करती। उनका पॉलीमर रिएक्शन अपने आप होता है और एक बाइंडर प्रोड्यूस करता है, जैसे जेल की तरह का, ऐसे जेल नहीं, इसी तरह का, मतलब बाइंडर प्रोड्यूस करता है जो सारे बाइंडिंग इफेक्ट को कर देता है। तो इन तीनों कैटेगरी में ही एज ए फंक्शन सारे के सारे एडिटिव्स को आते हैं। लेकिन आप एडिटिव्स को यूज क्या करें, कब यूज करना है, कब उनके यूज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। पहला इकोनॉमी, जो कभी 1950s में डॉक्टर लांबे ने शुरू किया था कि इकोनॉमी कैसे आए, ओवरऑल स्टेबलाइजेशन की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें। तो ये जरूरी है कि जब आप एडिटिव्स का यूज करें तो आप अपने यूजर को बताएं कि इससे ये इकोनॉमी आएगी, इतना सीमेंट कम करने से आपका सीमेंट कंजम्पशन कम हो जाएगा, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बचेगी। अगर इकोनॉमी नहीं आ सकती तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट जरूर फुलफिल होना चाहिए। दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंप्रूवमेंट इन ड्यूरेबिलिटी में इंप्रूवमेंट जरूर होना चाहिए। अब ड्यूरेबिलिटी का क्या कंसर्न है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन से ड्यूरेबिलिटी क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है ड्यूरेबिलिटी का, क्या चीज हो जाएगी अगर नॉन ड्यूरेबल हो जाएगा। देखिए सीमेंट स्टेबलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, वेटिंग और ड्राइंग साइकिल क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, किस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। वेटिंग ड्राइंग साइकिल एक बड़ा ही एग्रेसिव टेस्ट है और बड़ा एक्सीलरेटेड टेस्ट है। नॉर्मल में इतना हीटिंग और ड्राइंग इतना फास्ट नहीं होता जैसा फील्ड में जैसे टेस्ट बताते हैं। क्या होता है अगर आपने स्टेबलाइज कर दिया, सीमेंट से किया, लाइम से किया, फ्लाई से या किसी भी CCS से किया, विद एडिटिव किया, विदाउट एडिटिव किया, तो क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज इरोजन हो सकता है। अगर आपकी स्टेबलाइज लेयर में पानी बार बार आ रहा है, जा रहा है, फ्लडिंग हो रही है, टाइड्स है, इनंडेशन हो रहा है, बार बार अगर के टक्करे मार रहा है आपकी स्टेबलाइज लेयर में, अगर आपकी स्टेबलाइज लेयर वीक है, बाइंडर कम है, तो इरोजन हो जाएगा। जो फाइन मटेरियल्स उसके अंदर है वो बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे। एक चीज और भी है, बहुत सारे एडिटिव्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कैटलिस्ट का जिक्र किया, शुरुआत में तो कैटलिस्ट करके रिएक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन जब रिएक्शन सीमेंट की ओवर हो गई 28 डेज बाद, फिर क्या करेंगे, वो पड़े तो रहेंगे मटेरियल में ना, बाद में जाकर के वो घुल घुल करके वो सेकंड में आएगा डिसोल्यूशन, वो सारे के सारे मटेरियल घुल घुल करके बाहर निकल जाएंगे। और अगर स्टेबलाइजर जो एडिटिव्स आपका जो था वो अगर घुल करके बाहर निकलेगा तो अंदर पोरोसिटी आएगी, पोरोसिटी आने से आपकी जो स्ट्रेंथ, जो रेजिडुअल स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। तो आपका एडिटिव ऐसा होना चाहिए, आपका CCS ऐसा होना चाहिए कि एक तो इरोजन ना हो, पानी की बार बार के कॉन्टेक्ट से आकर के इरोजन नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर डिसोल्यूशन, मतलब पानी में घुल घुल करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट सारे के सारे जब ड्राइंग सिंकेज आप टेस्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे उसमें पकड़ में आ जाते हैं कि घुल घुल करके बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो ड्राइंग सिंकेज और सीमेंट के स्टेबलाइजेशन में आती है वो है क्रैकिंग। अब FDR लेयर हो चाहे CTB लेयर हो, 3 तरह का क्रैकिंग होगा उसके अंदर। एक क्रैकिंग का तो संबंध है फैटिग से, है जो डिजाइन का पार्ट है, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप FDR एक बेस लेयर है चाहे वो CTB की तरह से, तो आप जब उसको डिजाइन करते हैं RC37 से, तो सारी उसकी टेंसाइल, बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी फैटिग स्ट्रेंथ भी देखते हैं ताकि उसके कोई भी अंदर फेलियर नहीं होना चाहिए। तो वो पार्ट आज हमारे मेरी प्रेजेंटेशन का नहीं है, लेकिन एज सीमेंट को एज ए स्टेबलाइजर यूज करके जब आप स्टेबलाइज करते हैं तो सबसे पहला चीज आती है ड्राइंग श्रिंकेज क्रैकिंग। जब आप बार बार सीमेंट को वेट करेंगे और ड्राई करेंगे तो श्रिंकेज क्रैकिंग, ये श्रिंकेज क्रैकिंग सरफेस से शुरू होता है, ये अंदर से शुरुआत नहीं होगी,
बाहर से सरफेस से शुरुआती श्रिंकेज क्रैकिंग की होगी। बार बार की साइकिल में या बार बार के रेनी सीजन आने से, सूखने से श्रिंकेज क्रैकिंग बढ़ता जाता है, और जब श्रिंकेज क्रैकिंग डेवलप होगा तो क्रैक लाइन में मटेरियल वीक पड़ता है और उधर से पानी भी आ रहा तो सारा वीक मटेरियल निकलने लगता है, जिसको आप वो रबिंग करके जो ड्राइंग श्रिंकेज में जो सिमुलेट किया जाता है वो वही एक्शन है कि पहले श्रिंकेज क्रैकिंग होगा, क्रैक लाइन पर मटेरियल वीक पड़ेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हुआ श्रिंकेज क्रैकिंग का। अब अगर आपके मटेरियल में, आपके स्टेबलाइज मटेरियल में क्ले भी है, अगर क्ले अंदर होगा तो वॉल्यूम चेंज भी होगा, एक्सपेंड करेगी क्ले की, जब आप उसको हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, पानी अंदर है ही। तो हीटिंग और ड्राइंग साइकिल में आपका क्ले मटेरियल पकड़ा जाता है, आपको एफडीआर की अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, और जब अंदर स्वेलिंग होगी तो अंदर इंटरनल माइक्रो क्रैकिंग होती है, आपकी स्ट्रेंथ डाउन चली जाती है, आपकी रेजिडुअल स्ट्रेंथ कम चली जाएगी। अभी सर बता रहे थे, गुप्ता सर के हमने तो हमेशा स्ट्रेंथ ज्यादा जाती है, बिल्कुल ज्यादा जाती है। अगर सीमेंट है या वो प्रोडक्ट्स हैं जो स्वेलिंग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली बार बार की हीटिंग साइकिल से, सीमेंट है हाई टेम्परेचर पर आप उसको लेके जाएंगे, मॉइस्चर है तो फास्टर रिएक्शन हो जाता है, जो पार्टिकल सीमेंट के रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रेट नहीं करते, वो भी हाइड्रेट हो जाएंगे। तो बहुत संभव है कि आपकी जो रेजिडुअल स्ट्रेंथ जा रही है वो ज्यादा निकल जाए, लेकिन ज्यादा तभी होगा जब अंदर की कोई ऐसा डिटीरियोरेटिंग मटेरियल इसमें नहीं है। अब ये भी इश्यू भी था कि हम सॉइल को यूज क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मेरा व्यू है, लेकिन अगर उस सॉइल में ये कैसे आप करेंगे कि वो उसके अंदर क्ले पार्टिकल्स नहीं होंगे। आपका 75 माइक्रोन से ज्यादा फ्रैक्शन अगर ज्यादा बढ़ गया और उसकी पीआई बढ़ गई तो सारे के सारे मटेरियल अंदर जाकर के ड्राइंग साइकिल में क्या करेंगे, सॉइल करेंगे, और आपको इंटरनल वीक करके आपके सॉइल की स्ट्रेंथ को भी वीक कर देंगे। तो ये सारी चीजें देखनी है कि स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, ड्राइंग श्रिंकेज भी कम होना है। अच्छा, अब ये बात आती है कि स्टेबलाइजर क्या करता है। आप देखिए, आप डिजाइन कराएं या ना कराएं, एक चीज तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आपका लोडिंग बढ़ेगा तो आपकी लेयर पर प्रेशर भी बढ़ेगा, बेंडिंग भी बढ़ेगा। आपकी लेयर एफडीआर की या सीटीबी की ऐसी होनी चाहिए कि उस लोडिंग के रिपीटेड एप्लीकेशन में उसका बेंडिंग फेलियर भी नहीं होना चाहिए। तो डिजाइन स्ट्रेंथ अगर डिपेंड करते हैं कि एफडीआर को कितनी स्ट्रेंथ का आपको चाहिए, ये एक्चुअल में पता चलता है कि आपके लोडिंग क्या है, आप कितने एमएसए के लिए डिजाइन कर रहे हैं, आप कितने साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, आप कितने साल में चाहते हैं कि आपकी लेयर बेंडिंग के द्वारा फेल ना हो, यहाँ से स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। अब जैसे जैसे आपकी एमएसए की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपकी एफडीआर की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। थिकनेस तो 300 mm आपने कर दिया, 300 mm से बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ सकती है, उसका मॉडुलस बढ़ाना पड़ सकता है ताकि वो बेंडिंग में फेलियर ना हो जाए, फटीग में फेलियर ना हो जाए। तो जब आप एक लिमिट से ज्यादा अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तभी एफडीआर में क्या होगा, सीमेंट बढ़ाएंगे। सीमेंट बढ़ाने से जो ड्राइंग श्रिंकेज वाली क्रैकिंग है ये टेंडेंसी उसमें बढ़ती है। तो वहां पर अगर आप जैसे आपने 4% सीमेंट के बजाय आपकी एफडीआर की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट 7% सीमेंट से पूरी हो रही है, तो 7% में नेचुरली ड्राइंग श्रिंकेज ज्यादा होगा। अब उस 7% में अगर आप 1 या 1.5% सीमेंट भी बचा पाते हैं एडिटिव को यूज करके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका श्रिंकेज कम हो जाएगा, और स्ट्रेंथ मेंटेन अगर हो जाती है और इकोनॉमी भी साथ में है तो आपके लिए यूजफुल एडिटिव्स हो सकते हैं। तो ये, हाँ सर लास्ट मेरी है ये, मुझे 5 मिनट बस और दे दीजिए। इस तरह के फेलियर्स हो सके जब भी ड्राइंग और श्रिंकेज की साइकिल शुरू होंगी। एक बार देखिए, इसमें 2 फोटोग्राफ्स हैं, ये इंडिया का फोटोग्राफ नहीं है लेकिन मैंने लिटरेचर से लिया। इंडोनेशिया में एक सीमेंट स्टेबलाइजेशन विद एडिटिव्स की स्टडी हुई थी, तो उसमें अगर आप उधर देखेंगे रोड वही है लेकिन उस एरिया में कोई फ्लडिंग, कोई इंडेशन नहीं हुआ था, तो सब जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें कोई डैमेज नहीं है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे जहां पर बार बार फ्लडिंग हो रही थी, इनंडेशन हो रहा था, तो वही श्रिंकेज क्रैक हुई और आप डिटेरियोरेशन दे सकते हैं। मेरी साइड वाले फोटोग्राफ में इस तरह डिटेरियोरेशन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि एफडीआर के ऊपर ने कोई ना कोई बीसी क्लियर आती है तो कवर्ड रहती है ऊपर से, वो उधर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन शोल्डर साइड से अगर ये डिटेरियोरेशन शुरू हुआ तो कुछ सालों या महीनों में पेमेंट के अंदर भी डिटेरियोरेशन शुरू एक्सटेंड कर सकता है और उससे हानि हो सकती है। तो ये ड्यूरेबल के वही टेस्ट है, उनका सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझाया कि ड्राइंग और श्रिंकेज में क्या क्या सारी चीजें होती हैं। ये मिक्स डिजाइन में भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मिक्स डिजाइन के वही सारे ग्रेडिंग आप ध्यान रखिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालिए, उनके बाद सैंपल चेक करिए, उनकी 7 दिन में 28 दिन में यूसेस निकालिए, और फिर उसको कंस्ट्रक्शन वो भी सारा सुबह अभी तक हम सारा डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। बस ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर मिक्सिंग हो, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो, बाउंड्री की कंटेंट प्रॉपर हो, स्ट्रेंथ आ जाए और ड्यूरेबिलिटी आपकी एफडीआर की या जो भी मिक्स है उसमें ड्यूरेबल होना चाहिए। किसी तरह का कोई डिटेरियोरेशन लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए कि जो ड्राइंग एंड श्रिंकेज से
हो सकता है। ये सारे वही फोटोग्राफ्स हैं, सीमेंट स्प्रेडर है, मैनुअल बैग्स हैं, मैनुअल बैग से मैनुअल स्प्रेडिंग आप कर सकते हैं, सीमेंट स्प्रेडर से फिर आप बिटुमनस के ऊपर सीधा भी वो कोल्ड वो सारी इन प्लेस और प्लांट की वो सारी की सारी डिस्कस हो चुकी है। ये रिसाइकलर है, पैड फुट रोलर से पहले कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर वाइब्रेट रोलर से कॉम्पैक्शन कर दिया जाता है। ये सारी की सारी 7 डेज तक आपको क्योरिंग करनी चाहिए। हाँ, क्योरिंग जब तक चलती रहेगी सरफेस पर ड्राइंग श्रिंकेज नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। तो क्योरिंग का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपने सीटीबी लेयर को या एफडीआर की लेयर को क्योरिंग नहीं की तो ड्राइंग श्रिंकेज वाले क्रैक सरफेस पर आ जाते हैं और वो डीप भी हो सकते हैं। अभी जैसे गुप्ता सर ने कहा कि आधा आधा कोर आधी डेप्थ तक आपको क्रैक मिला, बिल्कुल ऐसे क्रैक एक्सटेंड कर सकते हैं। श्रिंकेज क्रैकिंग अगर आप जब तक क्योरिंग का ध्यान रखेंगे तो श्रिंकेज क्रैकिंग नहीं होगा। और ज्यादा अपने एफडीआर को सीटीपी को लेयर एक्सपोज्ड मत छोड़िए। 7 दिन की क्योरिंग के करने के बाद जो भी आपको उसके ऊपर लेयर डालनी है उसको तुरंत लेयर डाल दीजिए ताकि उसके श्रिंकेज क्रैक्स कम से कम हो। ये सारी वही टेक्निक है। मैनुअली काम भी कर सकते हैं हैरो से, टीलर से, जहां पर आपको रिसाइकलर्स अवेलेबल नहीं है। और ये वही है सीमेंट की कंटेंट को कैसे प्लेट टेस्ट से करके आता है। ये फिलोनेफ्लिन टेस्ट है, जिस देर तक वो आपका पिंक कलर हो जाएगा समझो सीमेंट वहां तक अवेलेबल है, मिक्सिंग को दिखाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताता हूं कि ये वाला क्रैक देखिए, एफडीआर में या सीटीबी में 2 तरह के क्रैक, एक तो मैंने बताया डिजाइन वाला क्रैक है, जो फिटिंग वाला क्रैकिंग है वो तो आएगा 10 साल 12 साल के बाद आएगा, या फिर आपकी दूसरे सिस्टल रीजन्स भी हो सकते हैं जिनके उसमें मैं नहीं जाऊंगा ना, इतना टाइम है। लेकिन 2 तरह के क्रैकिंग, एक तो श्रिंकेज क्रैकिंग जो सरफेस से शुरू होता है, और दूसरा ये जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट की भाषा में अनकंट्रोल्ड ऑटोजीनस श्रिंकेज क्रैक या अनकंट्रोल्ड केमिकल श्रिंकेज क्रैक। क्योंकि इस क्रैक का संबंध है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट से। सीमेंट के हाइड्रेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, जब तक आपकी कंक्रीट गर्म है तो एक्सपेंड करेगी, लेकिन एक टाइम पर जाकर के वो कंक्रीट कूल होना शुरू करती है, और जैसे ही कूलिंग फेज में जाती है कंक्रीट तो वो श्रिंक करती है, और नीचे की लेयर उस श्रिंकेज का उस फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट करता है, तो नीचे के फ्रिक्शन की वजह से कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाते हैं और वो क्रैक कर जाते हैं। इन क्रैकिंग की पहचान है कि फुल विड्थ में होंगे और फुल डेप्थ में होंगे। सीमेंट जितना ज्यादा होगा उतना एक क्लोजर इनका क्रैकिंग होगी। जैसे पीक्यूसी में जहां 400 M40 ग्रेड की कंक्रीट करते हैं, 400 kg का सीमेंट यूज करते हैं, तो स्पेसिंग रहती है 10, 11, 12 मीटर के इंटरवल पर। आप सीटीबी में आ जाएंगे, एफडीआर में आ जाएंगे, जहां 7 MPa की स्ट्रेंथ है, स्पेसिंग हो जाएगी आपकी 25-30 मीटर पर। और जैसे जैसे आप सीमेंट करेंगे बस स्पेसिंग पे फर्क पड़ेगा, क्रैकिंग जरूर आएगा, क्योंकि ये हीटिंग और कूलिंग ये सीमेंट के हाइड्रेशन से रिलेटेड है। तो ये क्रैकिंग रिफ्लेक्ट होंगे, कभी भी श्रिंकेज वाला क्रैकिंग रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि इन पर मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी और वर्टिकल मूवमेंट भी, इसी की उस वजह से क्रैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब क्रैक रिफ्लेक्स को रोकने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला एग्रीगेट इंटरलेयर, आपकी स्टेबलाइज लेयर के ऊपर आप 100 mm का WMM एक एग्रीगेट इंटरलेयर का काम करता है। सेकंड है SAMI, जिसको स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन, ये MRG के गाइडलाइंस में सब कुछ गिवन है। इसमें 11.2 mm की चिप्स और 10 to 12 kg पर 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप बिटुमिन का वो करेंगे। और थर्ड लेयर है कि आप बिटुमिन इम्प्रेग्नेटेड जियो टेक्सटाइल का यूज कर सकते हैं। तो इनमें कौन सा बेटर है, तीनों ऑप्शन आपको दी जा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यू है कि जब भी आप एग्रीगेट इंटरलेयर करेंगे, जो WMM का है ये एक वीक लेयर बन जाती है, इसके ऊपर भी एक स्ट्रॉन्गर लेयर है DBM की, उसके नीचे भी एक FDR की बड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर है। 2 स्ट्रॉन्ग लेयर के बीच में जब आप एक वीक लेयर डाल देंगे WMM की एग्रीगेट इंटरलेयर में, तो ये कभी कभी बहुत बैड परफॉर्म करेगी। उम्मीद है कि आप पूरी सीटीबी का जो स्ट्रेंथ, अगर आप पूरी आपका बिटुमिनस ओवरले अगर आप BC ऊपर FDR के ऊपर कर रहे हैं, तो FDR की BC को अगर आप सीधा बॉन्ड करें स्ट्रॉन्ग लेयर के साथ FDR के साथ, तो जो इफेक्ट आपको बॉन्डिंग का वहां पर मिलेगा, बीच में एक वीक लेयर डाल करके वीक लेयर से अगर आपको BC को बॉन्ड करेंगे तो इफेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरे, अगर AIL में कहीं कोई मॉइस्चर आ गई, वो कहीं से भी आ सकते हैं, मीडियम से आ सकते हैं, टॉप से आ सकते हैं, तो लेयर सॉफ्ट हो जाएगी। और लेयर सॉफ्ट होते ही ऊपर आपने DBM की और BC की लेयर कम की हुई है, क्योंकि किसके भरोसे, FDR की बड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर हमने डाली है। IRC 37 से अगर आप डिजाइन करेंगे तो ऊपर की थिकनेस घटा देगा DBM BC की, तो थिकनेस तो घटाती है, लेकिन कहां से जोड़ दी है, वीक AIL के साथ, वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। आपके पेमेंट की फेलियर प्रीमेच्योर हो सकती है। तो AIL से मेरा पर्सनल व्यू है, हालांकि कोड तीनों को परमिट करता है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है जब आप FDR के लिए जाएं और ऊपर आपको बिटुमिनस लेयर डालनी हो, तो बिटुमिनस अगर 40 mm की BC है, टैग कोड लगा करके सीधा FDR के ऊपर डालनी चाहिए। और क्रैक अगर अरेस्ट करने, वो वाले क्रैक
जो मैंने बताया 30, 35, 40 मीटर के इंटरवल पर आएंगे। अगर आप उन तरह के रिफ्लेक्शन को रोकने की बात करते हैं, और रिफ्लेक्शन भी कितने 2, 3, 4 सालों में होगा, ये इतना सीरियस इशू नहीं है जितना हम समझते हैं कि सीमेंट बढ़ने से और फिर वो रिफ्लेक्शन में चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप डेफिनेटली अगर इन श्रिंकेज क्रैकिंग को कम करना चाहते हैं तो एडिटिव आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर 1-1.5% अगर 2% पे आपने सीमेंट कम कर दिया तो इन क्रैकिंग की करंस कम हो जाएगी, रिफ्लेक्शन भी कम होगा, लेकिन वो टाइम लगता है। अगर आप दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सामी का, और थर्ड ऑप्शन है ये एक जियो टेक्सटाइल की लेयर है, इसके नीचे भी आप विटामिन डालिए, विटामिन की कोटिंग करें विजिटेंस से, और इसको लेकर के इसके ऊपर भी आप विटामिन की कोटिंग करें। इसके ऊपर आप जब आप कोई भी लेयर करेंगे बीसी वगैरह की या डीबीएमबीसी की, तो बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका संबंध अब डायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग लेयर से है। बीच में कोई वीक लेयर नहीं है, बीच में कोई ऐसी लेयर नहीं जो पानी आने से सॉफ्ट हो जाएगी, फेलियर हो जाएगा। अब सर ये लास्ट स्लाइड है, एफडीआर और उसका व्हाइट टॉपिंग और बात हो रही थी। ध्यान रखिए, एफडीआर कभी भी वियरिंग लेयर नहीं हो सकती। एफडीआर और सीटीबी सिर्फ बेस लेयर हो सकती है, वियरिंग लेयर कभी नहीं हो सकती। अगर आपको एफडीआर को ऊपर बिटुमिनस ओवरले करना है तो इन सारे एग्रीगेट इंटरलेयर या वो सामी के साथ या जो टेक्सटाइल के साथ आप बीसी कर सकते हैं या फिर डीबीएमबीसी कर सकते हैं। एक दूसरी ऑप्शन है कि अगर आप एफडीआर के ऊपर या सीटीबी के ऊपर आप रिजिड पेमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कंक्रीट का ओवरले डालना चाहते हैं, उस केस में एफडीआर सिर्फ बेस लेयर होगी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बता दूं, एफडीआर या सीटीबी फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में मेन लोड बेयरिंग लेयर मानी जाती है। ऊपर जो आप बीसी डालते हैं ना, वो सिर्फ वियरिंग कोर्स है, क्योंकि एफडीआर वियरिंग कोर्स नहीं हो सकता। अगर आप एफडीआर के ऊपर आप 40 mm की या 30 mm की बीसी डालेंगे तो वो एक वियरिंग लेयर का काम करती है। एफडीआर मेन लोड बेयरिंग लेयर है। आपकी रोड की लाइफ, उसका फेलियर, सब कुछ एफडीआर की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, बीसी के ऊपर नहीं, क्योंकि बीसी सिर्फ बेयरिंग लेयर है। और डीबीएमबीसी उन केस में भी एफडीआर स्ट्रॉन्गर लेयर मानी जाएगी, वही मेन लोड बेयरिंग लेयर रहेगी। लेकिन अगर आप रिजिड पेमेंट के ऑप्शन की तरफ आते हैं, तब एफडीआर और सीटीबी एक बेस लेयर होंगी। वो बेयरिंग लेयर ना तो बेयरिंग लेयर रहेंगी, ना ही वो मेन लोड बेयरिंग लेयर रहेंगी। अगर आप उसके ऊपर आप बस लास्ट हो गया सर, अगर आप उसके ऊपर आप सीसी का ओवरले डालना चाहिए, जैसे ये हमने एक स्टील स्लैब को स्टेबलाइज करके पहले एफडीआर उसका सीमेंटेड बेस बनाया, और अगर आप सीमेंटेड बेस या एफडीआर के ऊपर सीमेंट कंक्रीट के जाना चाहते हैं तो एक पॉलिथीन शीट यूज करेंगे, ताकि इसके वाले जो भी वो क्रैकिंग है जो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ऊपर पीक इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने उसको दोनों को डिबॉन्ड कर दिया तो एक पॉलिथीन शीट डालिए, और उसके ऊपर आप शॉर्ट पैनल का या लार्ज पैनल का, जैसे भी आप चाहें, रिजिड पेमेंट का, कंक्रीट पेमेंट का बना सकते हैं। Thank you so much. Thank you, Vinod Kumar ji. It was a very nice exposure to different aspects of stabilization, which in fact is a part of FDR process. Now we'll take questions, although time has exceeded, but since all the three presentations involve a lot of interest, and it's very, very key to this seminar, so I think we can take maximum 6 questions. So please, whosoever want to ask, please introduce yourself and tell the presenter whom do you want to ask the question. First, please. Please give. Thank you. First of all, my congratulations to all three presenters who gave very enlightening and scholarly presentation. And secondly, I'm a bit disappointed after seeing these presentations. In fact, we are here to find the answers, but these presentations have raised more questions than giving answers to FDR. Actually, what I find is that FDR is now divided into 2 parties. One FDR is what is given in the code and in the books, that FDR is excluding the subgrade layer. It is to be done only in the granular layers. And another FDR is what UPRRDA and the PNSI system is practicing all over the country, which is penetrating beneath the granular layer also, and it is including the subgrade layer. And that is being done only with the help of CCS. But on the CCS,
you people are still silent. Even after 5 years of work, what I find is that CCS is not being answered properly. So I'm a bit confused whether the CCS to be taken forward or it's to be stopped right here. Because there should be a clear-cut recommendation, and that recommendation will come only from the authorities. If IRC says that, okay, we don't know what this, how the CCS will behave, you go ahead if you want. Then this is not the answer, what I feel is. Because PRRDA is basically a field organization. These people are not the researchers. They will only follow what you people recommend. So when they have already constructed 5,000 kilometers of roads, then we should have come out with some results, some concrete results in this seminar that yes, this CCS works or it doesn't work at all. So this is my question, and I think anybody of you can take up this question and answer it. I think I may better clarify this question. In fact, CCS is already accepted in IRC SP 89 Part 2. So it has to be there. Nobody can remove this. As far as it's not prescription for the FDR, Mathur Sahab gave some reasons, but we have kept an caveat whereby the state can utilize the CCS. Nobody is asking UPRDA to stop this practice. But what we essentially need more information. In the morning, I think I was discussing with the DGA. Will from IRC, I will recommend and probably will take up some kind of better engagement with the NRTA by the S9 committee. So whatever doubts, questions are there, in fact, to have the questions as Professor Gupta cited is not bad. We must, because this is the first time the code has come. IRC 37 has seen so many revisions, and still we have given a very big research project involving 4 IITs to have the complete MPLDG. So questions will not be answered in one document. It will take over time. But as far as the CCS limited role is concerned, and this subject soil and shoulder role is concerned, probably we'll have more consultation and try to find out something. Till such time, the code has allowed use of CCS, which can proceed. The CCS should have been analyzed by now, because it's already in use for 5 to 10 years in India. And if we have not analyzed CCS, what it is, how does it perform, how does it affect the strength and durability of the pavement, then it's very baffling That is worrisome. Actually, IRC per se cannot analyze. It has to be by the academic or research institutes. And that knowledge has to come to the committee to utilize it. So, unfortunately, it does not have, but how it can have, and if something is already existing, how to bring it to the knowledge of the committee, IRC will definitely facilitate. Because I am personally involved in this, I will also continue getting involved with this, and we'll try to find out something. And one suggestion to say, CPRRDA immunization system also, that they should have constructed some control sections also. Control sections with only cement, and then the rest section with the cement with CCS. Then only the things could have been compared by now. Because after constructing 5,000 kilometers of road, and if we are at the same point where we started, then it's really very. Okay, sir. Sir, Let us take some questions from Sir, I am C.V. Raman here from Novogrid. Here, sir. Sir. Pardon? Sir, here. On the back row of this place, sir. Please. Sir. So, thank you very much, sir. I have listened the view of all of you here, and regarding this new code also, which is published for FDR. As Mathur sir was telling that the cost comparison is 2,000 and 3,700. So that itself is not correct. If I go for the detailed analysis, I think the 2,000 cost might have come with the 3 MPA and 3,700 might have been compared with the earlier record of 4.5 MPA of the 7-day requirement. Once you will compare apple to apple with the 4.5 MPA to 7 MPA, definitely the cement quantity and the cement with the additive cost will not give much of the difference.
So this part, the cost part, I am worried that 1700 rupees per cubic meter cost is not coming for due to the additive. So this will not give that much financial impact. Number one, sir. Number two, it is additive, so definitely it is for the value addition in the UCS as well as in the other engineering parameters of the stabilized layer. So these value additions are coming in the terms of UCS, maybe the reduction of the shrinkage cracking, improvement of flexural strength, and other things. And for that, the cost impact is not as much, I think, as it has been explained in the presentation. So I request that please review the cost part, and if you will review the cost part and you will understand the merits of use of this kind of additives here. So definitely you will give the amendment and some guidelines also, because cement standalone behavior with the soil, as Vinod sir is representing that sometimes you need to add the lime with the cement. Sometimes in the concrete also. With my request, please make a question brief so that we can answer from the cost. Whatever have been provided by NRIDA, this is not my data. NRIDA has provided, and it was brought out very clearly that the cost with cement alone comes out to be rupees 2,000 per cubic meter, whereas if we add additive, and then also I checked, it is coming something around 3,700. So 1,700 rupees is a huge difference. And also I have inquired from some of the commercial chemical stabilizers. They say that the cost of this commercial additives is almost 5 to 10 times than the cost of the cement. So even if you are adding 1% of the cement, still, the cost goes very high. So that you cannot say that with cement and cement with additive, the cost will remain same. It is definitely going to be high. And so far, we do not have any proper evidence which indicate that with additive, the performance has improved tangibly. So that's why we have, in this guideline, we are restricting at the moment only with cement. But of course, with time, when the data will emerge with CCS, and if we can make a comparison that with CCS we are getting far better performance, then there is no restriction on that also. That's why, CCS has been included in the guideline, but of course with a cost. नमस्कार सर, मैं पीडी पाठक, स्टेट टेक्निकल ऑफिसर यूपीआरआरडीए हूँ। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सन 2020 से जो हम लोग एफडीआर का वर्क किया, तब से हम इन्वॉल्व हैं उस जर्नी में, हम लोग शामिल हैं सर। शुरुआत में जैसे फोरनून के सेशन में हमारे ब्रजेश कुमार दुबे सर ने, चीफ इंजीनियर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें बताया था कि हम लोग अपनी शुरुआत में एनआरआईडी को सबमिट किए थे, कॉस्ट पर किलोमीटर बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहीं से हमको इंसिस्ट किया गया कि हम लोग टेक्नोलॉजी पर जाएं हम लोग, तो हम लोग उस पर हमको जाने के लिए बाध्य हुए। हम लोगों ने सर शुरुआत में एनआरआईडीए ने हमको क्लू दिया था कि एक यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है सुल्तानपुर में, उसके सर्विस रोड में विश्वमुद्रा इंजीनियरिंग द्वारा उसके सर्विस रोड पर एफडीआर का काम किया जा रहा है, उसको देख के आइए सर। तो पहले हम लोग गए, उसको देखा हम लोगों ने, चूंकि मशीनें बड़ी बड़ी थी, लगा रूरल रोड्स में इतनी मशीनों का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, हम लोगों ने एक बार अपने यहाँ से यूपीआरआरडीए से लेके डिनाई कर दिया एनआरआईडीए को कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी अपने अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, सम प्रॉब्लम्स, तो हेवी मशीन से ऐसा नहीं हो सकती हैं। फिर एनआरआईडीए ने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं, अभी आप लोग और स्टडी कीजिए। उसके बाद सर हम लोग 3 टाइम्स हम लोग, उन्होंने बताया, उन्होंने क्लू बाकायदा दिया, उन्होंने वहाँ विश्वमुद्रा इंजीनियरिंग द्वारा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 100 किलोमीटर के से अन्य योजना में एफडीआर का काम किया जा रहा है। वहाँ हमारे एएस सर भी, जो डीजी नेल्डा थे, आशीष गोयल, डॉक्टर आशीष गोयल साहब, वो भी गए सर, उनके सामने हम लोग विजिट किया, पूरा स्टडी किया, जो उससे रिजल्ट आ रहे थे वो हमको बहुत अच्छा लगा, और ये लगा कि ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तब उसको हम लोग अडॉप्ट करने के लिए आगे बढ़े हम लोग। और जर्नी का सर जिक्र हमारे दुबे साहब ने किया ही था फोरनून में, उसको मैं जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर माथुर साहब का जो प्रेजेंटेशन था अभी, उसमें एडिटिव ना लेने का जो कारण, जो स्लाइड दिखाई, पहला तो कारण दिखाया कि उसका 2,000 रुपए पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट
होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि हम लोग जब अडॉप्ट कर रहे थे कोई एफडीआर का रेट नहीं था, हम लोगों ने ट्राई किया था कि उसमें पीडब्ल्यूडी चूंकि रेट जारी करता है, पीडब्ल्यूडी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमारे शासन से रिक्वेस्ट किया कि उसका एफडीआर का रेट जारी कर दीजिए। पीडब्ल्यूडी नहीं किया, पीडब्ल्यूडी ने मना किया। फिर हम लोगों ने उसके स्टेक होल्डर से उनकी मीटिंग करके हम लोगों ने उसको रेट बनाया। उस समय जो रेट हुआ था 2000 रुपए, उसमें 3 ही एडिटिव थे मार्केट में उस समय यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, ये तो नेचुरल चीज है ना कि जो चीज कम होती है कहीं पर तो उसके रेट ज्यादा रहते हैं, तो उसको इसीलिए 2000 रुपए रखना पड़ा। और उस समय जो एडिटिव को सोच करके हमने रेट बनाया था, उस एडिटिव का रेट अभी भी इसी हिसाब से है। स्टेबल रोड को देखा गया था हम लोगों ने, जो कि समुद्रा इंजीनियरिंग के पास है उसकी टेक्नोलॉजी। लेकिन अब जब बाद में जब हमारी एफडीआर के काम आ गए सर, पूरे मार्केट में बहुत सारे नंबर ऑफ एडिटिव 10-12 एडिटिव्स आ गए हमारे। जब आ गए तो जाहिर सी बात है उनमें भी आपस में कंपटीशन हो गया, और उसको करके तो अब रेट्स काफी कम भी हो गए उनके बाद में। हम लोगों ने सर जो 2000 रुपए का रेट हमारे पर किलोमीटर रखा गया था शुरुआत के रेट में, वो हमारा इस समय आज के रेट में नया रेट जारी किया है हमने सर, वो करीब 27, उसमें 1000 रुपए 1000 रुपए रेट है। एफडीआर रेट हमारा 2782 रुपीज पर क्यूबिक मीटर आया निकल के आया है। अगर डीपीआर बनेंगे उसमें वही निकलेगा सर। क्योंकि जैसे जो कमेटी, जैसे एफाइन कमेटी ने जो हमारा इस पर एफडीआर कोड का जो जारी किया है या जो स्टडी किया है, जो मीटिंग में डिसाइड किया गया है सर, क्योंकि उसमें यही सब 2-3 फैक्टर्स को अपना माइंड में ले करके कॉस्ट, दूसरा ये कि किया सर अपने डॉक्टर माथुर साहब ने कि उसका टेस्टिंग का प्रोसीजर कोई नहीं है सर। हम लोगों ने 6000 किलोमीटर का काम करा रहे हैं करीब, हम लोग 5200 किलोमीटर हमारा काम पूरा हो गया है। एफडीआर बेस किसी भी रोड का फेल नहीं हुआ। उसके ऊपर कुछ जगहों पर जो बिटुमिनस कंक्रीट जो सरफेसिंग कोर्स हुआ था, 1-2 सड़कों पर हमारा वो फेलियर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि पीआईयू ने उस पर सिंसियरली उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसका लेवल ग्राउंड लेवल बना दिया, वो फ्लैटेड रहता है। और उस पर जो हमारा T5 कैटेगरी की ट्रैफिक डिजाइन हुआ था, उस पर 5.5 एमएससी की ट्रैफिक अप्लाई कर रही है, तो सरफेसिंग खराब हुआ। बट एफडीआर स्टिल इंटैक्ट, एफडीआर में कोई गड़बड़ी नहीं है सर। पीडब्ल्यूडी ने भी सन 2015 में एक रोड बनाई थी, 26 किलोमीटर एफडीआर की बनाई थी, मशीनों से बनाई, बड़ी मशीनों से बनाई थी। काबा एक कॉन्ट्रैक्टर काबा एसोसिएट्स उन्होंने काम किया था। उसमें एफडीआर बेस बहुत अच्छा रहा। उसमें फेलियर क्या हुआ था कि उनका सरफेसिंग टूट गया था। तो पीडब्ल्यूडी में ये होगा मिथ आ गया कि नहीं वो एफडीआर फेल हो गया। हम लोगों ने करने के जब एफडीआर अडॉप्ट करने के पहले वहां भी गए हम लोग सर, उसको हम लोगों ने कोर निकाल के देखा, एफडीआर का कोर फर्स्ट क्लास दिखा। क्या क्यों फेल हुआ था? जैसे देवेंद्र कुमार साहब ने कहा है, बीच में एग्रीगेट का जो लेयर डाला, इंटर लेयर डाला था, उसके वजह से क्योंकि पानी उसमें इनग्रेस किया पीसी से, वो पानी जाकर के एआईएल में वो स्टैग्नेट हो गया। और नीचे चूंकि एफडीआर में सर, एफडीआर बेस हमारा सर आप देखेंगे सर, आप यहाँ आज हमारा कोर नहीं लेके आए हैं, वो इम्परमेबल, पानी ना नीचे से कैपिलराइज होता है ना ऊपर से पानी नीचे जाता है। तो हमको नीचे उसका फिल्टर लेयर की देने की जरूरत भी नहीं है हमें। और जब क्योंकि नीचे एफडीआर हमारा इम्परमेबल है, और जो हमारा पीसी से इनग्रेस होकर के जो पानी गया एआईएल में, वो 10 सेंटीमीटर का थिकनेस उसकी थी। वो रूम इतना था कि वो पानी स्टैग्नेट हो गया और धीरे धीरे करके सरफेसिंग उखाड़ दिया, तो सारा सरफेसिंग पूरी रोड की टूट गई। मतलब 52 किलोमीटर रीच है सिकंदराबाद से रसूलाबाद। आधा वो कन्वेंशनल बना था। पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स ने कहा कि आधा जो कन्वेंशनल बना था 50 सेंटीमीटर कैपेसिटी थी उसकी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एफडीआर टूट गया। जबकि एफडीआर टूटा इसलिए कि वो हमारा जो एआईएल बनाया था, एआईएल जो लगाया था, एग्रीगेट इंटरलेयर दिया था, उसके वजह से टूटा। क्योंकि अगर नीचे जैसे हम लोग सीमेंट, अगर हम सीटीबी करते हैं सर या सीमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्जिस्टिंग एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट क्या है हमारा, 45-63 mm है, 25-50 mm है। यही होता है ना एग्रीगेट जो हमारा G2 G3 से बनता है, सूरत बनती नहीं, उसमें जीवन होता है सर। अब जीवन बंद हो गया है, पहले जीवन भी होता था, 120 mm तक के साइज होते थे। वही साइज के एग्रीगेट हमारे जो हम बनाने जा रहे हैं वही मिलते हैं वहां पर। जीवन कम हो गए हैं,
क्योंकि 2002 के आसपास से वो जीएसटी होना शुरू हो गया सब बेस में। अदरवाइज उसके पहले जीवन बनता था सर, वही अवेलेबल है हमारे, ठीक है ना। अगर कोर भी सर नहीं निकल पा रहा है सर, डॉक्टर गुप्ता साहब ने जो जिक्र किया, अगर कोई बड़ा साइज का एग्रीगेट नीचे फंस जाता है तो सर वो हिला देगा, वो कोर नहीं निकल पाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन चूंकि कॉम्पैक्शन में बहुत स्ट्रांग होता है, स्टोन नीचे पड़ा हुआ है, अगर हम उसका वो नॉन डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेटी करें अगर हम, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, कोर नहीं निकल पाएगा। तो इससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मतलब वो हमारी सड़क का स्ट्रेंथ खराब है या उसकी क्वालिटी खराब है सर। दूसरा ये है सर, एग्रीगेट हम लोग जितना स्टडी किया है हम लोगों ने सर, एग्रीगेट का परसेंटेज अगर 60% से ज्यादा, मतलब 40% का सॉइल होना जरूरी है उसमें, क्योंकि जो हमारा कोर निकालते हैं सर, कोर में जो उसके वायर्स होते हैं, एग्रीगेट्स के बीच वायर्स होते हैं सर, वो हमारे जो सॉइल सीमेंट एडिटिव जो मॉर्टर बनता है वो उससे वो भर जाता है सर। आप उसको कोर देखिए आप, तो आपको अभी एक फोटो दिखाया था डॉक्टर गुप्ता साहब ने, अभी वो फोटो से दिख जाता है कि कितना बढ़िया अंदर मॉर्टर भरा हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एक होमोजेनियस कोर निकल के आया है सर, ठीक है सर। सीमेंट के साथ सॉइल की कोई एफिनिटी नहीं, हम लोग बहुत सुनते रहे हैं कि अगर चिनाई करना है तो ईंटों की सफाई कर दीजिए, मिट्टी नहीं होना चाहिए। अगर होना होता सर, मिट्टी और सीमेंट की एफिनिटी अगर होती तो जितने प्लास्टर है ना वो सब सीमेंट और मिट्टी से होते लगे। ये सर हम लोग सॉइल की स्टेबलाइजेशन हम सीमेंट से करते हैं, यह है हमारे पास लिटरेचर है हमारा, वो इसलिए है कि सॉइल की स्ट्रेंथ को इनहेंस करते हैं हम। जैसे ग्रेन साइज जब हम सीमेंट से स्टेबलाइज करते हैं सर, जैसे विनोद कुमार साहब ने बताया है कि उसकी ग्रेन साइज उसे चेंज हो जाती है, तो पीआई चेंज हो जाती है, उसकी सीपीआर चेंज हो जाती है, लेकिन वो मॉर्टर नहीं बन सकता है जो हमारा एक पेमेंट के लिए, एक होमोजेनियस मिक्स के लिए हमारा बनना चाहिए सर। Your question is. थैंक यू सर। सर मैं एक क्वेश्चन कर दूं, एक सवाल आंसर दीजिए जो टेस्ट से भी रिलेटेड है, जो डॉक्टर साहब ने भी यूज किया और सर आपने भी किया। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया उसमें। कंफ्यूजन ये है कि सजेशन है कि नीचे एक मटेरियल छोड़ के हम एफडीआर कर, हमने तो कोई ले लिया, छोड़ा ही नहीं। दूसरा, टेस्ट में जो मिस्टर पाठक ने कहा, मैं उसके आगे को बोल रहा हूँ कि ग्रेनुलर मटेरियल, एक तरफ आप ग्रेडेशन डिफाइन कर रहे हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट, और दूसरी तरफ हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि हम कर वो रहे हैं जो सड़क में है। तो ये कहाँ से जुड़ेगा, ये भी तय करना पड़ेगा इस कमेटी को। और मेरा इसमें सीरियस रिक्वेस्ट है सभी इंस्टीट्यूशन, किसी भी एडिटिव को, किसी भी टेक्नोलॉजी को फील्ड में एप्लीकेशन के क्लियरेंस देने से पहले सिर्फ लैब टेस्ट फील्ड में एग्जीक्यूट करें। हमने कर दिया उसको, जिसको आपने कहा था जितने एडिटिव्स आए थे उनको आपने सीमेंट से टेस्ट करके हमें यूज करने को दिया, हमने कर दिया। आज आप कह रहे हैं भाई इसका तो फील्ड ट्रायल नहीं, इसकी डिटेल्स नहीं, क्यों नहीं है उस इंस्टीट्यूट के पास जिसने क्लियरेंस दिया, इसकी वजह से आईआरसी ने एक्रेडिटेशन दिया, कहाँ है ये? दूसरी बात, हमारे पास जो ग्रेड मटेरियल है जिसमें यूसीएस 10, 12, 13, 15 इवन कुछ में ज्यादा आया, हमने रिक्वेस्ट किया सीआरआरआई से, हमने रिक्वेस्ट किया बीएचयू से, हमने किया आईआईटी कानपुर से, उन लोगों ने भी टेस्ट किया। सीआरआरआई ने अपने आदमी भेज के कोर निकाले, किसी ने हमने कोर भेजे, उनमें यूसीएस फिर बाद में कम आया। मैं 12,000 करीब कोर निकलवा चुका हूं। मैं बता सकता हूं कि मशीन का साइज, प्लेसमेंट ऑफ द मशीन along the road, vertical to that, इस पे भी इफेक्ट कर रहा है। कई बार नहीं निकलता मगर साइज अच्छा है। अभी सर ने बताया ट्रायल स्टेज, हमारे यहाँ 100% ट्रायल स्टेज का जो टेस्ट है वो आईआईटी एनआईटी ने किया है। नेशनल क्वालिटी मॉनिटर आए, उन्होंने निकाला, उसमें उनको ज्यादा मिल गया, उन्होंने उसे क्यों दिया, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, ये वाकई इसका अध्ययन का एक पॉइंट है जिसपे मेरा अनुरोध है इस कमेटी से कि इस पे कृपया अध्ययन करें। हम एडिटिव यूज कर रहे हैं, हमने क्यों यूज किया सर आपके लिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश सरकार के एक अंग है, जो स्वीकृति मिली निर्णय से, जिस टेक्नोलॉजी पे मिली, हमने डेविएशन नहीं किया। यदि हमें विदाउट एडिटिव होता तो हम सीमेंट से भी करते, हमारे पास सिर्फ सीमेंट एडिटिव था, हमने किया।
तो अनुरोध है कि जो पॉइंट हम लोगों ने अनुभव किया या जो अभी भी अनआंसर्ड है, स्पेशली क्वालिटी में भी, स्पेशली ग्रेडेशन पे, मैं फिर कह रहा हूँ जेएमएफ लैब में बनना और उस सड़क के लिए लोन छोड़ना चाहिए, इसके क्लियरेंस चाहिए। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने केवल सीमेंट और एडिटिव के साथ ही हमको इजाजत मिली तो हमने उसी से ही सड़कें बनाई। लेकिन अगर आप इस पर कहीं भी इंटरनेशनली कहीं पे भी देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जहाँ पे भी काम हो चुका है या जहाँ भी सड़कें बन चुकी हैं, कहीं पे भी कोई एडिटिव का कोई जिक्र नहीं है। दे हैव डन द जॉब ओनली विद सीमेंट एंड दे हैव इंडिकेटेड दैट द परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी। तो अगर हम खाली सीमेंट से ही अपना काम चला सकते हैं तो मैं एक एडिशनल कॉस्ट क्यों डालूं, अनलेस कि मेरे पास कोई प्रूफ हो। ठीक है, आपने एडिटिव के साथ किया, लेकिन जैसा आपने रेस किया था वो पॉइंट बड़ा वैलिड है कि अगर हम कुछ टेस्ट मतलब सीमेंट के साथ भी करते तो एक कंपैरिजन हमको मिल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। बट एनीवे, अब आगे का टाइम है, देखिए ये दिस इज ए न्यू टेक्नोलॉजी, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि यूपी पीडब्ल्यूडी ने इस पे इतना काम करके इसको एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर के आ गया, एंड नाउ एवरीबॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। दैट्स ए ग्रेट थिंग डन बाय यूपी। बट एट द सेम टाइम हमको, जैसे आज सुबह भी मंत्री जी भी कह रहे थे और सभी लोग कहते हैं कि भाई अगर हम कहीं कॉस्ट बचा सकते हैं, मान लीजिए ठीक है मेरा अगर कॉस्ट डिफरेंस 15 लाख आ रहा है या 20 लाख आ रहा है, अगर वो घट के 5 लाख या 10 लाख भी आ रहा और अगर मुझे सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, देन व्हाई शुड नॉट आई गो विद सीमेंट अलोन। अच्छा, देन सेकंड पॉइंट जो आपने कहा था कि भाई हमने नीचे का भी की लेयर को भी ले लिया, ठीक है, एग्री। अभी आपका 1 या 2 साल ही हुए वो बने हुए रोड, चलिए 3 साल हो गए, 3 साल भी हो गए, लेकिन ये एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारा। जितने भी पेवमेंट डिजाइन होते हैं, आप कोई सा भी पेवमेंट डिजाइन देख लीजिए, इंटरनेशनली देख लीजिए, इंडिया में भी देख लीजिए, हर जगह एक ड्रेनेज लेयर जरूरी है, क्योंकि जो भी, ठीक है आपने कहा कि पानी नहीं जाता, लेकिन पानी जाता है, इट इज नॉट ए 100% impermeable layer, water is bound to go, और अगर वो वाटर नीचे जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एग्जिट मिलना चाहिए। अगर वो एग्जिट नहीं मिलेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द पेवमेंट विल डिटोरिएट। एंड दिस एस्पेक्ट, ये जो आपने बताया, हमको भी पता था, यूपी में पूरा लेयर लेकर के इंक्लूडिंग सब ग्रेड लेकर के बनाया, क्योंकि वो इजी है। अदरवाइज अगर मैं आपको कहूँ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर छोड़ो तो वो प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत है। आई एग्री, इट इज ए देखिए इसके definitely this today's seminar will throw light on the work which has been done by UP government, and definitely that has to be recognized, that has to be evaluated, and that has to be factored into the standards. I fully agree with that. So I would rather request PRLD, whatever information, test results from the starting, let them make a big volume of that and submit to IRC. And in turn, I would request Secretary General IRC to take off the call, maybe along with us to support the S9 committee. There can be involvement of some more experts to scrutinize those documents and take a call to allow CCS to allow use of subgrade, and if allowed, to what extent, with what precaution. So let the details come from FRDA, and let the details be thoroughly examined by the experts and a decision taken on the informed basis. But side by side, I would also request FRDA to please do some transactions at least without CCS. Let us see how it is performed.
You don't do in kilometers and kilometers you don't like, but you can do 200 meter, 300 meter, 500 meter only with cement. What the existing code has proposed, so that we can have an understanding where we really stand. I think there has been a lot of discussions. I will No, take sir. two more. I have a very genuine question. I'm sorry to disturb you. Just a minute. So we'll take two more questions. Okay, you are so passionate At to first, ask the sir. question, but make the question brief and not your Absolutely, comments. I'll be very brief. Ask the questions, not your opinion. Yeah. I'm not giving any opinion. Sir, at first, I would like to understand that what research has been done. This technology, FDR technology or stabilization technology, was introduced in India in 2011. I myself has introduced this technology in 2013. My one of very good friend, Mr. Mohit Verma, he's again here only, who was representing RBI 81. He constructed many roads. I have constructed many roads. Were they even asked for? Were the data was even asked for? Were the stakeholder even asked for the data before giving any opinion or creating any code? A very good slide in the last. It was written that since we do not have the FDR enough information, we cannot provide it. This technology was introduced in 2013 by me. I have many roads. Was I asked? No. Secondly, now this if we talk about only FDR and not stabilization, UPRRDA has constructed this road. I have constructed in 2017 230 kilometers in Assam. Were they even asked? They were underwater for since regularly every year for 4 months underwater. Those roads were constructed by NRDA. Were they even asked? Was I even asked? No. Now, yes, we can say in the code we can write a line. Yes, not enough data is available. Sorry. Sir, I'm not able to agree with the question. In the subgroup, there were two members from NRIDA. So whatever information was available, that must have been. But again, if your information has not been taken, that's not the correct thing. We must utilize the information, whatever we have within our domain. You please also share now the revision of the document would be taken off in the right earnest along with the data which will be coming from UPRDA. Whatever information you have, please share. So earlier it was not asked. It is not the fault of the committee per se, because there may be process, and even the document was in the website seeking the comments. So I'm not going into those details. But right now, whatever information, whatever data you have, and for that matter, anybody else who has data in support of utilization of CCS, let them provide so that it will be thoroughly examined by IRC for any proposition. Sir, let us take one question from this side. Louder, please. Still not properly audible. Can you come forward? No. The microphone is not working. Sir. Sub-zero temperature and the bitumen and cement. I think bitumen cement you can answer. So let me understand your question. Your question first was regarding the sub-zero temperature. So in the sub-zero temperature, whenever we design a mix, we do the durability testing, not as a wetting drying, but we do as a freezing thawing test. So if any kind of a mix design which has to be done for a sub-zero temperature, we adopt freezing thawing rather than the wetting and drying. So probably, I don't know, any kind of FDR road is there in the JNK, probably I am not aware of. Okay, but in case if it's a mixed design, please take care of the freezing thawing test rather than the wetting drying test. The second question was related with the bitumen.
There is only a few limited quantity of the aggregates which will be coated with the bitumen. If you consider the full uh, depth or the volume of the FDR material, I believe that because we are right now doing it for the low volume roads. Conventionally, our low volume roads used to have a 20 of a OGPC plus seal coat. These are something which is been there in the earlier phases of the PMG as well. And even that also, some of these 20 portion has been removed over the years. So that is very less amount of a quantity. And again, cement can bond, basically the cement matrix is bonding. It's not something is totally separated. So there are some matrix which is bonding that kind of a thing in between. Maybe it is not having a bond, but the matrix is so strong that this is not easily coming out or is not easily moving. So that is the basic idea. Means probably I have not gone into that detail, but it has shown a very good strength, even with the some of the sites within the UP have some amount of the scrappings of the bituminous layer also. Sir, I will add to it. Whenever you do FDR or any CTB or any cement related treatment in sub-zone where freezing temperature is there, like in Jammu Kashmir, you have to use accelerator or an additive which contains calcium chloride, because it is a very good additive, and in all freeze thawing condition it will lower down the freezing temperature, and without CaCl2 you perhaps you will not be doing a good job. So in those freezing and thawing condition, I will recommend that you definitely use CaCl2, which acts as an accelerator, lower down the freezing temperature, and it will not induce the cracking related to freezing and thawing condition, because it will improve your strength in first 24 hours. And after that, concrete sets or your FDR or CTB material sets, and there are less chances of any type of freezing, thawing, cracking. So use CaCl2. This will be the last question. Actually, I think that is Madam asked question. Thoda bit. Please, let us have. We can take definitely Madam first. Sir, can I? You want question? No, not her. It's me. Okay. Acha, please. Yeah. Sir, I only want to ask that to achieve the required FDR gradation, we have to add fresh metal aggregates. That is the only solution. Because we are doing FDR in old PMJSY roads that has G1, G2 and GSB material in the existing crust. We want to achieve the FDR gradation as required, the C1 analysis 53 down. So we have to add more fresh aggregates to achieve that. That is the only solution. Yeah, that has been very clearly brought out in the guidelines that gradation has to be adhered, and if required, you have to add fresh material also. Because gradation will give the proper gradation will give the strength. And for that, if additional aggregates are to be added, that shall be added. It has been brought out very clearly in the guidelines. Sir, for widening from single lane to intermediate lane, we don't have to use the side shoulder material as per the code till now. That is the thing. For widening, we will not use the hard shoulder existing. No, We'll no, not we mix have that. not. We have said that soil from the shoulder shall not. But if there are aggregates, you can use it. There's no problem. In shoulder, we have soil only of CBR greater than 12. So we don't have to mix in the crust. The only thing is that the gradation shall be adhered. Suppose if you add even the shoulder material also, and if it is meeting the gradation requirement, then there is no But issue. the code does it allow for mixing the soil now, as of now? Does it allow or not? Yeah. That we will look into. Yes, sir. This yours will be the last question. We have already far exceeded the time limit. Please. Yes, sir. be Yes, brief. sir. Yes, sir. To answer to Sudhir Mathurji, sir, we have sent our opinions about to the H9 committee almost an year back, and we've been communicating, but so far no mail or nothing, no communication at all. But anyway, we look forward. We would like to request you to involve all the stakeholders. Just a minute. What I am clarifying, instead of sending to H9 committee, you send to IRC.
if necessary to support the H9 committee, IRC can have some other mechanism. We'll discuss and we'll look into It this. is also You- sent to IRC too. Sir. Okay. All the emails. You please send yeah. again. We'll send that for sure. And sir, I would like to know, before you came up with this kind of, policy on this using cement alone, you said, we have taken it from the abroad that, using alone, cement alone worked real good. But we wanted to know what's happening in India. Did we actually take some data from here? Because we have so much data past 10 years using additives and cement together in India. We actually submitted so much of reports from CRRIs or IITs, and I'm sure all the eminent professors have carried out tests with cement and additive too. I'm sure CRRI and all the IITs have so much of data, what they have performed. And we also have a lot of our additive players and then the contractors, they have a lot of data which has been given by all the eminent professors and then IITs and CRRIs also. You should also please consider into that too. And then I still remember 2017, 18 onwards, UPRRDA, when they wanted to start this mission, they actually visited 4 times into state of Andhra Pradesh, the Krishnapatnam port, where we have the heavy loads. And we also went under the chairship of A.K. Jain Saab. This was constituted by none other than our Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji. And then the entire team came along with Mr. Dubey ji. And then they have studied extensively. And then they have given a report. And today, we proudly tell that there are around 3,000 trucks that are flying. And then this is the 8th year. We have completely carried out only through soils. And we didn't even use DBMs. It's all BC, 10 mm, 20 mm, 30 mm, just to try it out and see how they're performing. And today, when Adani's bought, till date, there is zero maintenance. And we have also executed the same technologies, the Hyderabad International Airport, the main runway. This is the 4th year. And nowhere in the world or in India, there is a commercial passenger airport which has done with this technology. And today, it's a boast to the aviation sector. 640 flights are flying on the same runway, and complete the design and then the quality has been done within our internal Vishwasamudra engineering. And then, of course, we always respect the eminent professors, the IITs, and all the premier institutes who are supporting the infrastructure. And that's how we want to go hand in glove and then give the best to the people of the country and what we want to achieve, what our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is giving, saying to come with zero emissions, net zero emissions by 2070. I think you should all support in this perspective. And then, before coming out this quote, if you can involve the stakeholders and then the daring step what UPRRDA took, and today they have become the gateway of India, opening up to several states. And then I'm sure our CRRI friends, they have a lot of reports. And I think you can see those reports and then from the IITs and then support this technology, what is taken up to the next level for the country, sir. Okay, thank you. There is a issue of not supporting any technology which is coming. That's in fact the motto of IRC, motto of Transport and Highways, to go for innovative technologies. There is no denial to that. But while implementing that, there is a method, there is a system. We have to also respect that. So if the committee could not do, whether they could not get the information or something, but if the information is there, definitely it is going to be taken care of and amendment can be issued. I can assure that much. So with this, madam, I think you did not ask question. You have any question? Last question, please. Good evening, sir. This is Sarika Salve, Director of Rostar Constructions LLP. Firstly, sir, I would like to thank everyone so that give us an opportunity to gather here and prove ourselves, because we have been here since 2011. We are an accredited company. We are the additive company which is being used in the pilot project PRRD. And I really thank Dubey ji and Pathak ji the way they have supported us.
completely. Sir, my request is, if we are being asked and questioned reports, tests, and everything about our additives, even after working so hard, proving each and everything, why isn't cement reports being supported? Why isn't transparent? Why it's being hidden? Because there are many IIT institutions and many other institutions who have performed the test. Then why isn't transparent? No, I could not fully comprehend your question. If See, we are your- being asked for the test reports, we don't have any reports from the cement. Why is that? No, of course not. What the committee told that they have taken recourse to the international practices. You know, most of the codes that we are using, that has genesis somewhere else. Some of the things have been augmented based on our own indigenous research, our practices like that. Sir, when we bring a new technology to this country, we are told prove it into our environment, our soil, our weather. And now you are banking this standard on international literature. Sir, we have taken a view. There will be no point further dragging the matter. We will be taking all the details, all the technical data available with the EPRDA, and whatever other manufacturers, suppliers have, let them furnish, and it will be all taken into call by IRC, properly examined, and if necessary, amendment can be taken off. So can we understand that you will be looking into it very seriously and revising the Yes, of course, standard? Of course, of course. Thank you. Even if I am not in any official capacity, but I hope Secretary General IRC will allow me to give this much of assurance that it will be very, very critically examined and a decision will be taken. Absolutely, sir. So with that, we complete the questions. I request Kopandan, please. Thank you, sir. In the session, we had like 3 presentations. The first presentation was by Dr. Sudhir Mathur about the guidelines. The guidelines have come up about the full depth recycling technology for payments using cementitious binders only. Now, in the guidelines, he provided that the guidelines are very detailed, covering different aspects of FDR technology, and they've been divided into different chapters, which includes like project evaluation, then the payment design, structural payment design, mixed design, the construction procedures, quality control aspects, everything has been covered in the guidelines. Though these guidelines only cover the cementitious binders, but he has very clearly specified that there has been an advisory which is also issued with the guidelines that CCS binders, they have to be used with caution. And there are certain limitations to the adoption of FDR technologies, which he has also highlighted. The second presentation was by Dr. Ankit Gupta. He talked about the FDR quality issues and challenges, and he posed really good questions, like there are certain issues with the quality, and he talked about those issues. I think H9 committee would look into those issues and would try to find the answers. Being a co-convener also, obviously, he's going to look into those issues also. He also talked about the challenges which are associated with the CCS stabilizers, because they have also to be used with caution. So there are certain issues with CCS also. So he has also talked about those issues, and he has very clearly specified the way forward that more and more studies and research are needed to understand the hidden issues, the issues or the points which he has raised. So more studies need to be done in that particular regard. The third presentation was by Shri Vinod Kumar ji. He talked about the soil and granular material stabilization using cement, lime, and fly ash. So he has very clearly demonstrated or specified the entire mechanism and chemistry of the stabilization using cement, lime, fly ash. And he has also talked about the role of CCS in improving the strength, in improving the durability characteristic, and when to use and why to use the CCS stabilizers. So this is all. With this, I thank the presenters and the chairman for this particular session. So thank you all the audience also for being so attentive and posing, tough questions to the committee, to the Thank you so much, chairman. gentlemen. Thank you so conclude much. this session, and probably it will be one of the longest sessions in the history of ARCC Finance I can house, but probably.
Thank you. We'll take a moment to express our gratitude to the speakers of the session. I request the chairman of the third technical session, Shri D. Sarangi ji, to please present a humble gesture of gratitude. First up to Dr. Sudhir Mathur for his thoughts and insights that he shared with the technical session. I also request the chairman of the third technical session to please present a humble gesture of gratitude to Dr. Ankit Gupta. With continuous loud round of applause, ladies and gentlemen, I now humbly request the co-chairman of the third technical session to please present a humble gesture of gratitude to Sri Binod Kumar. I would like to invite Shri R.K. Mehra, former Secretary, PWD, Madhya Pradesh, and past Vice President, IRC, to please join us on stage and present a humble gesture of gratitude to our respected chairman for the third technical session, Shri D. Sarangi. I once again request Shri R.K. Mehra to please present a humble gesture of gratitude to the co-chairman of the third technical session today, Dr. Abhishek Mittal. We'd like to capture this moment with a group photograph. I request the dignitaries to please join us for a group photograph. And that concludes the third technical session for the day, ladies and gentlemen. And we still have a cultural program ahead of us. So I request you all that we will reassemble for the cultural program tonight. And this session and the seminar will continue tomorrow as well, because this is a two-day event. So the rest of the technical sessions will proceed tomorrow. I request you all a short break, and we will reassemble for the cultural program that awaits all of you. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि पूरे दिन की इस बातचीत के बाद विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर डिस्कशंस हुए, उसके बाद ये मैंडेटरी है कि अब हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आए। तो आप सबसे ये अनुरोध करेंगे कि आप सब प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि आपके डिनर से पहले एक बेहद बेहद खूबसूरत सी शाम हम लेकर आए हैं, जो कि आयोजित की गई है संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से। तो केवल एक 10 मिनट का अंतराल है, जब तक कि हमारे ये स्टेज के अरेंजमेंट्स हो जाएं, उससे बस 10 मिनट के अंतराल के बाद हम ये कल्चरल इवेंट्स आपके लिए स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल हैव अ डिनर। तो दिस इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज बी सीटेड फॉर दिस कल्चरल इवेंट।
आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि कृपया आप अपना स्थान ले लें, क्योंकि हमारे कलाकार जो कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सिर्फ आपके लिए ही अपनी प्रस्तुतियां लेकर आए हैं, वो हमारे बीच में यहाँ कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे और अपनी बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपकी ये शाम रोशन हो और खूबसूरत हो। I request you, please all you take your seats. आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक संध्या आपके लिए बिल्कुल तैयार है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे मंचे हुए कलाकार आपके लिए अपनी प्रस्तुतियों के साथ आए हैं। तो आप सब से ये अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखिए, बिना कल्चरल प्रोग्राम दिखाए हम जाने नहीं देंगे और खाना शुरू नहीं होने देंगे। कृपया अनुरोध है, बैठ जाएं। आप सभी से अनुरोध है, बैठ जाएं। और ये उत्तर प्रदेश का जो भी संगीत और नृत्य है उससे संबंधित प्रोग्राम आज और कल है। आप बैठें, बहुत लंबा नहीं है मगर बहुत शानदार है, छूट जाएगा, मिलेगा नहीं। कृपया बैठ जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रंट गैलरी में जो लोग हैं कृपया बैठ जाएं। गैलरी में जितने बैठ जाएं, हम शुरू कराना चाहते हैं। जस्ट ये शुरू होने जा रहा है और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अब वेट ना करें, शुरू कर दें। तो आइए इस सांस्कृतिक संध्या का आगाज करें। चूंकि हम सब तहजीब, नजाकत, नफासत के शहर लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो शुरुआत करते हैं कुछ लखनऊ की बातों से और आपको रूबरू कराते हैं लखनऊ से। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर जब भी कोई बात शुरू होती है तो हम पहले आप से शुरू करते हैं या बात करते हैं कुछ शेर व शायरी की। तो आइए लखनऊ की ही बात से ये शाम शुरू करते हैं कि आज यहाँ का मौसम भी लखनऊ का एहतराम करता है। आज यहाँ का मौसम भी लखनऊ का एहतराम करता है, यहाँ हर आने जाने वाले को सलाम करता है। तो सबसे पहले तो लखनऊ का सलाम आप सब स्वीकार करें और आप सब फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जैसा कि अभी सर ने बोला कि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे सुने बगैर हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम पूरे उत्तर प्रदेश की एक सुंदर झांकी आपको दिखाने जा रहे हैं। संस्कृति विभाग बहुत सारे कलाकारों को, चुनिंदा कलाकारों को यहाँ पर लेकर आया है, जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न क्षेत्रों से आपको परिचित कराएगा, रूबरू कराएगा। लखनऊ अदब का शहर कहलाता है, लखनऊ तहजीब, नजाकत, नफासत का शहर कहलाता है। लेकिन इस सब के अलावा भी जो लखनऊ में एक चीज बेहद खास है, वो है यहाँ की मीठी और शीरे सी जुबान। हमारे लखनऊ वाले भारत के किसी भी कोने में जाते हैं या यूं कहें कि दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, हम अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने लहजे से और अपनी जुबान से हर जगह पहचाने जाते हैं। और ये सवाल हमारे पास आता ही है, क्या आप लखनऊ से हैं? जी हाँ, हम बेहद फक्र और गुरूर से कहते हैं कि हाँ, हम लखनऊ से हैं। हमारे लखनऊ के ही एक मशहूर इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का नाम हर एक ने सुना होगा, जिन्हें कि लखनऊ का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था।
अब वो हमारे बीच में नहीं है, और उन्होंने लखनऊ के बारे में इतना लिटरेचर तैयार किया है कि अगर हम उसे पढ़ने बैठें तो कई महीने कम पड़ जाएंगे। लखनऊ के बारे में नज़्में, लखनऊ के बारे में साहित्य, लखनऊ के बारे में गज़लें, शेर व शायरी डॉक्टर योगेश प्रवीण जी ने बहुत खूबसूरती से लिखी हैं। लखनऊ के बारे में ही उन्होंने कहा है, जो बहुत मशहूर है, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ये लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो एक बार दिल से लखनऊ के लिए तालियां बजा दें। हमारे कलाकार ऑलरेडी मंच पर आ चुके हैं और बस इनका ये थोड़ा सा सेटअप हो जाए, उसके बाद हम इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करेंगे। तो आइए, ये कलाकार आपका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले लखनऊ के अंदाज में हम बोलेंगे कि इबादतों की तरह मैं ये एक काम करती हूँ। सबसे पहले आप सबको सलाम करती हूँ। इस शाम की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं डॉक्टर अलका निवेदन आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो हमारे बीच में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से पधारे हैं ये कलाकार, लेकर अपना फोक डांस यानी कि लोक नृत्य बधावा। श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जी 14 कलाकारों से सजे इस मंच पर आपके बीच में है। बधावा वो एक डांस फॉर्म है जो कि शादी, ब्याह, मुंडन या किसी भी शुभ कार्यक्रम में किया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार दमदार तालियां बजा के अयोध्या से पधारे इन कलाकारों का स्वागत करें। और सबसे पहले संस्कृति विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चलकर कहना है क्या कि मोरे रामा अवध में आए, मोरे रामा अवध में आए, मोरे रामा अवध में आए, मोरे रामा
में आए, राम अवध में आए, राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए, राम अवध में, मोरे राम अवध में आए। ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए हो विष्णु जी आए, शंकर जी डमरू बजाए, मोरे राम अवध में आए, शंकर जी डमरू बजाए, मोरे राम अवध में आए। आगे आगे राम चले पीछे चले सेना, आगे आगे राम चले पीछे चले सेना, हनुमान उड़ आए, मोरे राम अवध में आए, हनुमान उड़ आए, मोरे राम अवध में आए। सरयू के महिमा अयोध्या में भारी, सरयू के महिमा अयोध्या में भारी, अयोध्या में भारी, अयोध्या में भारी, सब नहाए पाप मिट जाए, मोरे राम अवध में आए, राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए, राम अवध में आए, राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए, राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए, राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए, राम अवध में आए, मोरे राम अवध में आए। और आइए बहुत ही प्यारा गीत है, राजा दशरथ के आंगनवा, लाल जन्मे आंगनवा, राजा दशरथ के आंगनवा, लाल जन्मे आंगनवा, जन्मे लालनवा हो, जन्मे लालनवा, राजा दशरथ के आंगनवा, लाल लहले जनमवा, राजा दशरथ के आंगनवा, लाल लहले जनमवा। रानी कौशल्या जी मन मन बिहसे, रानी कौशल्या जी मन मन बिहसे, जुग 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 जिए ललनवा, राम अगनवा, जुग जुग जिए ललनवा, आज लिहले जनमवा, लिहले जनमवा हो,
लिहले जनमवा राजा कौशल्या अंगनवा लाल लिहले जनमवा राजा दशरथ के अंगनवा लाल लिहले जनमवा। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे मोहर लुटावे हो मोहर लुटावे आयल शुभ दिन अगनवा लाल जन में अगनवा आयल शुभ दिन अगनवा लाल जन में अगनवा जन में लाल नवा हो जन में लाल नवा जन में लाल नवा हो जन में लाल नवा राजा दशरथ के आंगनवा लाल जन में अगनवा राजा दशरथ के आंगनवा लिहले राम जनमवा राजा दशरथ के आंगनवा राम लिहले जनमवा। और अयोध्या से हमारे बीच एक कलाकार बधावा लेकर आए थे। बधावा जो कि वो लोक नृत्य है जो बच्चे के जन्म के समय किया जाता है। खास तौर से भगवान प्रभु श्री राम के जन्म का बधावा ये कलाकार लेकर आए थे। तो मैं चाहूंगी कि एक बार भरपूर तालियां हमारे इन कलाकारों के लिए बजा दी जाएं। सबकी खुशी जताने का तरीका अलग अलग होता है और खुशी दोगुनी, चार गुनी और कई गुनी हो जाती है जब भगवान श्री राम इस पृथ्वी पे जन्मते हैं। हर एक अपनी बात अलग तरह से कहता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। एक हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक रिचुअल है, या जिसे आज की भाषा में या आज के इस चलती फिरती दुनिया में टैटू कहते हैं। ये टैटू बेसिकली उन गांवों से निकला है जहां पर इसे गोदना कहा जाता था। पहले पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी तो वो अपने हाथों पर अपने पति का नाम लिखा लेती थी और ये गोदना पूरे जोशो खरोश के साथ मंगल गीतों के साथ गाया जाता था। वो गोदना आज भी इन कलाकारों ने जीवित रखा है। तो आइए सुने ये गोदना गीत। आपकी लगातार तालियां बहुत आवश्यक है। गली गाली घूमे बनवारी पहनी के पियरिया साड़ी कि नाटिन के रूप धोके आनंद के ललनवा कि आवा गो दबाई लहो गो दलवा 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 आवा गो दबाई लहो गो दलवा। मुहावा पे लंबी लंबी गाड़ी के चढ़ारिया चांदी खाली चमकेला कहाँ के सुरतिया मुहावा पे डाले डाले लामी रे घुंघटावा चांद में चमकेला राधा के मोहलावा लटक झटक मारत चाले देवा धारे होले होले मथवा पे धोके गोदना गोदे के समनवा आवा गोदा भाई लहो गोदनवा 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 आवा गोदा भाई
लाहो गोदनवा आवा गोदवाई लाहो गोदनवा गली गली घूमे बनवारी पहने के पियरिया साड़ी नाटिन के भेष धाके नांद के ललनवा आवा गोदवाई लाहो गोदनवा 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 आवा गोदवाई आवा गोदवाई आवा गोदवाई लाहो गोदनवा। तो ये था हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या का गोदना। संस्कृति विभाग बहुत सारे ऐसे कलाकारों को जोड़ती है जो कि हमारी लोक विधाओं को और लोक संगीत को जीवित रखते हैं। और खास तौर से मैं बता दूं कि जो कल्चर डिपार्टमेंट है हमारे उत्तर प्रदेश का, उन्होंने उन कलाकारों को एक बड़ा मंच देने का प्रयास किया है जिनकी कलाएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। चाहे उसमें आप पपेट शो यानी कि कठपुतली का नाच देखें या बुंदेलखंडी आल्हा जो हमारे दादा परदादा सुना और गाया करते थे। आज कल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने इन सारी विधाओं को पुनर्जीवित किया है और उनको एक बड़ा मंच दिया है। तो इससे पहले कि हम अपनी अगली प्रस्तुति लेकर आए, मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के लिए दिल से तालियां बजा दें। अब अयोध्या के बाद हम बुंदेलखंड की ओर चलेंगे। बुंदेलखंड यानी कि झांसी, महोबा और बुंदेलखंड का जो एक बहुत प्रचलित फॉर्म है वो है आल्हा। लेकिन आज हम बुंदेलखंड का एक दूसरा डांस फॉर्म लेकर आए हैं जिसे कहते हैं राई। कोई बता सकता है कि राई किसे कहते हैं? हमारे किचन में, हमारे मसालदान में ये यूज होता है। एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राई, स्पेशली लेडीज? हाँ प्लीज। मस्टर्ड सीड, बहुत छोटे दाने होते हैं सरसों के। और राई इस का नाम इसलिए है, इस डांस का नाम इसलिए है क्योंकि राई का दाना अगर वो फर्श पे गिर जाता है तो बहुत तेजी से वो मचलता कहीं भी चला जाता है, हमें पता नहीं होता। ये राई गीत बहुत पुरानी परंपरा है, तब जब हमारे राजा महाराजा युद्ध करके लौटते थे और उनके विजयी होने पर लोग जश्न मनाया करते थे। और जश्न सुबह से लेकर शाम, रात और फिर सुबह हो जाता था। ऐसे में नृत्य करने वाले तो थक जाते थे, लेकिन उनको आराम देने के लिए गायक लगे रहते थे। यानी कि आराम दे दे के ये लगातार चलने वाला नृत्य जो कि राई के दाने की तरह लगातार चलता है और बहुत तेजी से नाचता घूमता रहता है, तब से ये परंपरा राई नृत्य की शुरू हो गई। हमारे बीच बुंदेलखंड झांसी के कलाकार हैं जो कि राई नृत्य लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि बेबी इमरान अपनी पूरी पार्टी के साथ यानी कि 16 कलाकारों के साथ इस मंच पर आएंगी। ये राई गीत किसी भी शुभ अवसर पे किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे राजा जब विजयी होकर आते थे तब उनके स्वागत के लिए ये नृत्य किया जाता था। तब से चली परंपरा आज भी हमारे बुंदेलखंडी कलाकारों ने जीवित करके रखी है। बस कुछ देर के अंतराल के बाद जब तक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं, हम इस राई नृत्य को आगे बढ़ाएंगे। आप सब पूरे दिन के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के बाद जरूर थक गए होंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम आपके दिमाग को तरोताजा रखें और जो डिनर का लुत्फ है वो 4 गुना हो जाए। तो आप सभी जो हमारे दर्शक बैठे हैं, लखनऊ शहर में है तो एक शेर आपके लिए भी बनता है। आप सब एक साथ बोलेंगे इरशाद प्लीज। जी, तो ये खास आपके लिए है कि हर गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, और वो जो आया शहर में तो शहर घर अच्छा लगा। तो ये आपके लिए, खास आपके लिए था। और अब जब आप यहाँ आई गए हैं तो मुझे हमारे मशहूर और मारूफ शायर थे कतील शिफाई, जिनकी नज़्में और जिनकी गजलें जगजीत सिंह साहब खूब गाया करते थे। थोड़ी सी लंबी है, आप
जरूर पेश करूंगी। खाली पड़ा था दिल का मकान आपके बगैर, बेरंग सा था सारा जहां आपके बगैर, फूलों में चांदनी में धनक में घटाओं में, पहले ये दिलकशी थी कहाँ आपके बगैर। और खामोशियों को जैसे जुबां मिल गई कतील, खामोशियों को जैसे जुबां मिल गई कतील, महफिल में जिंदगी थी कहाँ आपके बगैर। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आइए भरपूर तालियों से स्वागत करेंगे झांसी बुंदेलखंड से पधारे हमारे इन राई कलाकारों के लिए, दमदार तालियां बजाएंगे। लुढ़कते आ रही गेंद, लुढ़कते आ रही गेंद, लुढ़कते आ रही गेंद, लुढ़कते आ रही गेंद,
लोड़े कते आ रही के खेलते आवे कन्हैया लोड़े कते आ रही के खेलते आवे कन्हैया राम नाम की लीला न्यारी जग से प्यारी लागे तू राम नाम की लीला प्यारी जग से न्यारी लागे तू मुश्किल करे मोरो जीना अरे मुश्किल करे मोरो जीना तुम्हारे वेदा को लगी मुश्किल करे मोरो जीना तुम्हारे वेदा को लगी अरे मुश्किल करे मोरो जीना तुम्हारे बेदा को लगी मुश्किल करे मोरो जीना तुम्हारे बेदा को लगीला दे दैयो अजी दे दैयो चीर हमारो रे अजी दे दैयो चीर हमारो रे मनुष्य के बजैया आए हरे मनुष्य के बजैया तुमरो चीर जबई हम दे हैं तुमरो चीर जबई हम दे हैं तुमरो चीर जबई हम दे हो जाओ अरे हो जाओ चलो से न्यारी ये मनुष्य के बजैया हाय रे मनुष्य के बजैया मुसरार रे मनुष्य के बजैया आए हाय रे मनुष्य के बजैया पावनो माटी बुंदेल खंडो की पावनो माटी बुंदेल खंडो की हम करीला जाने हैं हाँ जाने हैं वचन के लली गुण गाने झूला झूला आई में बरसे रंग नो ढोलक पे मजीरा हरे ढोलक है मजीरा आई में बरसे रंग नो ढोलक है मजीरा हरे ढोलक है मजीरा
ऐसी राम कहानी, अरे ऐसी राम कहानी के दुनिया ने लिखी है जानी, ऐसी है राम कहानी के दुनिया ने जाहिर की जानी। रामुनी के लगे, रामुनी के लगे, रामुनी के लगे, रामुनी के लगे, झूला में झूले कन्हैया, रामुनी के लगे, झूला में झूले कन्हैया। नीचे के घुंघटा ऊपर खो कर लो, नीचे के घुंघटा ऊपर खो कर लो, ऐसे में नोनी लगते नहीं, ये लगत नहीं, बिन देखे चैन पर नहीं। अरे लाल रंग डारे हरीरे रंगो डारे, लाल रंगो डारे हरीरे रंगो डारे, और रंगो डारे केसरिया, आ केसरिया, हो पनुसी बारे सावरिया। हम करीला जब नेराली, हम करीला जब नेराली, इनकी महिमा जानी है, जानी है, उनकी कला निराली है। जोदैया है रात, चलो भगे चलिए, जोदैया है रात, चलो भगे चलिए, जोदैया उतरी कर विवाद, चलो भगे चलिए, जोदैया है रात, चलो भगे चलिए, जोदैया है रात, चलो भगे चलिए, चलो भगे चलिए, उतरी कर विवाद, चलो भगे चलिए, जोदैया है रात, चलो भगे चलिए। जय बुंदेल। धन्यवाद। और बुंदेलखंड से हमारे कलाकार थे, ऑडियंस में ही एक सज्जन का ये स्टार्ट था, उन्होंने इच्छा जताई थी कि ये जो वाद्य यंत्र है जिसे हम दुदुभी कहते हैं, उसका एकल वादन 1 मिनट का हो जाए। तो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि जैसे कि अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम लला है, वो जैसे ही अयोध्या से निकल के ओरछा की तरफ बढ़ते हैं ना, ओरछा मध्य प्रदेश में आता है, और झांसी के बाद दतिया, दतिया के बाद ओरछा। जब ये हमारे रामलला निकल के ओरछा में हैं, तो राजा राम सरकार और जिस गाय नृत्य आपने देखा, ये राम राजा सरकार के साथ था। इन्होंने, अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे कहने से आप जरूर ओरछा में राजा राम सरकार का चाहिए, वहां का आर्किटेक्चर जरूर देखिए। और मैं बता दूं कि प्रवेश द्वार पर 2 बड़े खंबे पिलर, नाम है सावन और भादो, और ऐसी किंवदंती और मान्यता सावन भादो में ये दोनों खंबे, ये पिलर्स मिल जाते हैं भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए। तो इस तरह से बहुत
प्रस्तुतियां हैं जो हमारे उत्तर आती है करती है। और इस शाम की आखिरी प्रस्तुति हम चले थे भगवान नगरी अयोध्या से, जहाँ से हम आपको बढ़ावा लेकर आए थे। हम बढ़े बुंदेलखंड यानी ओरछा, जहाँ हमने राम सरकार का गुणगान किया। तो यूपी आने के बाद, उत्तर प्रदेश आने के बाद, अगर हम भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा ना जाएं, ब्रज की संस्कृति ना देखें, तो उत्तर प्रदेश आना सार्थक। मेरा इशारा आप समझ गए। बीच में मथुरा वृंदावन कलाकार है, मैं बता मथुरा और वृंदावन का मयूर नृत्य भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। ये नृत्य इतना सुंदर मनमोहक है, ये नृत्य करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें जो महिलाएं अपने पीठ पर मोर के पंखों का भार लेकर डांस करती हैं, नहीं आती, पर आप बता दो कि ये वेट बहुत ज्यादा होता है। लगभग 50 का वेट अपने कंधों पर लेकर मयूर नृत्य करती हैं। संस्कृति एक बार हुआ कि राधा रानी वन में अकेली भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कहा क्यों राधा रानी आज पुरुष की तरह चल नहीं रही, ना कुछ गा रही है, ना बना रही है, ना खिलखिला रही है। तो राधा रानी ने कहा सावन है, भादो है, बरसात हो रही है, लेकिन यहाँ मोर नहीं है और मेरा बहुत मन कर रहा है देखो। भगवान श्री एक नहीं कई मोरों का रूप धर लिया और मयूर नृत्य करके राधा रानी को पसंद। तो ये मयूर नृत्य वापस से चली हुई परंपरा है जो कि आज तक हमारे कलाकारों ने जीवित करके रखी है। हमारे संस्कृति विभाग के सभी अधिकारियों ने और पूरे विभाग के लोगों ने विभिन्न उन कलाओं को जो कि विलुप्त हो रही थी उनको जीवित करने का ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग की ओर से पधारे कलाकार जो कि मथुरा से मयूर नृत्य आपको और बता दूं कि मयूर नृत्य जितना प्रसिद्ध है उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है ब्रज की, बरसाने की, वृंदावन की और मथुरा की होली। तो हम आपको होली खेले बिना यहाँ से जाने नहीं देंगे। मयूर नृत्य के बाद हम आपको वृंदावन की होली भी दिखाएंगे। तो आइए एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने इन कलाकारों के लिए। शिवानी तिवारी जी पूरे ग्रुप के साथ है, इसमें 15 आर्टिस्ट हैं जो पहले लेकर आ रहे हैं मयूर नृत्य। मैं ध्यान आपको दूंगी, शायद आपको भाषा या बोली थोड़ी समझ में आए क्योंकि ब्रज की भाषा थोड़ी खड़ी होती है, पर और इनका प्रेजेंटेशन है वो जरूर आपके दिल को छुएगा। तो हमारे कलाकार मयूर नृत्य लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा साउंड चेक हो जाए इनके। इससे पहले कि हमारे मथुरा के कलाकार अपनी प्रस्तुति दें, मैं आपको कल के बारे में बता दूं कि कल शाम भी हम आपको संस्कृति के विभिन्न रंगों में डुबोने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों को इस मंच पर दिखाने की एक छोटी सी कोशिश की है। कल हम खास लखनऊ दुनिया भर यहाँ और झारखंडे के कलाकार मंच पर अपनी प्रस्तुति शाम सजेगी लखनऊ के मशहूर मारूफ हमारे जो गजल नवाब गजलकार है कमाल खान साहब अपनी सुंदर गजलें लेकर आएंगे आप। तो कल उपस्थित रहना ना भूलें। और आज की शाम की ये अंतिम प्रस्तुति बात जब लखनऊ की होती है तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ की शायरी यहाँ सबसे पहले इसको किया जाता है। लखनऊ के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताती हूँ कि वो पेचदार गलियां मतलब अगर आप पुराने लखनऊ में तो इतनी पतली पतली छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पर आप खो जाते हैं। उन गलियों को पेचदार गलियां बोला कि वो पेचदार गलियां गोमती के किस्से, पेचदार गलियां तो गोमती के किस्से, तो
है तहजीब जिसके हिस्से, अदब और सियासत, अदब और सियासत जहाँ शतरंज खेलते हैं, वो शहर है मेरा जिसे आप लखनऊ बोलते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल भी लखनऊ की बातें, लखनऊ की तारीफें और लखनऊ से रूबरू तमाम बातें आपसे होगी। आज के लिए ये मथुरा का विशेष कार्यक्रम। लखनऊ शहर है, राजधानी है, तो एक बात आप तक और पहुंचाती हूँ कि आज तलक इस शहर का जलवा नवाबी है। मतलब हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ये कहा जाता है नवाबों के शहर से हैं। उसी के लिए ये लाइन लिखी गई है कि आज तलक इस शहर का जलवा नवाबी है और हिंदुस्तान से बाहर तलक टुटने कबाबी। जो भी नॉन नाम जानते हो, आज तलक इस हिंदुस्तान से बाहर तलक टुटने कबाबी है। नवाबों के शहर, नवाबों की शहर आज भी शाही कहानी है। पुराने दौर से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक बार दिल से तालियां लखनऊ के लिए बजा दें। और हमारे कलाकारों और आपके बीच में मैं किसी भी तरह की रुकावट नहीं बनूंगी। आपको और आपके कलाकारों को छोड़ती हूँ, तो एक बार पुनः अनुरोध करूंगी कि दमदार तालियों से हमारे कलाकारों का स्वागत कीजिए। हेलो, शिराथे। आइए। आइए अब आपको ले चलते हैं मथुरा वृंदावन, जहां पर आज भी हमारे प्रभु निरंतर लीला करते हैं। एक बार प्रेम से बोले, हमारे प्रभु की सरकार है राधा रानी। तो एक बार सरकार की जय। शांति मयूर नृत्य अलौकिक लीलाओं का आपके समझ तो आइए मयूर नृत्य का आनंद लेते हैं।
और समित मयूरन को बन आए दुख दूर किया मोर कोटी आजी राधिका मोर कोटी आजी नत मयूरन को देखन मन मोर कंठा शाही नत मयूरन को देखन मन मोर कंठा शाही मोरवा जय हो मोरवा जय हो मोरवा एक कौना पाए मोरवा जब एक भी मोर नहीं मिलता है तो राधा रानी व्याकुल हो जाती है, तो किस तरह भगवान को बुलाती है। मैंने मोहन को बुलाया है, रोता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, तुम भी आना आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। आता होगा आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया वो है आता होगा। आता होगा आता होगा। आशा रखो पगली आए आशा रखो पगली आए। तो किस तरह से ब्रज को भी और राधा रानी से कहती है, आशा रखो पगली आए आशा रखो पगली आए। अरे घबराए क्यों बाबरी तेरे श्याम घबराए क्या बाबरी चित छोड़ और गोनद नदल ब्रज चंदन जो रसिया नवल किशोर और वो रसिया नवल किशोर नील भरे कुंज बिहारी और करुणा सिंधु बेग सुनेंगे तेर हमारी। करुणा सिंधु बेग सुनेंगे तेर हमारी। और देंगे दर्शन आन बैठी रहे दीप जलाए आते होंगे श्याम बाबरी जो घबराए। आते होंगे सभी हाथ उठा करके तालियों के साथ सभी लोग उठाए। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे। हरि अरे आयो रसिया मोर घर आयो रसिया आयो रसिया मोर घर आयो रसिया। बरसा 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 आयो आयो रसिया।
आयो रसिया आयो अरे कितनी बोली राधा प्यारी कितनी बोली राधा प्यारी अरे कितनी बोली राधा प्यारी कितनी बोली राधा प्यारी दो दिल के नाए मिले मुरारी नाए मिले मुरारी बिना श्याम सुंदर कर जैसे के प्यासी अखियाँ बिना श्याम सुंदर के प्यासी अखियाँ बरसाने बन आयो रसिया बरसाने की मोर बोलिए मयूर भगवान की तो कैसे लेंगे ठाकुर जी के नारी तेरी कुछ गाना है भरा तो सुंदर श्याम समाया है बलिहारी और सोनी प्राण जीवन खिलौना है मेरा बने मदन मुरारी मयूरा मदन मुरारी बने मयूरा मदन मुरारी बने मयूरा मदन मुरारी सोनत दियो मनहारी सोनत दियो मनहारी आज कोई है नैया सब ऊपर की सखियां है नैया ऊपर की सखियां बरसाने की डोर गोर बन आयो रसिया बरसाने की डोर आयो रसिया मेरे श्याम तो ऐसा लिखा है समय किसी का समान नहीं रहता है अरे एक दिन ऐसा जो दौलत में हाथ रहे एक दिन ऐसा जो दौलत में हाथ रहे एक दिन ऐसा न खूबा पास पैसा है एक दिन ऐसा जो गिरा मोर गली से पीछे भोजन अनेक मिले एक दिन ऐसा देता हो स्वाद कैसा है
यही सोरो तारा क्यों न बजे राधे श्याम आज दिन कैसा न काल दिन आयो रसिया आयो रसिया मोरा तुम बजे मोरा भगवान की दोनों हाथ उठा करके मयूर भगवान की जय हो। तो किस तरह से भजन कहता है माँ के घर से और मांग मांग तू ब्रजवासिन के खाओ और दीन को चुकी जमीन की जनात वृंदावन को राधा कृष्ण राधा कृष्ण आठ बजे आओ राधा कृष्ण बनी आयो प्यार मोर बनी आयो प्यार मोर बनी आयो प्यारा मोर बनी आयो प्यारा मोर बनी आयो श्री राधे ने नचायो 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 छप छप नाचे राधा प्यारे जब भोरा बने बुढ़ारी छप छप नाचे राधा प्यारी जब भोरा बने बुढ़ारी बुढ़ा बन के नाचे गिरधारी बुढ़ा बन के नाचे गिरधारी नाच रही राधा प्यारी नाच रही राधा प्यारी हम सब नाचे राधा प्यारी जब मोरा बने बुढ़ारी चम चम नाचे राधा प्यारी जब मोरा बने बुढ़ारी। देखिए सभी एक बार दोनों हाथ उठा करके 2 मिनट कीर्तन करेंगे भगवान का। सभी लोग तालियों के साथ हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव हरे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे
राम राम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे बोलिए मयूर भगवान की, बाकी हरिलाल की जय हो। तो आइए एक बार प्रेम से हमारे साथ राधा नाम का स्मरण करें। तो आज किस तरह भक्त कहता है राधा रानी? आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन तो केवल आधार है राधा नाम का। तो आज महाराज जी बरसाने राधा रानी की परिक्रमा देने गए 2 बजे। दोनों किडनी नहीं है, फिर भी प्रभु का आधार सबसे बड़ा है। तो हमारे साथ 2 मिनट के लिए राधा नाम का स्मरण करेंगे। एक बार प्रेम से बोले, बोलो राधा रानी सरकार की जय। आरती के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, और मेरी किस्मत बना दीजिए। आप सभी दोनों हाथ उठा करके ताली दो। अरे जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, अरे जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। मेरी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा कृपा कीजिए श्री राधे, हर चरणों से जगा लीजिए चरणों से लगा लीजिए श्री राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की। आइए ब्रज की होली की तरफ ले चलते हैं। ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय आपका और लेंगे। तो ब्रज की होली हमारे आज भी ब्रज में सदैव होली होती है, क्योंकि वो ब्रज ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है। 11 साल 52 दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में बाल लीला की है। तो आइए हमारे उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग से द्वारा बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष। तो आइए एक ब्रज की होली का आनंद।
बरसाने अचानक भर लाए रंग अबीर की सुंदर झोर लेके कुंदन में रस भान सुता जो झोरी मनोहर में धीरे से खो आज बरसाने होई मसीह का खेल रहे न दिलाल और रंग अबीर उड़ामते नाचे दे देता अरे आए गए होरियारे होरी के आए गए होरियारे अरे बाल निकसारी अंगना में आए बाल तेरे द्वार अरे शिवारन की रे। जब बरसाना नंदगाम से भगवान पहुंच जाते हैं तो ब्रजगोपी किवाड़ों की ओट में खड़ी हैं, तो उनको भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं। अरे किवारन की रे, किवारन की कैसे ठाड़ी है, कैसे ठाड़ी है, कैसे ठाड़ी है किवारन की। आए गई होरियारी होरी की आए गई होरियारी हो कारा संभल के रखियो हमारे संगे राधा प्यार। तो किस तरह लाला कन्हैया को और ब्रजगोपी नंदगाम से बरसाने बुलाती हैं। अरे चलो आइयो मेरे होली के खिलाड़ नहीं तो मेरे मन की मानो मेरे चलो आइयो मेरे होली के खिलाड़ नहीं तो मन की मानो मेरे मेरा यार नहीं तो संग श्याम के होरी खेलू संग श्याम के होरी खेलू
आज बिरज में होरी रे रसिया, बिरज में होरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया, जोरी रे रसिया। जो पुष्प एक और पढ़ रहे हैं, आप लोग आ जाए। संस्कृति विभाग आदरणीय मनोज जी, दिनेश जी, आप लोग भी आए। अरे राजा रानी राजा रानी फूल की राधा फूल के श्याम
फूलों की आए सजी हो रानी हमारी फूलों में सज श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी बिहारी और साथ सज रही है और साथ सज रही है फूलों में सज बिहारी ने आज होली खेली रंगोली हाय हाय ये खेली रंगोली मेरे भागे बिहारी ने आज होली बिहारी ने आज खेली रंगोली और देखिए सभी हाथ उठा के तालियों के साथ सभी बोलेंगे राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ सभी लोग खड़े हो जाओ कभी कन्हैया जमुना किनारे चल के साथ मिलेंगे कभी कन्हैया जमुना किनारे चल के साथ मिलेंगे तमन्ना है सुन में एक एक मुझसे रहेंगे एक एक मुझसे मन मन बात बिहारी बिठाए राधे राधे राधा राधा राधा
रसिया की हरिलाल की राणा रानी सरकार की जय श्री राम जय श्री राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की आज कीजिए और इसी के आगे से उत्तर प्रदेश के एक डांस का आनंद लेंगे। आज हमारे उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जय जय श्री राम। जितने लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं पीछे हमारे राधा कृष्ण है, मैं यहाँ से जय घोष करूंगी, आप लोग हाथ उठाएंगे तो फोटो अच्छी आएगी। प्लीज एक फोटोग्राफ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मंच तक पहुंचाए और साथ जिन पूरे यूपी का एक समग्र दर्शन कराया। कल शाम को आपका इंतजार रहेगा, पूरी तरह से रखी होगी, मशहूर लेकर आएंगे और गजल लखनऊ पूरी दुनिया में मशहूर है, तो गजल सजेगी। तब the food is ready for you, dinner is ready for you, तो proceed for आप चलते इतना ही कहना चाहूंगी कि हम हर हाल में मुस्कुराते रहेंगे, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल शाम फिर मुलाकात होगी। खैर रात्रि और धन्यवाद। अरे बाप रे। एक बार आप सभी से फिर से अनुरोध है कि द डेलिकेसीज ऑफ लखनऊ इज वेटिंग फॉर यू। आप डिनर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद।